Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. I think so. We are live. Yes, guys, welcome back to the new stream, buddies. Sorry for these many days. I was not available really. चलो यार, आज तो करते हैं, बढ़िया स्ट्रीम करते हैं आज. Let's do rock today. बहुत सारे काम है भाई, आज तो बहुत सारे काम हैं. Okay, let me set up it up first of all. भाई मैं कैमरा पे नहीं दिखा सकता अभी, इस स्टेज पे हूँ. अरे भाई. ओके, द स्ट्रीम इज सेट अप. नाइस यार, नाइस. कैसे हो सब लोग? ये बताओ पहले यार, कितने दिन हो गए थे? अराउंड 10 to 11 days हो चुका है, राइट? स्ट्रीम करते हुए 11 days, राइट? कैसे हो सब लोग फिर? हाउ यू गाइस? Okay. Manav, are you making the event booking platform for fun or what? No, it's for the real basis I'm making it. It's gonna be live, so I'll show you the UI also. I've made till this right now. I'll just showcase it 1 second. Okay,
I'll just split up it here. I'll bring all the stuffs here. Basically, I'll show it how I made it. So I'll yeah, or show me, yeah, here it is. So basically I'll load it. First of all, this is the admin panel which I'm making right now, which is all working. Basically that's on 401. Okay, let's log in it. First of all, I've written the backend separate and admin panel separate. All the stuffs are separate, by the way. Password is 123 and 123. Okay, doesn't have to fix this, but it's logged in already. And this is the panel which I've made right now here. And if I click view user, it will showcase the proper details for the users. I'm making it properly. I'm doing step by step, by the way. Basically, I need a minor project for my college. Can anyone share the source code and full setup guide for free? Yeah, there are so many setups free in the GitHub itself. You can pick from there. भाई MU दिखाए. MU? What's MU, man? MU क्या है भाई अभी? What's MU? मुंह दिखाए. अरे यार मैंने ना सर गंजा करवा लिया है, so I can't show that. अरे सर गंजा करवा लिया भाई, तो नहीं दिखा सकता मैं. मानो यार, मान जाओ. Just give me 10 days भाई, मैं I'll be show my face. No, I can't show it यार. गंदा लगूंगा भाई, seriously, सच्ची. अरे कैप तो है भाई, कैप तो पहन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ओके यार, दैट सेइंग मींस आई विल डू इट यार, नो प्रॉब्लम. नेवर माइंड, आई विल डू इट. इफ यू वांट माय फेस देन ओके, वीडियो स्टार्ट करो. ओके ओके, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट भाई, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट. वेट वेट वेट, लेट मी डू इट. मैं भी साथ में करता हूँ भाई. ओह नाइस. चलो यार साथ में करते फिर. आई एम स्टार्टिंग द कैम. I think so you can see my cam, right? So I'll just turn it off and place it first of all. मैं place कर लेता हूँ फिर. Let's do it. Okay, I'm starting my camera right now here. I'll keep it in a different position right now. GitHub link देना इस project का. Sure, I'll give it. But a project private है by the way. How you'll do it? Project by the way वो है ना private पे. ठीक है, मैं open source कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. बस तो give me 1 minute. मैं fade कर रहा हूँ. नहीं हो सके बताओ. Say you will not smile,
then I'll show it. Bro, yaar, gadi chalatat bolna. Why are you doing this live? Make a full project video and upload. Nah, I wanna do it by step. I wanna just try it out with you guys. What's the real difficulties while making it, while live challenges? That's the main thing. I'm doing it live. Let's turn on my camera, but you should not smile. That's it. That's the request I'm saying it. Here is me. I've turned off. If you want, guys, really want to see me, just say yes or no. Oh, you want a project, right? Take this one. I'll give the link. You guys want this project? Don't smile, yeah. That's why I'm not turning on the camera. Shakal. I'll give a project. Take that. Cab. उल्टी पहनो नहीं भाई उल्टी तो नहीं पहनूंगा. I'll share one repo just now I saw. I'll just show that repo. You can try this out. This is free open source. Try this out. Oh, I'll just share the repo link. This one project is so nice. Try this one. Yeah, for the college only. For the college. Just in one stack project. भाई तेरा लिनक्स है क्या? नहीं यार लिनक्स नहीं है. इट्स नॉट लिनक्स. Okay, I was doing something different yaar. Something filtration process was not working for me. Let's check why this issue is coming. और बताओ कैसे हो सब लोग? A filter name is not available. Does not exist. Okay. I've made the code like something different. I've used TanStack query. You guys said to use TanStack query, right? I've used it. TanStack query. By the way, I've used TanStack query, bhai. If you guys wanna see it black screen because you guys may get something issue with, I'll just make it as black. Okay, I'll just make it as black and go to class name and make it as dark. This is nice. Dark version is nice. Your eyes won't get affected, by the way. I'll just make this also. Sir Big Span, shout out. Shout out my band. Shout out my FluxTube. I was missing you guys, by the way, within these 10 days. I was a little bit busy, but okay. Never mind, I am back. Man. By the way, Superman is out also. I want to see these films, which is one is Jurassic Park and one is how to shift explore in right side. Shift explore. What is this shift explore in right side? Where it is, man? First of all, wait. I'll just go to the sidebar. And not this sidebar, app sidebar. I'll make it as black, by the way. If the class name is of the CN, I'll use it as themes. Of the themes, next theme provider, use themes. After use theme, right? Const explore which is present in VS Code. Okay. Explore. Okay, I'll just go to explore. Explore कहाँ है? Extensions है तो. Explore पे तो मैं. हाँ, explore पे हूँ मैं. Here it is explore. Bro, मैंने just JS complete किया. अब क्या start करूँ direct? React. हाँ, React man. Not React. Just make projects in JavaScript. JS. Just make projects in JavaScript, then switch to React. React or else Next.js, you can say. Next.js भी बढ़िया, you can do it. No issues. But थोड़ा difficult लगेगा starting पे without React. But हो जाएगा.
Next मैं use themes कर लेता हूँ. Is equal to use themes. Okay, use themes. क्या दे रहा है ये? I have to retrieve the theme color which is here and src theme. Not src theme, man. If theme is equal to dark, then this or else this. Perfect. If I just see, there will be an error. That's an use client. Okay, use client. भाई मैंने GitHub खरीद लिया. GitHub Copilot है. You can say GitHub Copilot, man. It costed around me around I think so $100 per year. I thought it will be good, so I bought it. पता नहीं यूज़ करके पता चलेगा. एक साल कर खरीद लिया मैंने तो सीधा. When install VS Code, we can see Explorer in the left, but right. Okay, yes, I've shifted to right. Basically, I like right side because my screen is at primary screen is right and second is at left. After I have around 3 screens here, so I used to switch like this. If you want guys in the left, I'll show left. Left चाहिए तो left कर लेते हैं फिर और क्या. I'll do it in left. Wait, I'll do it in left. Yeah, you can tell me how to shift. Okay, shifting the screen. Just click this one. Okay, here it is. ये आइकन दिख रहा है आप लोगों को? This one. ये वाला panel icon. Customize layout. Click this and make it as primary sidebar as left. Here it is. Left. हो गया, left हो गया. Click this customize layout and switch it to left. That's it. हो गया. Simple. Right, left. खत्म. Got it. Nice, man. बढ़िया ये तो. हो गया. ये भी theme structure भी हो गया. Okay, nice. बढ़िया दिख रहा है. एकदम cool. Create user. I'll go to create user. This is the create user panel. And the text are white black. I need a white, man. I'll just go to the button. I have to change almost as a dark theme pattern. Dark, which is text primary again, foreground. But no, it's not working. Hover. Dark कैसे करें? Let's not concentrate on UI first of all. I have to make it functional first of all. That's the important thing. Okay, how are you guys? Are you fine or no? What are you doing these days? These 10 days? I was a little busy, but you guys were so awesome. I think so. भाई 10 दिन कैसा गया आप लोगों का? ये बताओ जल्दी. Filter name does not exist, man. क्या दिक्कत है पता नहीं. I don't know really. Localized users. भाई TankStack query is nice यार. I've used it. बढ़िया लग रहा है TankStack query. Queries करने में easy है. Tell me best icon mode. Okay, you're a full stack developer. Yes, man, I'm a full stack developer. Try this one, material icon. This is something cool. Material icon. This one. Yeah, अच्छा बढ़िया. This one is nice, which I'm using for all the icons. I use this one theme in the VS Code. It's look good for me, the folder structures and all. Okay. Do you have any projects made in this 10 days? Do you made any projects within this 10 days? कुछ project बनाया आप लोगों ने 10 दिन में? I think so. You should have done it. I'll give us BG background and add a BG text as a foreground, so it looks proper when I color shift. And this is proper. Can I know which are the best and necessary language to learn for web dev plus DevOps? Okay, for the web dev languages is best is I want to try basically. I can't say anything best. I can't say the best, but
I want to try even Vue also, Angular. JS is right, but I want to try Angular also. Angular is something good, but the Google uses Angular only. Google use only Angular. भाई ठंडी लग रही है. Angular is best. I think so. Angular बढ़िया है. Angular भी बढ़िया, but I want to try Angular also. But JS is something common and useful. Use सब लोग JS यूज़ करते हैं. They don't switch to any other thing. That is in 401. I have to make this login. Okay. Bhai, let me fix this UI today. What do you guys say? I'll not make a code proper. I'll just fix the UI for all these stuffs. Login. I'll just go to this. I'll fix the UI first of all the things सही में. BG background कर लेता हूँ. BG text foreground because ना मेरे को ना हाथ पे दर्द कर रहा है. इधर भी चेंज कर लेता हूँ मैं. बेसिकली I'll use themes. Use const theme is equal to use theme, and I'll go to the here. I'll just change it to this. Theme is equal to dark assets dot transparent assets dot logo dot transparent dot light, and this will be something dark transparent array. Oh my god, transparent dark. Nice. Okay, this is proper, but the text color is something so bad. कैसे करें इसको ठीक भाई, कैसे करें इसको ठीक? How to make this proper? Let's focus. Okay, there's no dark mode in this. Like, let's make it as a dark mode. Dark mode will be text as primary. Okay, primary text, not as primary no. Foreground, which will be around not even the primary. White, just white. Make it as white. Yeah, सही लग रहा. But if I go to this white theme, तो same लगेगा. So you don't mind if I change. If you don't mind, I'll change the layout to dark white light color. Basically I'll change this to light color. देखते हैं क्या सीन है इसका. ओ भाई, it's so much. Okay, light is something not working. I think so. Light doesn't work here. Working with any team company right now in the college? No, I'm right now a freelancer, and I work for a company. I think so, for a freelancing part. I work for a company which is BIB. I work for them as a freelancer, not as a full time. Also, just a freelancer. I work freelancing. Light, I'll keep it as dark and light. I drop out of college. Hey, oh, man, not a dropout, man. I'm not a dropout person. I'm a passed out person. Passed out, man. I can proudly say I'm a passed out student. There is some issue here. Use themes आएगा, right? भाई मैं भी टाइपो करता होता यार. टाइपो is something. How many years experience do you have, brother? Around 6, I can say. 6.5. It's gonna be 6.5. It's gonna be 6.5. 6.5, man. Oh, 6.5. Light, I'll do it. Not in this field. Not a tier 3 one, tier 1. I'm a tier 3 college student. Tier 3 college student. Let's just check the logo. Why it's something different? सही दिख रहा है इधर तो logo वगैरह. Okay, I'll just check out the logo. भाई इसमें मैं ना I've made it this production grade. If you wanna see, I've made everything. I've included Husky here and GitHub workflow also. भाई TCS के इंटरव्यू में रेजर पे का क्लोन दिखाऊं चलेगा क्या? रेजर पे क्लोन. But it should be working. For the complete.
कंप्लीट वर्किंग होना चाहिए. That's the main thing. You got placement in your college? Nahi. Placement, I've rejected the placement, by the way. I've said no to them for the placements. I said to them that I want to learn, I want to learn, I want to learn. So I've rejected the placement, by the way. यार प्लेसमेंट रख के क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा रख के? लोग तो रखेंगे बट मैं क्या करूँगा रख के? भाइयों रिएक्ट के बाद क्या करूँ मैं मर्न के लिए? भाई रिएक्ट के बाद भाई सीधा नेक्स्ट जेएस. आई थिंक सो. फ्रंट एंड के लिए तो नेक्स्ट जेएस होगा आफ्टर रिएक्ट. अगर पूरा मर्न करना चाह रहे हो तो फिर आफ्टर रिएक्ट गो टू फॉर द एक्सप्रेस एंड नोड. मोंगो पे चले जा भाई. एक्सप्रेस मोड मोंगो. रिएक्ट का अच्छा कहाँ से पढ़ूँ बता दो. गुड. ओके. This is the good, I think so. You can learn from here. He teaches something crazy. I'll show. Which is, I think so. React code with antenna thesis, I think so. Wait. I'll show the course, crash course. Which is something good. I'll just show you. भाई DSA में string array AD recursion है आता सिर्फ. कोड इनोट निकल जाएगा क्या? I can't say this. I can't say this, man, by the way. Code with chai, man. Not with code with chai also, भाई. Code with chai ठीक नहीं है ज़्यादा, मैंने देखा था. But you can try. You can try. I'll say. Okay, you can try out something else, which is like code with chai is something little bit not comfortable to learn from him. बट बैकएंड के लिए सही है. बैकएंड के लिए तो सही है बट नो प्रॉब्लम. 7LP दे आर आस्किंग सिंपल DP and graph क्वेश्चन. सो नो ब्रदर. ओके बट आई कांट से इट राइट. इफ यू लर्न दीज थिंग्स लाइक DSA में स्ट्रिंग array रिकर्शन हो गया तो ये तो काफ़ी नहीं है बट ठीक है. ओवरऑल फॉर द बेसिक क्वेश्चंस के लिए ओके यू कैन डू इट. रिएक्ट के लिए ना यू कैन ट्राई सम दिस वन. What's his name? Papa Fam. This is the one. Sony Sangha. भाई क्या आ रहा है? Here it is. This person. You can try this one for the React. He teaches and build the projects also, like large scale projects. वो भी यूनिक यार. React में करता है, Next.js में करता है. Something cool. He builds. Sony Sangha. Try out him. After React you want. Oh, let's check with the logo first of all. Dark के लिए white है. No, I need for the dark and transparent black logo and I need a white. This was the mistake. And for the light, dark for the dark. Okay, my college is 3-tier for I'm learning full stack web development from Angelia. Angelia. Even I used to learn from Angelia. I can stick there on the roadmap. No, stick to him, stick to her itself. Because I've also learned Swift, Swift for the iOS development. I learned from her only, Angelia. भाई फुल स्टैक सीख रहा हूँ. लव बब्बर से अभी टेलविंड पे हूँ. बढ़िया यार, लव बब्बर भी अच्छा है कोर्स. दादा फ्रेमवर्क मतलब क्या होते हैं भाई? फ्रेमवर्क क्या होते हैं मेरे को पूछ रहा है भाई. आई साहब वेरी बैड मैन भाई, वेरी बैड. बहुत गंदा भाई. अरे यार व्हाट इज दिस इशू? आई एम ऑलरेडी चेंजिंग द थीम. व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? आई डोंट नो. यूज थीम पे ही है. Yo, welcome man. वेलकम बड़ी. पुरस्कार वेलकम. कैसे हो भाई? पता कितने दिन बाद आया हो मैं स्ट्रीम. मुझे कुछ अजीब लग रहा है सच्ची. आई एम फीलिंग लिटिल बिट एंग्जाइटी राइट नाउ. कैसे हो भाई? आई एम गुड मैन. आई एम बस सर गंजा करवा लिया और कुछ नहीं.
एक्सप्रेस जेएस ट्राई इससे करो, कोड अच्छा हितेश चौधरी सर से करो, दैट्स गुड. हितेश चौधरी सर समथिंग, ही विल टीच यू समथिंग क्रेजी स्टफ विद अ प्रोडक्शन ग्रेड नॉलेज. मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, देखा हूँ. ओह बढ़िया मैन. भाई मैं तो काफ़ी दिन हो गए आए हुए. हाँ काफ़ी दिन हो गए. हेयरफॉल हो रहा है क्या? नॉट अ हेयरफॉल, नॉट अ हेयरफॉल, जस्ट जस्ट गंजा करवा लिया बस, मन किया था. कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही किया था. चल. चाय और कोड हितेश चौधरी. हाँ दोनों एक ही तो है, चाय और कोड. हितेश चौधरी विच वन? बोथ आर द सेम ना. हितेश चौधरी सर है उनका नाम का, बट चैनल का नाम कोड चाय. मॉनसून आर की तैयारी है. नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं. कोडिंग ओटीटी ट्राई करो फॉर एवरी लैंग्वेज. भाई सब भूल जाओगे. व्हाट इज दिस कोडिंग ओटीटी? रुको भाई मैं भी देखता हूँ कोडिंग ओटीटी. ये क्या है कोडिंग ओटीटी .com? ये कौन है भाई? हु इज दिस कोडिंग ओटीटी? कुछ और तो प्रमोट नहीं कर रहा मैं. कोडिंग ओटी, हाँ कोडिंग ओटीटी लैंग्वेज है ना. अच्छा लैंग्वेज राइट. यूट्यूब पे देखो. ओके भाई मुझे सब स्कोर्स वालों की फ्री में. बढ़िया यार. भाई फंस ना जाए बस तू. हम कोडिंग सी ओ डी कोडिंग ओ टी टी. दैट इज अ कॉल फ्रॉम रियांश. ओ दिस गाय. अभी तो देखा था इस वेबसाइट पे, देखा था मैंने अभी जस्ट. जस्ट अभी तो देखा था मैंने इसे वेबसाइट पे. हम्म. व्हाट ही टीचर्स, क्या सिखाता है ये? फुल स्टैक. दुबई से मेरा M4 मंगवा रहा हूँ. नाइस यार दुबई से नाइस. बट प्राइस डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा है कम है? देयर इज अ प्राइस डिफरेंस अ लॉट आई थिंक सो. आई थिंक सो द प्राइस डिफरेंस इज लॉट. हम्म. ओके. बट आई बॉट फ्रॉम समथिंग. मैंने सीधा एप्पल वेबसाइट से लिया था, इंडिया से ही लिया था. भाई एक प्रोजेक्ट बताना तो. HTML CSS एंड React कोई फाइनल या प्रोजेक्ट तो दिखा सकता हूँ. ओके. HTML CSS में प्रोजेक्ट क्या दिखाएंगे भाई? HTML CSS में सिंपल क्लोन कर लो. अगर एनिमेशन आता है तो एनिमेशन कर लो प्रोजेक्ट के लिए. ट्राई आउट एनिमेशन. एनिमेशन इज समथिंग कूल, यू कैन डू इट. ऑलमोस्ट सेम है इफ़ यू अप्लाई स्टूडेंट ऑफ. हाँ सेम ही है. इफ़ एन आई हैव नॉट अप्लाइड स्टूडेंट ऑफर डिस्काउंट. अभी जो आई पैड ले रहा हूँ स्टूडेंट ऑफर डिस्काउंट नहीं है मेरे पास, बिकॉज कॉलेज आईडी ख़त्म हो गई, एक्सपायरी हो गई राइट. सो आई कान बाई इट विद दैट. सही है यार. इनका कोर्स देखना पड़ेगा मुझे. 75 days हार्ड चैलेंज. ओह हैकाथन प्राइस करा रहे हैं 5 days पहले. ओह बिगनर टू एडवांस सब मस्त है. ओह आई ट्राई आउट, आई ट्राई आउट. M4 है तुम्हारा? नहीं यार आई हैव M3 बाय द वे. M3 Pro Max. लास्ट ईयर परचेज किया था मैंने, लास्ट ईयर परचेज किया था. M3 Pro Max है. परचेज करते ही भाई सितंबर में तो M4 आ गया. बस परचेज करते ही तो M4 आ गया भाई, मैं क्या करूँ. ले लिया तो ले लिया. अब स्क्रीन इतनी बड़ी क्यों है भाई? सॉरी यार 2K स्क्रीन. आई जूम इट अप. सॉरी सॉरी सॉरी. भूल जाता हूँ यार मेरी स्क्रीन लाइक बड़ी है यार. 4K स्क्रीन है तो बड़ा बड़ा दिखता है मुझे. आई हैव टू जूम इट फॉर यू गाइस. ओके यार चलो यार कुछ तो मदद करते यार. काम नहीं कर रहा टीम मेरा. आई डोंट नो क्यों काम नहीं कर रहा है. और एल्स लोगो सेम होगा. पॉसिबिलिटी इज दैट ब्लैक लोगो अच्छे से वाइट लोगो अच्छे से. वाइट लोगो वाइट, ब्लैक लोगो इज ब्लैक. बट क्यों काम नहीं कर रहा है? आई डोंट नो. एक्सटर्नल मॉनिटर है. हाँ बेसिकली एक्सटर्नल मॉनिटर. बेनक्यू का है. इट्स एन बेनक्यू मॉनिटर. कोडिंग मॉनिटर बेनक्यू. भाई इंग्लिश नहीं बोलता आते हो मैं लाश. अरे भाई
अरे भाई बेचारा भाई तू, भगा देते हैं. फीलिंग सो सैड फॉर यू भाई. नहीं भगाना चाहिए यार. लैंग्वेज मस्ट नॉट बी अ बैरियर फॉर वर्क कंडीशंस. विदाउट लैंग्वेज भाई कुछ भी कर सकते हो. बट नो माइंड यार, कंपनी वाले ऐसे होते हैं. मेक प्राइवेट वीडियोस इन इंग्लिश. दिस इज ऑल्सो एन गुड ऑप्शन. यू कैन ट्राई इट आउट फॉर द लर्निंग पर्पस. सीखने के लिए दिस इज ऑल्सो राइट. Why this is not working? If I keep it as dark, themes काम नहीं कर रहा है. क्या काम नहीं कर रहा है? I don't have any idea. See, should I close this? अरे स्क्रीन कास्ट नहीं है. अरे USB-C to USB-C कनेक्टेड है मेरे बहन के मॉनिटर से. भाई मेरे पास अभी 5 Ryzen 5 7000 है. M4 यार अपडेट करूँ? आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है यार अभी तो. अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो सही है, अपग्रेड कर लो. परफॉर्मेंस ठीक नहीं तो अपग्रेड कर लो. अगर परफॉर्मेंस सही है तो मत करो भाई. सिंपल. ज़्यादा पैसे खर्चे मत करो यार. भाई JS सीख रहा हूँ लेकिन कोई YT पे सिखा नहीं रहा पूरा. बताओ. ओ जावास्क्रिप्ट. मैं भी अटका था भाई एक टाइम. ट्राई आउट दिस पर्सन शेरियंस. ही हैज़ ब्रॉट समथिंग ग्रेट बिग कोर्स अराउंड. आई विल शो इट. Express.js पे ही है, जावास्क्रिप्ट पे ही है. इफ़ यू गाइज वांट टू सी शेरियंस कोडिंग स्कूल फॉर द जावास्क्रिप्ट पार्ट, मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊँगा मैं. दिस इज़ द परफेक्ट कोर्स आई थिंक सो जावास्क्रिप्ट के लिए. ये रहा 8 घंटे का कोर्स है. परफेक्ट कोर्स फॉर यू गाइज. परफेक्ट कोर्स. 8 hours जावास्क्रिप्ट कोर्स. You can do this one if you want it. Chai or code is best for JS, but he can't teach totally, right? He teaches everything from the basic to advanced level. But the code with Chai teaches only the JavaScript. I didn't see the but I like this one's Sharian's coding school. But it's something crazy it teaches us with live practicals. I love this. With his teaching level is something great, I can say. लाइक बोर नहीं होते. बस सिंपल सा बोर नहीं होते इसके जब ये वीडियो देखते हैं, और कुछ नहीं. मैंने सीखा इसलिए बोल रहा हूँ. अच्छा ठीक है. आई ऑल्सो ट्राई. ओके 75 days start challenge. ओह नाइस मैन. मैं सिर्फ इससे पढ़ा हूँ बस. मैं तो इससे पढ़ा हूँ. कौन था वो? कोडेथेरी था उस टाइम की बात है. कोडेथेरी था तो उससे पढ़ा था मैंने. भाई एक काम क्यों नहीं कर रहा? आई डोंट नो यार. साइड बार. दिस इज समथिंग व्हाई आई डोंट. इट्स नॉट वर्किंग. आई विल चेक. लोकल होस्ट पे चेक करते हैं. अच्छा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा मुझे सीधा. भाई इसको भी ठीक करना है अभी. आज ही ठीक करना है. थैंक्स ब्रो. मैंने सेव कर लिया. नाइस. भाई आपके लैपटॉप का बैटरी का बैकअप क्या आता है प्रोविंग करते हुए? बाय 24 hours चार्जिंग में. यू कैन सी इफ यू वांट ची. आई शो इट. आई शो माई बैटरी परसेंटेज इफ यू गाइस वांट इट. 24 hours चार्जिंग परसेंट में होगा. चार्जिंग में होगा 24 hours. सी यू कैन सी माई बैटरी परसेंटेज अराउंड 95%. इट्स 95. 1 year हो गया, 1 साल हो गया. 95% है. It's 95. It's 95. M468 में कैसे है भाई? हाँ वो भी मैं भी सोच रहा हूँ. M468 में कैसे है? आफ्टर एजुकेशनल डिस्काउंट नहीं ना. यू कांट सी इट विद 68,000 आई थिंक सो. बेसिकली आई एम गोना बाई दिस वन. आई एम गोना बाई दिस वन. apple.com. आई एम गोना बाई बिकॉज मैक की बैटरी मतलब डर लग रहा है मुझे लाइक चला ना जाए. सो आई एम बाइंग एन मैक मिनी फॉर नाउ. आई एम बाइंग अ मैक मिनी विद इन दीज 3 days. आई बाई इट. 82K. ओके गॉट इट. मैं मैक मिनी ले रहा हूँ बाय द वे. मैक मिनी एंड iPad दोनों ले रहा हूँ. बट बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज माई मैक विल बी डेड. बिकॉज माई स्क्रीन टाइम इज अराउंड
if you want to see my screen time, you will just get scared. What do you guys think my screen time is? Screen time कैसा होगा मेरा? I'll show it. Just see it. Okay. Just see it. I'll show my screen time for yesterday and today. Yesterday it was 15 hours, 16 hours. You can say 16 hours. कहाँ था VS Code में 6 hours and Instagram 2 hours something. Before that 3 hours. Sunday was 3 hours. Saturday was 7 hours, 3 hours. I think so. Category I'll say show it. सिर्फ लास्ट वीक का कितना था? 15 घंटे भाई. 14 hours maybe. By average for the daily use is 15 hours for me. Average use. Only the average use I'm saying. My highest usage was 26 hours. 26 hours था मेरा highest usage. It was 26 hours. 26 hours किसको बोलते हैं भाई? भाई 6 दिन भाई टेलविंड सीख रहा हूँ यूट्यूब पर. रिएक्ट सीखने के बाद लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा. आई मीन अदर कोर्सेस. ऐसा लगता है भाई. 6-8 दिन में CSS वगैरह कर दी. सुडो क्लासेस वेबकिट को छोड़ के. ओके भाई टेलविंड सीखा हूँ पर हाँ यार वो भी मुझे भी लगता था पहले, बट डिफरेंट टफ लगता था. बट जब टेलविंड सीख रहा था मुझे टफ लगता था. आफ्टर लर्निंग टेलविंड ना मुझे CSS ना पसंद ही नहीं है अभी. आई डोंट लाइक CSS राइट नाउ. ओ भाई दैट्स अ ग्राइंड. भाई टेलविंड इज बेस्ट आई कैन से. CSS बेटर, CSS से बेटर टेलविंड है. टेलविंड इज समथिंग ग्रेट भाई. ईजी टू यूज़ है टेलविंड. इनलाइन CSS ईजी है. मॉनिटर कौन सा है तुम्हारा? सजेस्ट करो. आई एम यूजिंग दिस वन, BenQ मॉनिटर. BenQ कोडिंग मॉनिटर. आई एम यूजिंग दिस वन. वेट यार मैं बता देता हूँ कहाँ मेरा मॉनिटर. विच समथिंग. मेरा मॉनिटर अराउंड 60,000 का है. 60,000 सिर्फ मॉनिटर ये वाला है. 60,000 आई थिंक. विच इज विच वन? दिस वन हियर. दिस वन 60,000 का है मेरा मॉनिटर सिर्फ. भाई मैक मिनी M4 256. हाँ कॉस्टिंग 47K. हाँ यार कॉस्टली है बट इट्स फॉर गुड फॉर आई प्रोटेक्शन राइट. कोडिंग मोड के लिए बेस्ट आई थिंक सो. व्हाट इज ऑफर एक्स्ट्रा? नथिंग. इट डजंट ऑफर. आई हैव द स्क्रीन बार ऑल्सो. आई हैव बाइड इट रिसेंटली. मैंने बाई किया था स्क्रीन बार भी, बट कैमरा नहीं बाई किया था. स्क्रीन बार बाई किया था इसके साथ, एक मॉनिटर के साथ सिर्फ. भाई मैं क्या कर रहा हूँ? अलग से सीख रहा हूँ यूट्यूब. सजेस्ट मी सीखूं क्या नहीं भाई. सिंपल सा सुन विवेक. बेसिक इफ यू लर्न टेलविंड ना, टेलविंड इतना इजी है रिएक्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ. पता है यूट्यूब पे ज़्यादा सीख सकता है. बेसिकली क्या है भाई टेलविंड में? क्या है? सिंपल सा टेलविंड CSS वेबसाइट पे जाओ. आई विल से फॉर यू ऑल. सिंपल टेलविंड CSS वेबसाइट पे जाओ, सीधा सर्च करो यार. नीचे इधर सारा स्टाइलिंग्स कैसे यूज़ करते हैं. देयर आर सो मेनी ट्यूटोरियल्स इन दिस इटसेल्फ. सो ट्राई टू यूज़ दिस. यूट्यूब से बेटर ही है. सेटअप में खूब पैसे डाल रहे हो हर्षित भाई. फ्रीलांसिंग में पीच. अरे पीक नहीं चल रहा है यार. प्रोजेक्ट उठा ही नहीं रहा मैं तो. लास्ट ये उठाया था मैंने ए वाला अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले उठाया था मैंने. डेवस्पेयर रखा था. AWS का था. AWS के लिए वेबसाइट बना थी मैंने. AWS के लिए हियर इट इज. AWS वेबसाइट भाई जो नहीं आती है यहाँ से देखता हूँ. हाँ सही है यार. दैट्स गुड. इवन आई यूज्ड टू सी. MRP is 99900. Discount 5% and cashback is 10,000. So 84. Oh man, this much detail. सही है भाई. थैंक यू मैन. बस यही बनाया था मैंने. छोटा सा उनका UI दिया था. सो आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट फॉर देम.
AWS के लिए था. He is the AWS VP for the database analytics AI at AWS. This was the website they need. They were designed like this. Their Figma was like this, so I've designed like this. This costed around, just guess the price what I've charged for them. Just try it. Just guess the price. I'll say. Plus price guess करो मैं बता दूंगा. If you guys want to join, you can join this hackathon also. This is the India's largest Gen AI hackathon, which is going to be on August 1st in Bangalore. Nice, how are you running right now? I'm surprised. Yeah, I'm saying now, not a 15. Oh my god, 15k is something for me. This section and till this section, you can guess it's 15k. I have made this website 3 times, so make the cost into 3x. I have this costed around, make it into 3x, 15k into 3x, that's it. I'm gonna charge this much amount because I've made it 3 times basically. I've switched this website. 3 बार चेंज किया था मैंने पूरा UI, 3 बार पूरा. लगा लो यार कैलकुलेटर पे 15k into 15,000 into 3. It's cost something this much. It's a landing page, yeah. It's just a landing page, landing page plus a registration page. These two. आप खुद बता देना. अरे हाँ वही ना बोला था ना 15k into 3x around that cost. What did I say about hackathon? Basically it's a Gen AI hackathon which is going to happen in Bengaluru on August 1st. You can also join. भाई इतने 50k मिल रहे हैं. अरे 50k नहीं मिल रहे. It's upon the work, right? वर्क पे बढ़ता है ना यार, बिकॉज वर्क पे डिपेंड करता है. यू कैन सी दिस इज रेस्पॉन्सिव. रेस्पॉन्सिव के साथ बेसिकली मैंने 3 बार बनाया था वेबसाइट. पूरी वेबसाइट 3 बार बनाया था मैंने, 3 times. यू कान सी इन दिस बट इस पर तो गंदा लगेगा. आई नो इट बिकॉज मोबाइल पे तो सही चल रहा है. इफ यू वांट टू शो इन मोबाइल, आई जस्ट रीलोड इट वन मोर टाइम. इंस्पेक्ट, हियर इट इज मोबाइल व्यू. उनका डिज़ाइन था यार, सेम टू सेम कॉपी करना था बस, और कुछ काम नहीं है ज़्यादा. दिस इज़ द मोबाइल व्यू विच दे वांटेड. हाँ टेलविंड से रेस्पॉन्स भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है यार टेलविंड से. इवन द एनिमेशन एंड ऑल एवरी स्टफ्स. इनलाइन CSS भाई ईजी लगता है. दिस इज समथिंग कस्टम इफेक्ट विच आई डिड. स्क्रोलिंग पार्ट कस्टम था ये खुद का. एंड समथिंग दिस ऑल्सो वॉज कस्टम. मैंने कोड किया था ये वाला. हाँ इफ़ यू वांट टू सी इन द कोड ऑल्सो. हाँ भाई कोड भी तो मैटर करता है, कोडिंग स्ट्रक्चर भी तो मैटर करता है. बिकॉज आगे यूज भी तो होने वाला है, आगे डेवलपर्स भी तो है साथ में. सो इफ़ यू वांट टू सी हियर इज द कोड. आई हैव मेड लाइक दिस स्ट्रक्चर ही होगा भाई सब कुछ. मैं जो भी करता हूँ स्ट्रक्चर करता हूँ, बस सिंपल एज दैट. हियर इज स्ट्रक्चर कोड, यू कैन सी इट. सब कुछ ऐसा ही है कोड. जी हर्षित, आई एम समथिंग फील्स आई शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग. I don't know. Yeah, you can start, man. You need the proper skills. That's it. Skills के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हो जाएगा. अरे यार आज भी कोड दिखा दिया मैंने. शिट भाई, प्लीज डोंट यूज दिस कोड. दिस इज प्रोडक्शन ग्रेड कोड. प्लीज डोंट यूज दिस वन. प्लीज आई बेग यू गाइज. भाई मैंने ENV खोल दिया था. सॉरी फॉर दिस. प्लीज डोंट यूज दिस ENV. प्लीज आई रिक्वेस्ट, बिकॉज दिस इज प्रोडक्शन ग्रेड. प्लीज दिस इज डिस्क्लेमर. प्लीज डोंट डू इट. भाई मेरी ना लग जाएगी फिर, सच्ची बता रहा हूँ. APS की एक्सपोज. भाई डोंट डू इट यार. इफ समथिंग हैपेंड दे विल किल मी बडी. रियली मैन, रियली टुडे आल्सो आई एक्सपोज्ड कीज. भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा इस कीज का. आई डोंट नो समथिंग. डेली आई एम डूइंग दिस स्टफ. ओह मुझे ना कुछ करना पड़ेगा कीज का. आई हैव टू डू समथिंग सॉर्ट इट. अरे यार ऐसे करता जाऊँगा तो सब एक्सपोज हो जाएगा मेरा. It's a client project are you doing? हाँ client project. This was a client project, yes. पहले ना किधर था पता है? पहले ना वेबसाइट पे था. The website was this devspay.in. पहले इस डोमेन पे था. फिर इन लोगों ने क्या किया, खुद का प्लेटफॉर्म है, सब एक्सपोज हो जाएगा. हाँ
हाँ डेली लाइव अब से आऊँगा यार, अब से आऊँगा। बस 10 दिन नहीं आया था मैं, पिछले 10 दिन। बस अभी से रोज़ आऊँगा, टेंशन ना लो। बेसिकली ना जो ये वेबसाइट थी पहले डोमाइन पे थी, विच इज़ दिस वन despair.com। despair.com में था, फिर इन लोगों ने बोला था प्लेटफॉर्म पे स्विच करना है। दिस वॉज द डेवलप प्लेटफॉर्म। अरे हाँ अब से आऊँगा ना, अब से आऊँगा यार, थोड़ा बिजी था यार मैं, प्लीज़ मान जाओ यार, सॉरी फॉर दिस। तो इस प्लेटफॉर्म में देयर वाज अ डेस्पियर इवेंट, तो इस पर मैंने पूरा शिफ्ट करा था, बिकॉज बेसिकली मुझे शिफ्ट करना पड़ा कोड इधर पूरा। तो इसमें लिखा था मैं पूरा कोड। तो फिर से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला था मुझे इस पे नहीं चाहिए, मुझे इस डोमाइन पे ही चाहिए। तो आई शिफ्टेड अगेन द कोड, तो 3 times आई कोडेड। क्या 16 इंच 256 GB मैकबुक? हाँ चल जाएगा यार, चल जाएगा। चल जाएगा। बेसिकली यू ट्राई आउट बाइंग SSD ऑल्सो, एक्सटर्नल SSD, हो जाएगा काम। आई एम ऑल्सो गोना डू लाइक दिस ओनली। मैं मैक मिनी जो ले रहा हूँ 256 ले रहा हूँ, उसके साथ SSD ले लूँगा, SSD 2 TB का, 2 और 3 TB का SSD ले लूँगा मैं एक्सटर्नल के लिए। बिकॉज बेसिकली यार हर एक TB के लिए भाई 20,000, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स सो कॉस्टली। पता नहीं क्यों करता है ऐसा। एक्सटर्नल SSD मिल जाता है यार आराम से, 10,000 में मिल जाता है, 10K अराउंड। दैट वॉज किंगस्टन आई थिंक सो, सैमसंग वाला मोस्टली आई थिंक। चलो यार भाई, I don't know why this is not changing. I'm really fed up with this light theme. Let's just first log it ना भाई। थीम ऐसे ही तो लेते हैं थीम, मैं भूल चुका हूँ रियली। अब वो कॉस्टली भाई मज़े ले रहे हो, मज़े ले रहा है भाई तू भाई कॉस्टली लगता है तो लगता है भाई, इंसान हूँ यार मैं भी कॉस्टली तो लगता है भाई, सच्ची कॉस्टली तो लगता ही है, और क्या भाई। This theme is not working, this theme is not working, this theme is not working, theme is not working। set themes, थीम तो ले लिया मैंने बाहर, थीम को लॉक कर रहा हूँ, थीम लॉग ही नहीं हो रहा भाई। मेरा पहला विंडोज़ 32 GB रैम 2 TB SSD था, सब काम हो जाएगा। हाँ समझ गया, आदत हो गई है राइट, मुझे भी आदत थी यार भाई। गूगल कर रहा हूँ थीम की सिंटैक्स, अरे थीम की सिंटैक्स यही है, आई नो दिस थीम की सिंटैक्स यही है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस शिट इज अनडिफाइंड। आई डोंट नो व्हाई दिस शिट इज अनडिफाइंड, आई डोंट नो रियली, आई डोंट नो भाई। यूज थीम यही है। अब नेक्स्ट जेएस पे जाऊँ और शायद सीन पे जाऊँ मैं भाई, गूगल भाई तुम 20 लेके घूम रहे हो भाई भाई अरे भाई नेक्स्ट जेएस पे जा रहा हूँ। ये देखो यार थीम्स बेसिकली ना, ये रहा सेट थीम है। मैं बेसिकली थीम एक्सट्रैक्ट करना है मुझे, बस एक्सट्रैक्ट ही तो करना है, वही तो किया मैंने। आई जस्ट एक्सट्रैक्ट द थीम, दैट्स इट, बट इट्स नॉट वर्किंग, बट इट्स नॉट वर्किंग। ओके मे बी द इशू इज समथिंग हियर। शुड आई सेट इट? मुझे सेट करना पड़ेगा राइट? शुड आई सेट इट? लेट्स सेट इट। ओके const or else just set it. Set कैसे? I'll just make it a set theme ले लूँगा, just do a set theme। Okay, if themes are darker then theme man, just theme ले लूँगा। set नहीं किया मैंने, वही गलती मेरी वही थी, undefined। ओके हर्षित पिछली बार जैसे 20 मिनट प्रोजेक्ट आइडिया एक्सप्लेन करो। ओ मैन, कौन सा प्रोजेक्ट आइडिया एक्सप्लेन करना है बताओ? विच प्रोजेक्ट मैन? भाई पता नहीं कि रिएक्ट की ऐसे करा अरे भाई क्या प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है भाई, बता दो, आई विल डू इट। क्या कर सकते हैं, काम भी तो कर रहा हूँ। लोकल स्टोरेज पे चलते हैं। थीम इज डार्क, सी थीम ऑलरेडी डार्क है, बट इधर लाइट थीम दिखा रहा है। लाइट कर दो, फिर लाइट नहीं हो रहा है। ये क्या भाई, क्या सीन है यार, ये क्या सीन है इसका?
शुड आई रीस्टार्ट माई ब्राउज़र रीस्टार्ट करूँगा तो मेरा चैट चला जाएगा ना. ब्राउज़र रीस्टार्ट करूँगा तो भाई सच्ची मेरा चैट चला जाएगा. फिर मैं क्या करूँगा बैठ के? इसको डिलीट कर देता हूँ. लोकल स्टोरेज चल ही नहीं रहा फिर भी. अरे बैटरी बैकअप. हाँ सही है यार, बैटरी बैकअप चली जाती है. मैक्स की बैटरी बैकअप बहुत सही होती है. ये देख भाई, तू ये देख 95% हो गया मेरा बैटरी बैकअप. M4 ले लो प्रो भाई. M3 मैक्स है भाई, बैटरी नहीं चल रहा है मेरे पर. सी दिस 95% है भाई. क्या करूँ, 1 साल हो गया 95% आ गया. इट शुड बी अराउंड 97 तो होना चाहिए एटलीस्ट. ज़्यादा गिर गया भाई. दिस इज सो मच ना. रीस्टार्ट करता हूँ और क्या कर सकता हूँ. लेट्स रीस्टार्ट इट. PM इसको भी जूम करता हूँ. यू गाइस कैन सी इट. 68,000 में मैक. हाँ मज़े ही है. इट्स नॉट रनिंग बाय द वे. लोड हो रहा है. ओके लोकल स्टोरेज पे चलते हैं. एंड इफ आई सेट इट टू डार्क इट्स नॉट वर्किंग. नोप इट्स नॉट वर्किंग मैन. आई एम क्लोजिंग द चैट बाय द. मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ वेबसाइट भाई. चैट क्लोज कर दी फिर से. आई हैव टू ओपन इट अगेन. अब भी नहीं चल रही है. मैं ना एक बार थीम स्विच करके देखता हूँ. आई जस्ट स्विच टू लाइट थीम. ना चल रही है भाई, ना चल रही है. अनडिफाइंड आ रहा है फिर से. व्हाई दिस हैपनिंग, नो आइडिया. कौन सी थीम एक्सपोर्ट कर देखता हूँ मैं. 1 मिनट भाई, मैं चैट भी देख लेता हूँ. चैट भी खोलना है ना मुझे बेसिकली. बिना चैट कैसे देखूँगा. ओ भाई चैट 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 चैट. वेयर इज माई चैट, वेयर इज माई चैट, वेयर इज माई चैट. लाइव सेक्शन पे गया मैं. इस पे गया. पॉपो चैट. हियर इट इज भाई. उस साहब, ओ माय गॉड रियली. चलो यार अब तो चैट आ गया. नाइस. ओके आई जस्ट मेक अस राइट. भाई एक्सप्रेस के लिए जो बेस्ट टीचर बता दो. एक्सप्रेस कोड विथ चाय. कोड विथ चाय, कोड विथ चाय कैन से कोड विथ चाय समथिंग बेस्ट यार. मैंने उससे सीखा था. एक्सप्रेस फिर से सीखा था मैंने. फिर से सीखा था. मल्टी टेनेंट का कौन सा वाला प्रोजेक्ट बताया था. वो शॉपिफाई इंक्लूडेड था उसमें. अच्छा वो वाला चाहिए. ओके एक्सकेली ड्रॉप पे चलता हूँ. ये रहा भाई, इधर ही है. तुम लोगों का प्रोजेक्ट इधर ही है भाई. इट्स हियर ओनली. अभी मेरे पास 78,000 है पड़े हैं बस. लास्ट 68,000. भाई ट्राई टू ना, एक काम कर भाई. इफ़ यू हैव 78,000 डोंट वेस्ट इट. ट्राई टू गो एट लोकल स्टोर्स. उनसे जाके पूछो. देयर विल बी नो GST. GST नहीं पड़ेगा. ऊपर से और भी कम मिल जाएगा 4-5 हज़ार आराम से. बिकॉज यूजुअली मैक कॉस्टेड अराउंड 68 राइट. With education discount, ask them to give more discount at the local stores. You will get it around 62 or something. आराम से मिल जाएगा. कौन सा था मल्टी टेनेट. हियर इट इज. ये रहा. दिस वन ना. दिस वन राइट. ये तो AI chat support multi tenant custom organizations teams. In this I have one more thing which you can add it, which is something which is you can add it as which is templates. Templates भी add कर सकते हैं. Templates which is website templates. Something website templates like website templates कैसे बोल रहा हूँ मतलब as portfolio हो गया. पोर्टफोलियो हो गया एंड e-commerce हो गया. e-commerce templates. then landing page templates something like this. example दे रहा हूँ बस. this is just an example if you guys want it. just an example for this templates. समझ गया. यही है प्रोजेक्ट तो यही है. आई थिंक सो. ये तो GST ले लो 18% फिर 9%. अरे यार लोकल स्टोर पे GST नहीं लेते ना.
इसको रिएक्ट एंड जी, हाँ easily you can make it यार. Django is something I want also learn Django भाई. Django is something best I can say तो for backend. बैकएंड के लिए सही है Django. यार एक चीज़ बताओ, एक बात बताओ. आई वांट टू आस्क अ डाउट. सो आई स्विच माई बैकएंड टू रेंडर. बैकएंड मेरा रेंडर पे है, ठीक है. आई शो द बैकएंड. बेसिकली बैकएंड रेंडर पे है. शुड आई स्विच इट इन AWS? और कुछ प्लेटफॉर्म है बैकएंड के लिए विच इज़ गुड टू इंटीग्रेट? सिर्फ बैकएंड इंटीग्रेट करना है, बैकएंड में अपलोड करना है. बैकएंड के लिए कुछ अच्छा है प्लेटफॉर्म्स? बिकॉज रेंडर ना अराउंड 50 सेकेंड्स डिले कर देता बेसिकली. सो इट्स समथिंग वेरी बैड. सो से टुडे 8th फेल्ड आ रहा है रिक्वेस्ट. आई डोंट नो. हेल्थ चेक फेल्ड. क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं. आई डोंट नो. चेक कर लेता हूँ. API डॉट पहला मैंने पुश भी करा था एरा कोड. बैकएंड तो एरा URL इसका एडमिन देख लेते हैं. एडमिन डॉट पहला खत्म डॉट org.in. फ्रंट एंड तो बेसिकली इस पे है ना, एम्पलीफाई था फ्रंट एंड पे. मैंने एम्पलीफाई स्विच कर दिया था फ्रंट एंड बेसिकली. बैक एंड बस सोच रहा हूँ AWS पे कर दूँ वो भी, बिकॉज ना इसमें 50 सेकेंड्स लेता टाइम डिले रिक्वेस्ट. सो इट्स नॉट गुड फॉर द यूजर्स जब यूज़ करते हैं. और एल्स आई बाय ए VPS सर्वर. विच इज़ बेस्ट, VPS सर्वर और एल्स विच वन? कौन सा बेटर है? VPS सर्वर और एल्स किस, कौन सा बेटर है यार? VPS server I think so I have to buy DigitalOcean or else Hostinger. VPS ले लो ना. बट VPS कौन सा लेना है? DigitalOcean या और कौन सा? DigitalOcean हो गया. Hostinger भी हो गया. Coolify. हितेश का एक्सप्रेस नहीं दिख रहा. कैसे नहीं दिख रहा बड़ी? टाइप बैकएंड ना, टाइप बैकएंड दर. हीरा कैसे नहीं दिख रहा है? हितेश चौधरी जावा बैकएंड सीरीज. ये रहा 24 आवर्स की है. ये रहा 24 आवर्स की है आई थिंक सो. सर्च इट. हियर इट इज. होल बैकएंड सीरीज हियर इट इज. इफ यू कैन सी आई हैव वॉच्ड एवरी वीडियोस बेसिकली. भाई मैं तो GCP का फ्री ट्रायल चलाता हूँ 3 महीने इजी. बट बताए ये तो क्या दिक्कत है? आई कांट रन इट ना 23 मंथ्स के लिए. उसके बाद स्विच करना ही पड़ेगा ना मुझे बेसिकली. तो मुझे लाइक परमानेंट VPS लेना है तो VPS ले लूँगा पॉसिबल. आई डोंट नो यार विच इज़ बेस्ट. आई डोंट नो. आप ही बताओ. आई डोंट नो. AWS इज समथिंग ईजी टू इंटीग्रेट यार, बिकॉज मेरा फ्रंट एंड भी उधर ही है. E2C मशीन ले लूँगा भाई, इस इंस्टेंस ले लूँगा और एल्स. बट कॉस्टिंग ज़्यादा लग जाएगी भाई. सिर्फ राउटर पे 50 रुपये लग जाते हैं. कंतारा देखो भाई मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूँ, बंदा बोल रहा कंतारा देखो. भाई ब्रदर ठीक है बाय ब्रदर, बाय बाय. आई एम गोइंग. बाय ब्रदर, सी यू नेक्स्ट टाइम. वहाँ प्राइस सही मिलती है. कंतारा देखो. कंतारा भाई, कंतारा मूवी नहीं दिखनी है मुझे, होस्टिंग चाहिए. अरे यार होस्टिंग अच्छा सा बताओ यार जो बढ़िया हो. कहाँ है होस्टिंग कंतारा? अच्छा होस्टिंगर में है भाई. कहाँ है? आई कांट सी एनीथिंग भाई. ट्राई द बॉयज भाई, ट्राई द बॉयज. व्हाट द बॉयज यार? सही से बताओ यार. व्हाट ट्राई द बॉयज यार? ऐसे बोलती है बॉयज. इट इज बॉयज. अरे वेर इट इज मैन. $3 per month. Oh man, really? Client, I don't know. Client will play or pay or not. 300 रुपये महीने के. I don't know he'll pay or not. But कुछ तो करना ही पड़ेगा. प्लस 3 months फ्री है. $181. It's cost around 15 to 14,000 I think so. हाँ, per year. I don't know he will do it or not. Contabo. Okay. Contabo. This one, right? Okay, high speed NVMe.
ओ $3 पर मंथ, बढ़िया है ये ये तो बढ़िया है. चीपेस्ट VPS विथ 8 GB रैम एनीवेयर. ओ ओके, 8 GB रैम है मिनिमम, ठीक है. क्या क्या फीचर्स है देख लेता हूँ. 3 कोर है, CPU कोर्स है, 8 GB रैम है, 75 GB NVMe है, फिर और 156 GB 150 भी है, ठीक है. 32 GB ट्रैफिक है, अनलिमिटेड इनकमिंग है, ठीक है. $5 पर मंथ प्लस सेटअप $3, $8 टोटली. सेम ही तो इधर भी $8 ले रहा है 10 के लिए. तो द यूजर कैन बाई दिस, so you can buy this. Even I need the storage, no? Even I need the storage. Basically, I'm saving the pictures also. Even I need the storage. Why I think so? Should I buy AWS? Should I? एक काम करता हूँ, आज ही पुश कर देता हूँ AWS पे. क्या बोलते हैं बैकएंड? Shall I deploy the backend today? AWS पे बताओ. You will also learn it कैसे deploy करता है backend भाई. और क्या कर सकते हैं? AWS backend पे पुश कर देते हैं. If you want guys, I will deploy the backend. Backend deploy कर देता हूँ. I'll just deploy the backend for the clouds. हाँ, Cloudflare बेस्ट है. हाँ वही करने वाला हूँ मैं भी. बैकएंड डिप्लॉय करते थे यार आज बैठ के. I'll deploy the backend today, the AWS. Amplify में तो फ्रंट एंड और एडमिन पैनल पुश कर दिया था. बेसिकली डोमेन भी इंटीग्रेट कर दिया था मैंने. इवन I've attached the domain also. I have 3 domains in this. वो भी अलग अलग डोमाइंस है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए. हाँ, एक्सप्रेस में है बैकएंड. यस, एक्सप्रेस में. आई हैव 3 डोमाइंस. एडमिन डेवलपमेंट के लिए भी है, टेस्टिंग के लिए भी है. डेवलपमेंट अलग है, टेस्टिंग अलग है भाई. 3 रखा हूँ मैंने ब्रांचेस. 3 है मेरे. सो बेसिकली आई विल डिप्लॉय इन द बैकएंड एज 3 ब्रांचेस. आई जस्ट गो टू AWS कंसोल. चलते देखते हैं कैसे डिप्लॉय करते हैं बैकएंड. आई डोंट नो बैकएंड हाउ आई हैव टू डिप्लॉय इट. Let's try. I have to make an EC2 instance, right? Let's do ChatGPT also. Open it. I'll just hey, I'll just close this. Hey GPT, I wanna deploy my backend project in AWS. हाँ चलो, let's do it. कैसे करते हैं देखते हैं. हाँ, Node.js है भाई मेरा. Node.js प्लस Mongo है. Node.js प्लस Mongo. Should I make it as Docker containerized? Docker करना क्या मुझे बताओ. Should I do Docker containerized? वही तो बोला था. इसी तो इंस्टेंस रखना है मुझे नॉर्मल, फिर डिप्लॉय करना. लॉन्च एन इंस्टेंस. I'll make it as पहला कदम बैकएंड. दैट्स इट. I'll use as कर लो. डॉकराइज करते हैं फिर. इसको बोल देता हूँ. आई विल डॉकराइज बिकॉज ना मैं रेडिस भी यूज़ कर रहा हूँ बैकएंड. आई शो द बैकएंड. मैं ना दिखा देता हूँ. रेडिस एंड बल्क एम क्यू यूज़ कर रहा हूँ. हेरा पूरा बैकएंड लिख दिया था मैंने. हेरा इस 10 दिन में लिखा था मैंने. पूरा बैकएंड लिखा था बेसिकली विदाउट लाइव स्ट्रीम. सॉरी यार, मिस कर दिया तुम लोग को. गाली ना दे दो तुम लोग भाई. इस पर भी मैंने सब इंटीग्रेट करा है. बेसिकली हास्की भी है. सोच रहा हूँ बन कर लो. बन में करें. ये टू डू एंड विश लिस्ट. आई हैव मेड अ प्रॉपर डिज़ाइन बैकएंड कैसे करते हैं. मैंने ना वो भी करा था. लाइक वर्क फ्लो भी लिख दिया मैंने. वर्क फ्लोस ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा इंस्टेंस पे भी, एम्पलीफाई पे भी. सो आई हैव रिटन ऑल दी प्रॉपर वर्क फ्लोज ऑल्सो. हाँ फिर डॉकर से कर लो. हाँ वही कर रहा हूँ. डॉकर से कर रहा हूँ मैं अभी. फिर पहले डॉकराइज कर देते हैं, फिर कैसे होस्ट करें डॉकर से. उबंटू सीरीज़ खोलना है. फिर अलाउ दिस पोर्ट 22. बन क्या है? बन इज एन लाइट. आई शो यू. बन JS यूज़ नहीं करा तुम लोगों ने. लाइट फ्रेमवर्क, लाइट जावास्क्रिप्ट टूल भाई. Node.js पे भी लाइट है. Node.js से भी लाइट है भाई. ये रहा Node.js से भी लाइट है. बन वर्क फ्लोज दिखाओ. ओके, Bun is something faster than Node.js. So I'm gonna switch to Node.js basically.
Node.js is something better than Node Bun. See, sorry yaar, Bun is better than Node.js bhai. Bun, I'm gonna switch to Bun.js. I've installed the Bun.js also. You can see Bun. If I do bun.v, here it is. I've also already installed it. अगर GitHub देखना workflows दिखा देता हूँ workflows. Here are workflows मेरा. If I wanna see the repo, here it is. I'll show the admin. इस पे workflows मेरे ये रहा GitHub. This is the proper workflows which I have made it. PR check के लिए ये रहा. There are so many in this. Basically PR check कर रहा हूँ मैं. Pull request. और लेकिन बन का कुछ ट्रेड ऑफ होगा नहीं है यार. ट्रेड ऑफ नहीं है बट इट्स सो मच फास्टर देन Node.js यार. इट्स सो लाइट वेट टू यूज इट. बन फास्टर देन भाई, सो फास्टर देन नोड. आई हैव यूज्ड इट ऑलरेडी. काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर चुका हूँ मैं बन. अभी नोड स्टॉप करने वाला मैं Node.js. बन यूज़ करने वाला सीधा. सेम ही यार, कमांड तो कुछ फ़र्क नहीं है. बस बन npm इंस्टॉल करते हो राइट. npm in npm i. इसमें क्या होता है बन ऐड. सिर्फ बन इंस्टॉल और बन ऐड, दैट्स इट. और कुछ नहीं है, फ़र्क नहीं है. तो बेसिकली जॉब्स क्रिएट किया था मैंने. लिंट भी है इस पर बिकॉज मैं बेसिकली वो भी यूज़ करता हूँ ना लिंट कि कुछ ना एरर ना आ जाए. लिंट भी यूज़ करता हूँ विद प्रिटियर. सो आई हैव रिटन दिस कोड pnpm build PR चेक के लिए. सो इफ देयर इज़ एन एरर वाइल बिल्डिंग द प्रोसेस, इट वोंट कमिट नहीं करेगा PR. बेसिकली ये है प्रोसेस. अगर PR सक्सेस हुआ, लाइक बिल्ड सक्सेस हो गया, फिर कमिट करेगा बेसिकली. हाँ यस व्हाट आई हैव डन इट. अभी यही तो करा था मैंने. जस्ट आई डिप्लॉय द बैकएंड. ठीक है, डॉकर इनिशियलाइज कर देते हैं. डॉकर आई जस्ट इनिशियलाइज द डॉकर. बट समथिंग आर मिसिंग इन दिस बैकएंड के लिए. सो लेट मी फिनिश द बैकएंड एंड डू इट. कुछ तो मिसिंग है इसमें. सो सब मैंने कमेंट करके रखा हूँ मैंने. तो भाई इसके बाद तो मेन करने वाला हूँ मैं. तो मैंने सारा लिख दिया बैकएंड बेसिकली. Every models I have written, all the models, all the routes, everything. Even the middlewares, helpers, not helpers, and the auth config and all, everything. I'm using passport.js, by the way. दो तरह के authentication इस पे. Admin panel अलग है, front end भी अलग है इस पे. Basically, front end पे I'm taking as Google and Facebook, and in back end for the admin panel I'm taking just the credentials login. That's it. आई थिंक सो लेट्स बिल्ड आफ्टरवर्ड्स बिकॉज मैं ना सही से कर लेता हूँ. बैक एंड फिर कर दूंगा. अभी तक ये चल रहा है ठीक है. अभी के लिए दिस इज़ फाइन बिकॉज दिस इज समथिंग रनिंग बट इट्स वेरी स्लो. आई कैन से इट्स वेरी स्लो. इफ आई क्लिक दिस इट्स वेरी स्लो बट ठीक है भाई मोंगो. बट दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स नो सीक्वल. आई थिंक सो मोंगो इज लिटिल बिट ईजी फॉर मी. अभी के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए तो मोंगो ईजी है. बट आई स्विच टू पोस्टग्रेस. मैं पोस्टग्रेस पे स्विच हो जाऊंगा. टेंशन लो भाई, बी चिल फ्री. पोस्टग्रेस भी इजी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है पोस्टग्रेस भी. आई विल चेंज दिस प्रोजेक्ट बट आई एम चूजिंग मोंगो बिकॉज फॉर द इजी यूजर्स के लिए. बट छोटा प्रोजेक्ट है, बस स्केलेबल बना रहा हूँ. बस छोटा प्रोजेक्ट तो छोटा ही है, बहुत छोटा है प्रोजेक्ट तो. बट स्केलेबल बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है. बहुत छोटा है यार प्रोजेक्ट तो. ये तो इतना बड़ा कुछ यूजर्स आने वाले नहीं है. बस 500 यूजर्स आने वाले हैं, 500 यूजर्स, दैट्स इट. Not much. Network error. What's a network error? I don't know. What's the network error? Okay, backend is not running. समझ गया. I haven't tried Mongo. हाँ यार Mongo is easy यार, little bit. बहुत easy है Mongo. दिखाओ जरा प्रोजेक्ट. दिखा रहा हूँ. कुछ नहीं करना. मोगो कैसे सेटअप करते हैं आई विल शो इट इफ़ यू वांट. इजी सेटअप है, कुछ ज़्यादा नहीं है इस पर सेटअप. इफ़ यू विल गो टू बैक एंड, हियर इट इज़. मैंने कुछ नहीं करा. आई जस्ट क्लोज ऑल द राउट्स. बेसिकली ना आई हैव मेड एन DB फोल्डर खोला मैंने, index.js, एंड जस्ट आई हैव इंटीग्रेटेड नथिंग एल्स. एक पैकेज है मोंगूस. Node.js के लिए एक पैकेज है मोंगूस करके फॉर द कनेक्टिंग टू द MongoDB through the Node.js. So this package helps to connect us easy to use देता है Mongoose. So I use this Mongoose package. So Mongoose के लिए मैं सिर्फ एक लाइन है सिर्फ await mongoose.connect. MongoDB URI दे देता हूँ, डेटाबेस के नेम तक.
बस हो गया कनेक्ट, सिंपल एज दैट. एज कंट्रोलर्स, सिंपल सा कंट्रोलर्स है, ये रहा कंट्रोलर्स. फिर वाना सी कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स में जा रहा हूँ, ये रहा. स्विच फेच करने के लिए सिर्फ क्या लिखता हूँ, अवेट. अवेट तो हो गई, सिंगलेस कॉल है. यूज़र फाइंड करने के लिए सिंपल एज दैट. जैसे प्रिज्मा में होता है, राइट, प्रिज्मा में होता है वही स्ट्रक्चर, इसमें भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, अंतर नहीं है. सेम लाइक प्रिज्मा ओनली, बट Mongoose is something better. Nah, I'm not using any ORMs. I think so I'll not use ORMs in this because Mongoose gives more flexibility for the MongoDB. Prisma, if I'm using Postgres ना, then I'll use Prisma because Prisma के लिए ORM ठीक रहेगा because easy to use के लिए. But MongoDB के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ Prisma, but डिफरेंस ये है कि बट ये नहीं देता है, दिस वन ये नहीं देता. दिस फीचर इज नॉट देयर इन द, आई शो इट, MongoDB. ये रहा Mongoose ठीक है. प्रिज्मा में ना वो नहीं देता. अरे यार प्रिज्मा लग जा, प्रिज्मा डॉक्स ये नहीं देता. एग्रीगेशंस ना MongoDB में ज़्यादा इजी है. और कैसे यूज़ किया, JWT सेशन, JWT ये रहा. आई एम यूजिंग प्रॉपर टोकनाइज्ड टोकन बेस्ड. ये रहा. इफ़ आई डू लॉग इन, आई एम यूजिंग प्रॉपर टोकन्स. इफ़ यू कैन सी द स्टोरेज, आई एम टेकिंग 2 tokens, बेसिकली 2 टोकन ले रहा हूँ मैं. एक्सेस टोकन ले रहा हूँ, साथ में रिफ्रेश टोकन ले रहा हूँ. ये रहा एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन. एडमिन का अलग है, फ्रंट एंड का अलग है. फ्रंट एंड हैज़ एन एक्सेस टोकन ओनली एंड रिफ्रेश टोकन, बट इस पर एडमिन टोकन लिखा, बस नेम चेंजेस है बस, और कुछ नहीं. JWT भाई, JWT कर रहा हूँ. सेशन करना पसंद नहीं है मुझे. JWT ईजी लगता है. ठीक है सेशन भी ईजी है, बट JWT आसान लगता है, ईजी टू. एक्सेस टोकन का TLL बाय शॉर्ट फॉर्म. लॉग आउट करने में क्या एक्शन करते हो? सिंपल, रिमूविंग द टोकन्स. टोकन रिमूव कर दूँ बस, सिंपल एज दैट, ख़त्म. एंड मैं वो बता रहा हूँ सिंपल सा. बेसिकली ना क्या करता हूँ मैं, बेसिकली आई हैव लॉग्ड इन. मैं डेटाबेस का स्कीमा भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. बेसिकली यूज़र मॉडल कैसे काम करता है, बिकॉज मैंने पूरा चेंज किया यूज़र मॉडल बेसिकली. सो बेसिकली ना मैं 2 ले रहा हूँ. बेसिकली जब क्रेडेंशियल्स लॉगिन होगा तो पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और एल्स आई एम यूजिंग एज जस्ट ईमेल ऑथेंटिकेशन फॉर द फ्रंट एंड यूज़र के लिए. आई एम टेकिंग रोल बेस्ड ऑल्सो RABC के लिए, बिकॉज देर आर 4 roles in this. Basically there are 4 roles which is super admin, volunteer, user. So front end के लिए तो user ही होगा. For the backend admin panel purpose there are 3 users. So super admin is me and admin is someone else, and volunteers are the volunteers, which is something 20 peoples. So they are the volunteers. So I've made as RABC, and basically मैं ले रहा हूँ is verified only for the credentials logins. Not the credentials, for the magic login, magic link. For the magic link के लिए I'm using is verified or not. Okay, then token is for this is for front end, ठीक है, and this is for admin panel, and this is a token version. Basically क्यों ले रहा हूँ, तो कितनी बार इसने लॉगिन किया, टोकन जनरेट करवाया. बेसिकली टोकन के ऊपर मैं लॉगिन करवाता हूँ बेसिकली टोकन वर्जन पे, बिकॉज टोकन वर्जन डिफरेंट होगा रिफ्रेश टोकन के हिसाब से. फ्रंट एंड में कुछ और टोकन वर्जन है और बैक एंड में कुछ और टोकन वर्जन है, तो इट पॉप एन एरर बिकॉज इट विल से अनऑथेंटिकेटेड. सो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन ये ऑनबोर्डिंग के लिए तो है ही. बेसिकली ये तो हैशिंग हो गया, प्रॉपर हैशिंग कर रहा हूँ. फॉर द क्रेडेंशियल्स के लिए हैशिंग होगा. टोकन इधर ही जनरेट कर रहा हूँ मैं बेसिकली. सिर्फ आई एम गिविंग द एक्सपायरी टोकन एज 15 minutes, दैट्स इट. ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा टोकन भी.
दिस इज द प्रोसेस आई एम डूइंग फॉर दिस टोकनाइज्ड एंड सबके लिए यार। और क्या करें, ये रहा टोकन एडमिन वर्जन। इफ वांट से मिडल वेयर में दिखाता हूँ बेसिकली ऑथराइज के लिए। ऑथर ये तो रोल बेस्ड हो गया। ऑथ मिडल वेयर ये रहा। बेसिकली मैं टोकन ले रहा हूँ, टोकन लेने के बाद आई एम चेकिंग द वर्जन ऑल्सो। अगर वर्जन इनवैलिड हुआ तो जस्ट क्लियर द tokens and just pop the error invalid authentication. Simple सा है, not much great but fully protected. That's it. कैसे तो I've protected using these routes. I've made a proper functionalities which is like this. If you want to see the auth route, so basically I've made a login करके 2 मिनट में लॉग आउट हो जाएगा। तो एक्सेस टोकन रिफ्रेश को बैकलिस्ट भी करना होगा, करोगे राइट। अरे यार ब्लैक लिस्ट नहीं, 2 मिनट में लॉग आउट कैसे होगा, 15 मिनट में होगा ना लॉग आउट। तो कैसे बोल रहा है, लाइक आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट। बेसिकली ना 2 मिनट में कैसे होगा यार, कैसे होगा लॉग आउट, बिकॉज एक्सेस टोकन तो इधर है। बेसिकली अगर मैं खुद रिमूव करने जा रहा हूँ, देखो यार इफ आई गो टू आई एम लॉग्ड इन बाय द वे, ठीक है। अब मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, अभी मैं लॉग्ड इन हूँ, सब डेटा दिख रहा है मुझे। इफ़ आई रिमूव दिस टोकन, एक्सेस टोकन रिमूव कर दूँ, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से पेज, तो लॉगिन दिखाएगा बेसिकली, राइट। अगर मैं फिर से लॉगिन करता हूँ फिर तो एक्सेस टोकन जनरेट होगा। मैंने लॉगिन किया, 15 मिनट का एक्सेस मिल गया मुझे, राइट। बेसिकली रिफ्रेश टोकन, हाँ रिफ्रेश टोकन भी तो है, एक्सेस टोकन हो गया। रिफ्रेश टोकन क्या करता है समझा देता हूँ, ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं, लफड़ा नहीं है इस पर। बेसिकली ना 2 तरह के टोकन स्टोर कर रहा हूँ मैं, बेसिकली आई शो 2 तरह के टोकन्स है। एक तो हो गया एक्सेस, आई जस्ट मेक इट एज बिगर स्क्रीन, दिख जाए क्लियरली आप लोगों को। जस्ट मेक अ बिगर स्क्रीन, ठीक है। और बेसिकली 2 टोकन्स ले रहा हूँ, एक तो हो गया एक्सेस टोकन, दोनों में डिफरेंट डेटाज है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट डेटाज है। एक तो हो गया एक्सेस टोकन, एक तो हो गया रेफ्रेश टोकन, ठीक है। तो बेसिकली इन दिस एक्सेस टोकन आई एम स्टोरिंग द यूजर इंफॉर्मेशंस, यूजर इन्फो प्लस दी आईडी, ओके, यूज़र आईडी दोनों स्टोर कर रहा हूँ। बट इस रेफ्रेश टोकन में सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टोरिंग द यूज़र आईडी, दैट्स इट। आई एम जस्ट स्टोरिंग द यूज़र आईडी, नथिंग एल्स टू रिफ्रेश दिस एक्सेस टोकन। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम स्टोरिंग दिस एक्सेस टोकन इन द डेटाबेस, आई एम स्टोरिंग दिस इन द डेटाबेस, बट आई एम नॉट स्टोरिंग इन द नॉट स्टोरिंग इन द डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम स्टोरिंग दिस एक्सेस टोकन इन द डेटाबेस के लिए क्यों स्टोर कर रहा हूँ, बेसिकली आई वांट रिफ्रेश। देखो यार 15 मिनट के बाद बार बार लॉगिन करना पॉसिबल नहीं है ना, राइट। दैट्स नॉट एन गुड यूएक्स फॉर द गुड एप्लीकेशन लॉगिन सिस्टम। सो मैंने क्या करा, आई जनरेटेड 2 टोकन्स, बेसिकली एक्सेस एंड रिफ्रेश। एक्सेस व्हाट डज इट, फ्रंट एंड के लिए, बस सिर्फ फ्रंट एंड टोकन्स के लिए कुकीज़ के सेटअप मैं कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम इन सेविंग द इन्फॉर्मेशन, यूजर इन्फॉर्मेशन एंड आईडी। अगर ये 15 मिनट में एक्सपायरी हो गया, थिंक दिस एक्सपायरी इज इन 15 मिनट्स, बेसिकली इसका एक्सपायरी है 15 मिनट, ठीक है। इसका एक्सपायरी होगा अराउंड 1 डे और 7 डेज, ओके 7 डेज। मतलब क्या है, 7 दिन तक ये क्या करेगा, लॉगिन स्टे रखेगा, ये एक्सेस टोकन इस पे रहेगा कुकीज़ पे, ठीक है, वेबसाइट पे। बेसिकली आफ्टर दिस 15 मिनट्स ये क्या करेगा, एक्सेस टोकन फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्या करेगा, इट विल मेक एन फेच रिक्वेस्ट टू द बैक एंड। क्या करेगा, इट विल रिक्वेस्ट टू द बैक एंड एंड इट विल से गिव मी एन रिफ्रेश एक्सेस टोकन, न्यू एक्सेस टोकन। क्या बोलेगा ये, एक्सेस टोकन अगर रिमूव हो गया ऑटोमेटिक एक्सपायरी होते ही, क्या करेगा, द API विल रीफेच अगेन, यूज इफेक्ट होगा, API इंटरसेप्टर होगा बेसिकली बीच में। सो इट विल चेक इट, बार बार चेक करेगा वो। सो बेसिकली ये क्या करेगा, एक्सपायरी होते ही क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा फिर से बैकएंड को, पूछेगा कि मुझे नया रिफ्रेश टोकन दे। तो ये क्या करेगा, सीधा फिर से रिफ्रेश टोकन देगा, उसका एक्सपायरी होगा, नया एक्सपायरी विच इज़ न्यू एक्सपायरी विच इज़ 15 मिनट्स अगेन, दूसरा 15 मिनट्स होगा। फिर ये क्या करेगा, ये बार बार जनरेट होगा इस टाइमिंग के ऊपर। अरे यार गलत हो गया, सॉरी समथिंग हैपनिंग। सो बेसिकली रिफ्रेश टोकन 7 दिन तक काम करेगा,
हाँ लॉजिक दिखा रहा हूँ. बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली 7 days का तो है ना जो 7 days तक रखेगा, मतलब रेफरेंस टोकन वेबसाइट पे रहेगा कुकीज़ की तरह. बेसिकली इसके ऊपर इसके डिपेंड करेगा, बिकॉज डेटाबेस में सेव कर रहा है ये पार्ट, बार बार रीचेक करेगा डेटाबेस पे. बैकएंड इसको रिक्वेस्ट करेगा, पहले रिफ्रेश टोकन देखेगा, अगर वेरीफाई हुआ तो फिर से 15 मिनट्स का एक्सेस देगा. अगर रेफरेंस टोकन भी नहीं है वेबसाइट पे, रेफरेंस टोकन वेबसाइट फ्रंट एंड में नहीं है, तो फिर से री लॉग इन करना पड़ेगा उसे. बेसिकली लॉजिक ये है. सो आई शो द लॉजिक ऑल्सो हियर. रेफरेंस टोकन का बेसिकली जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, आई शो द ऑथेंटिकेशन पहले. ऑथ राउट, ऑथ कंट्रोलर, ये रहा. बेसिकली जब क्रेडेंशियल लॉग इन कर रहा हूँ ना, आई एम टेकिंग दस द पासवर्ड, आई एम चेकिंग द रोल्स भी चेक कर रहा हूँ मैं लॉग इन के वक्त. इफ देयर इज एन एडमिन सुपर एडमिन वॉलंटियर देन तभी लॉग इन होगा, और एल्स लॉग इन नहीं होगा. बेसिकली आफ्टर दिस आई एम रिमूविंग द पासवर्ड, रेफ्रेश टोकन. या मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन मतलब भाई. learn with the rest, I'll make a video, or never mind, I'll make a video. ठीक है. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर द लॉग इन सक्सेसफुल आई एम जस्ट जनरेटिंग अ टोकन हियर. मैं क्या टोकन जनरेट कर रहा हूँ, आई शो इट, बिकॉज आई एम जनरेटिंग टोकन पे जा रहा हूँ. बेसिकली आई एम टेकिंग दिस, वैलिडेटिंग द यूज़र आईडी. अगर यूज़र आईडी गलत हुआ तो एरर पॉपअप कर देगा, फिर यूज़र नहीं दिखा देगा. बेसिकली जनरेट कर रहा हूँ टोकन. कहाँ से, मैं यूज़र मॉडल से जनरेट कर रहा हूँ टोकन. बेसिकली आई शो द यूज़र मॉडल में ये रहा. दिस इज़ द फंक्शन. कुबरनेट्स में कैसे डिप्लॉय करते हैं, ओ नो आइडिया मैन, आई हैव नॉट यूज्ड कुबरनेट्स यूज़ नहीं किया मैंने कभी. आफ्टर आई हैव टू ट्राई इट मैन. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड्स बना लिया मैंने, जनरेट एक्सेस टोकन करके, एडमिन करके, ये रहा एडमिन टोकन. सो बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग आईडी, ईमेल, रोल, परमिशंस, व्हाट आर द परमिशंस ही कैन एक्सेस इन द वेबसाइट एडमिन पैनल, एंड द टोकन वर्जन एडमिन. दैट्स इट, इतना ही है इसके लिए. जनरेट के लिए बेसिकली जनरेट करने के बाद मैं कुकीज़ में स्टोर कर दे रहा हूँ. इट्स लेवल 4 फॉर डेवलपर्स, आई नो मैन, आई हैव टू लर्न इट मैन. आई हैव नेवर यूज्ड कुबरनेट्स, आई हैव टू लर्न इट. अरे वो तो सीख लूँगा, इट्स टेक्स ओनली 6 to 7 days to learn it. I'll learn it man, never mind. What's levels? डेवलपर्स लेवल भाई, किस स्टेज पे हो, क्या स्टेज पे हो, मे भी हो सकता है वही है. तो बेसिकली रेफ्रेश टोकन दिखा रहा हूँ, ये है रेफ्रेश टोकन. रेफ्रेश टोकन चेक कर रहा है, कुकीज़ वेबसाइट फ्रंट एंड से चेक कर रहा है. अगर है तो आगे बढ़ेगा, नहीं है तो क्या करेगा, रेफ्रेश टोकन अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट बोल देगा. ठीक है. बेसिकली अगर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है फिर ही रेफ्रेश टोकन प्रोसेस होगा, और एल्स प्रोसेस नहीं होगा. बेसिकली मैं टोकन को डिकोड कर रहा हूँ, पहले आईडी को चेक कर रहा हूँ, जो रेफ्रेश टोकन और आईडी है, जो रेफ्रेश टोकन का आईडी है और डिकोडेड टोकन का आईडी है. समझ गया भाई, डिप्लॉय कर दो आप. ओ भाई समझ गया, ठीक है भाई साहब, बढ़िया, नाइस. डिप्लॉय करना अभी यार, थोड़ा काम आई थिंक सो इस पर, इट विल टेक्स लिटिल बिट टाइम. सो ठीक है, डिप्लॉय करते हैं. हाउ डू यू अंडरस्टैंड ओपन सोर्स कोड बेसिस. बेसिकली ना एक कोड देखो यार, आई शो वन कोड विच इज़ एन ओपन, नॉट एन ओपन सोर्स, दिस इज एन not an open source. I'll just show it. This is only for the learning purpose, or this is an production grade code. Just for the learning purpose I'm opening it. ठीक है. It's not it's an private repository. Basically if I show the production branch in this, wait, there are so many branches here. This is some production app which they are using it, DevHub. ठीक है. If you see, there are so many things. I never do something here. I just go into that. इसमें भी कुछ नहीं है. ठीक है. मैं क्या करता हूँ, सीधा I used to go in the SRC. Mainly I used to check their types, what folders or structure is. So if I go to types and all, there are some types of them, project types. Then stores are about full Firebase store. They are full schemas here present here totally. So schemas present है इधर, सारे के सारे schemas and workflows present है इधर. उसके बाद I go into something else, app. सीधा इसमें जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कैसे बिल्ड है. बेसिकली ना इसमें प्रोडक्शन ग्रेड में क्या इन लोगों ने क्या गलती किया, तो बेसिकली दे हैव नॉट यूज्ड
टू मच प्रोडक्शन ग्रेड बट ठीक है, प्रोजेक्ट सही है, बट इनका प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड सही है. दे आर टाइप स्क्रिप्ट. इस प्रोजेक्ट में पूरा टाइप स्क्रिप्ट इंटरफेस है, पूरा पूरा टाइप सेफ्टी है. बिना टाइप सेफ्टी कुछ है ही नहीं इस पर बेसिकली. इन दिस आई हैव लर्न सो मच. बेसिकली लर्न क्या क्या था मैंने, आई शो रिसेंटली आई हैव लर्न मेनी थिंग्स which is giving a global error, which is a good thing in front end. Which is a good thing in front end. We have to do it. This is what I learned in this project. And one more thing, which was something it's necessary to learn LLD and architectures to make. Yes, man. It's very important for the production grade interface. तो बेसिकली मैंने ना जो देखा था दैट वाज समथिंग दिस वन. इसमें ना इन लोगों ने क्या किया था, नॉट इन दिस, हियर इट इज. दे हैव मेड एन व्हाट टू से, दे हैव मेड एन प्रॉपर एंड सर्विस फोल्डर्स फॉर दिस. वेयर इट इज सर, इस पे तो नहीं दिखा रहा. नॉट इन दिस रेपो, बेसिकली नॉट इन दिस रेपो. रेपो कहाँ गया रेपो. जस्ट अभी तो सर्च किया था मैंने. जस्ट ये रहा, दिस वन. ही हैज़ मेड एन प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड. इफ आई सी इन दिस, बेसिकली ही हैज़ मेड अ प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड. बेसिकली कॉन्टैक्ट्स में सब कुछ है. इसमें क्वेरी प्रोवाइड दिया है इसने, टैंक स्टैक क्वेरी यूज़ किया बेसिकली, तो इधर दे दिया इसने पूरा टैंक स्टैक क्वेरी का प्रोवाइडर्स. So he has made a proper structurized in TypeScript itself. Hooks नहीं, libs में गया था मैं सीधा. He has defined APIs. Bro, mic का प्राइस बोलो. Mic price is around 6.5k. Mic price is around 6.5k man. TS interface बता दो. Yes man, I'll do it. बता दूंगा यार, 2 मिनट दे बस. So basically ना इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चराइज किया था सारे API कॉल्स, कैसे कैसे जाने हैं, कहाँ से जाने हैं. सीधा इधर से एक्सपोर्ट किया था इन लोगों ने, बिकॉज दे आर यूजिंग दिस वन टैंक स्टैक क्वेरी. सो दे आर यूज्ड हियर म्यूटेशन फंक्शन, ऑल दी फंक्शंस हियर. कौन सा API कॉल कहाँ होने वाला है. सो इफ देयर इज एनी चेंज दे चेंज हियर इटसेल्फ, तो ईजी टू यूज. सो दे आर मेड लाइक दिस प्रॉपर स्ट्रक्चराइज. इवन द एक्सियोस रिक्वेस्ट ऑल्सो, एक्सियोस के लिए इन लोगों ने अलग बना रखा है हीरा. So they have made an interceptor here. This was an interceptor I said. If it's unauthorized, it makes another request to the backend, and it is the another token, refresh token here. So basically, like this, it's going to work. 1K में कुछ अच्छा आ जाएगा. हाँ यार, अच्छा आ जाएगा, अच्छा तो आ जाएगा. 1K में तो अच्छा आ जाएगा. कीरो में है. मेरे को तो कीरो अच्छा लगा. आई थिंक सो. कीरो इज समथिंग गुड. स्ट्रीमिंग कीरो इज समथिंग नाइस यार. कैसा चाहिए, स्ट्रीमिंग माइक चाहिए और एल्स व्हाट माइक यू नीड. स्ट्रीमिंग माइक और एल्स समथिंग अदर माइक यू नीड. I bought this one with this era. Try this one. Rec premium condenser mic streaming के लिए. ठीक है, streaming के लिए चाहिए, right? Just I'll search one more website which is Spear, I think so. Spear it was. Okay. No. I'll just go to Amazon. मैं ना माइक ब्रांड बोल के बताता हूँ, ठीक है. पॉडकास्ट माइक. Which one ना, I'll show which is something. Which कौन सा था. कौन सा था. एस में स्टार्ट हो रहा था. इट वॉज एन एस स्टार्टिंग. इट वॉज एस. ओके. माई बैटरी इज 10%. बट 1000 रुपये में तो आई थिंक सो नॉट पॉसिबल है यार. आई थिंक सो पॉसिबल ही नहीं दिखा रहा है इधर तो. 1000 रुपीज़ में इन 1K आई थिंक सो इट्स नॉट पॉसिबल.
भाई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो? मैकबुक आने के बाद स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँ? भाई आई थिंक सो मैकबुक में स्ट्रीमिंग मत करो यार, इट विल समथिंग टेक. व्हाट आर एस एम एम प्लेटफॉर्म्स? सोशल मीडिया मार्केटिंग, वही तो बोला था मैंने, एक्सप्लेन करा था ना उस दिन. तो मैंने एक्सप्लेन दैट टाइम दैट डे ना, एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट अराउंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, marketing management platform. I explained it here clearly. I'll show it where it is. I think so. I've explained it already in previous streams. Where it is. I think so. I've did it. उस दिन खरा था ना मैं, right? Guys, I've did it right. Here it is. Here it is. Here it is. Here it is. Automation. Here it is. What is that app name? Excalidraw. TS interface. बड़ी यो मैन एक्सप्लेन करता हूँ, चलो. इंटरफेस लेट्स टीच इंटरफेस. इसको भी इधर ही रखता हूँ. लेट्स कीप इट हियर. इट इज हियर इटसेल्फ. इंटरफेस. भाई मुझे ज़्यादा पता नहीं है, कोई नहीं, बट फिर भी मैं दिखा दूंगा. द वन यू आर शोइंग नाउ. हाँ, Excalidraw. Here it is. Excalidraw. Just now I said Excalidraw. Here it is. Excalidraw. You can see the link. Excalidraw. This one. I use this one. Okay. TypeScript interface. My interface. I really don't know TypeScript, but I'm trying to teach. मुझे पता नहीं है, but I'll try. Really don't know TypeScript, but I'll try to learn itself. TypeScript क्या होता है भाई? इंटरफेस बताओ यार, फटाफट बताओ. What is TypeScript क्या है बताइए. इंटरफेस क्या है बताइए भाई. What is TypeScript interface? What is interface भाई? Tell me man. पुश कर बताओ man. OBS. I'm using OBS man. OBS. मैं बताऊँ यहाँ. हाँ, और मैं बताऊँगा. मुझे तो बताइए, मैं बता रहा हूँ फिर. लेट्स चेक योर्स फर्स्ट. थोड़े तो पूछा था. अरे यार मेरा चैट बंद हो गया. चैट खोलता हूँ. क्या दिक्कत है यार, चैट खोलना पड़ेगा. क्यों मेरा मिनट. चैट टाइप मत करना, मैं चैट खोल लेता हूँ पहले. टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैक तो आ जाएगा फिर से. समझ नहीं आया बिल्कुल. चैट ओपन कर लेता हूँ मैं. ओपन कर लिया. यस. ओके. क्या बोल रहा है भाई तू? अब दिख रहा है. ओके. अच्छा, समझ नहीं आया बिल्कुल भी उससे. ठीक है भाई, चलो करते हैं. मुझे भी पता नहीं. आई थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड. पता नहीं मुझे. जस्ट आई विल टीच. जो भी आता है आई टीच इट. ओके. ज़्यादा कुछ मैं भी ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट में काम नहीं करता, बट हाउ डू यू शो चैट थ्रू द स्ट्रीम लैब्स. मैं ना सिंपल सा समझा रहा हूँ. टाइपस्क्रिप्ट क्या, इंटरफेस क्या होता है यार. इंटरफेस कुछ नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट है. स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट है. इसमें डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं. इंटरफेस मतलब ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं. ये क्या करता है, हेल्प क्या करता है. हेल्प बेसिकली इसमें करता है बग्स कैच करने में ईजिली. जैसे लाइक जो भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक वेरिएबल्स जैसे प्रोवाइड करते हैं. सो इट ईजिली डिफाइंस बग्स ईजिली मिल जाते हैं. फिर और क्या होता है, कोड मतलब ज़्यादा ईजिली रीडेबल हो जाता है यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंटरफेस. और बेसिकली ना सिंटैक्स ये है इसका. बेसिक सिंटैक्स ये है, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है. इंटरफेस लिख दो एंड जस्ट गिवन मॉडल नेम दे दो, विच इज़ एंड समथिंग आई विल गिवन यूज़र. अभी जो बैकएंड कर रहा हूँ मैं, आशीष मोतवानी. टाइप्स एंड टाइप्स आर सिमिलर इन द वे. हाँ,
बेसिकली इंटरफेस फिर ओपन दिस इंटरफेस एंड ओपन ऑब्जेक्ट. तो इसमें बेसिकली लिख सकता हूँ मैं टाइप सेफ्टी के लिए नेम अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दिया हूँ मैंने. एंड आई एम गिविंग एस वन मोर थिंग विच इज़ लेट्स टेक मोबाइल नंबर एंड एस नंबर. ठीक है, नंबर आई एम टेकिंग जस्ट फॉर द रेफरेंस. ठीक है, बेसिकली ये ले रहा हूँ. बेसिकली जब मैं वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ, राइट, वेरिएबल्स जो भी मैं पास कर रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट्स पास कर रहा हूँ, सो इट्स मस्ट बी स्ट्रिंग और एल्स इट मस्ट बी एन नंबर टाइप. अगर कुछ भी डिफरेंट आ गया, जैसे Node.js में अभी कैसे विदाउट टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे होता था, अगर मैंने बेसिकली ये दे दिया वाइल डिफाइनिंग टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, कुछ भी डिफाइन करने वक्त मैंने कुछ और दे दिया, स्ट्रिंग के बदले मैंने array दे दिया, तो इट विल पॉप एन एरर इजीली इन द टाइप स्क्रिप्ट बट नॉट इन द जावास्क्रिप्ट. तो बेसिकली ये है, अगर कुछ टाइप सेफ्टी के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं. इसमें मैं फंक्शन भी पास करता हूँ यूजिंग दिस. आई एम पासिंग अ फंक्शन ऑन handle register button. If I'm passing it, I'll just pass it as a void function दे दूंगा मैं, basically void दे दूंगा, void function. So you can pass a function and objects like proper define करते हैं the schema defining. If I want an example, I'll show example. I'll just go to debug. पता नहीं मैं लीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम डूइंग इट फॉर माई सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी पर्सन. जस्ट अभी जो वेबसाइट बनाया था मैंने, बेसिक स्ट्रक्चर था और कुछ नहीं है. आई शो वन थिंग विच इज़ ईजी, जो समझ में आए वो दिखाता हूँ. हीरो सेक्शन, आई थिंक सो. हीरो सेक्शन, हीरो इट इज़, हीरो ही है. बेसिकली ना मैं क्या पास कर रहा हूँ, इवेंट डिटेल्स. इस पे देखो यार, इवेंट डिटेल्स पे क्या पास कर रहा हूँ मैं. बेसिकली आईडी नंबर दे रहा हूँ, टाइटल दे रहा हूँ स्ट्रिंग. अगर मैं स्ट्रिंग के बदले मैंने कुछ और दे दिया उधर, बेसिकली इफ आई शो टाइटल की जगह मैंने स्ट्रिंग वो दे दिया मैं. बेसिकली कहाँ गया टाइटल, हियर इट इज. इफ आई नेम इट एज टाइटल एज कुछ और दे रहा हूँ. बेसिकली टाइटल में इनपुट बॉक्स भी तो नहीं है इधर, कैसे समझाऊँ तुझे. इनपुट बॉक्स भी नहीं है. This is so. I can show one more example which is live में. ठीक है, वो दिखाता हूँ. That will be easy for you. उसमें ना input boxes भी है. I'll show that one. So here it is. AWS Despair पे चलते हैं. ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है टाइपस्क्रिप्ट का. बेसिकली फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा टाइपस्क्रिप्ट का. This is my first project in TypeScript. This is one. I'll just go to the register route. If you can see here, I have not made any TypeScript type safety here. Live example कर रहा हूँ. बेसिकली मैंने टाइप सेफ्टी नहीं करा है इसमें बेसिकली. ठीक है, अगर मैं टाइप सेफ्टी करना चाहूँ इधर, बेसिकली इफ़ आई राइट जैसे जॉड करता है टाइप सेफ्टी, तो इसमें लिख लेता हूँ मैं. आई जस्ट राइट इंटरफेस एंड आई मेक एस इट्स. ठीक, कंट्री ऑप्शन का कर लेते हैं, दे रहा है तो ना. रजिस्टर का करते हैं, सीधा रजिस्टर फॉर्म का करता हूँ. तो बेसिकली क्या टाइप्स लेना चाहता हूँ मैं. फर्स्ट नेम तो लेना, फील्ड नेम यही तो है, लास्ट नेम तक रखता हूँ अभी तक सिंपल. सो आई विल पास दिस इंटरफेस इन द फॉर्म. बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑलरेडी मैं टाइप डिफाइन रखा है. आई ऑलरेडी डिफाइन द टाइप, हियर इट इज़. बेसिकली मैं ले रहा हूँ टाइप कौन सा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया नाम. सो मैं ले रहा हूँ जेड इंटरफेस, जॉड का इंटरफेस ले रहा हूँ मैं. जॉड का इंटरफेस ये रहा. एंड टाइप क्या है इसका, ये रहा इसका स्कीमा, मैंने पास कर दिया. बेसिकली ये है कंपनी नेम. अच्छा, ये भी दिक्कत है. आई हैव ऑलरेडी डिफाइन दिस. आई हैव टू रिमूव दिस. यार मुझे ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट आती नहीं है, बट आई एम अ बिगिनर इन टाइपस्क्रिप्ट, जस्ट लर्निंग स्टेज. कोई टाइपस्क्रिप्ट का वीडियो है कुछ, आई कैन डू इट, दैट्स बेटर. एनी I am think so. I'm learning. I have to learn TypeScript with this person. Code with Antonio. Antonio से सीखना पड़ेगा TypeScript. Okay. Okay. Oh my God. Something happened.
something big happened. Okay, something blabbered. Backend crash हो गया. Some backend is crashed. और notification आ गया. कहाँ crash हो गया? किसी ने use कर दिया. Someone has used it. Someone used my credentials. Very bad, man. Oh my god. Bills भेज दिया यार इन लोगों ने मुझे. Someone has used it. Someone used it यार. जो credits बताए थे मैंने किसी ने use कर लिया. बढ़िया काम कर रहे हो. किसी ने यूज़ कर लिया भाई. मेरे क्रेडिट्स गए. ओ भाई रियली माई क्रेडिट्स हैज़ गॉन. किसी ने मेरा ENV यूज़ कर लिया. पूरा सारा पेमेंट हटा दिया. क्लाइंट का मैसेज आ गया. चलो कोई नहीं. होता रहेगा ये तो. लाइव स्ट्रीम का पार्ट ही है ये. पता था मुझे. तो पता ही था. होना ही पड़े था. होना ही था तो. होना ही था ये तो. तुम लोग लीक्स कर दिया यार. लीक कर दिया पूरा. वेरी बैड. Let's check this themes. Const theme, use theme. Okay, assets. I'll make this as light and this as dark. This is dark and I'll just save it. Here it is. It's proper. अगर मैं theme dark कर दूँ तो dark कर दूँ तो कैसे रहेगा? So if I do the theme dark, so I'll make an on click if possible. On click इधर ही लगा लेते हैं. On click image. On click image. Make the theme as dark or light. Okay. So set theme. I'll call this set theme here. Which company are currently working? No companies, man. I'm just a freelancer. I said as before. I'm just a freelancing worker. If I click this, it's not changing the template. Journal. Or else let's make a button here. I'll make a button. Okay, something ASG and on click function here. If I click this button, the theme is not changing. Set the theme to dark. Just set the theme to dark. और कुछ मत कर. Just set the theme to dark. The theme is not setting to dark. I don't know why. भाई themes काम क्यों नहीं कर रहा basically? Why this is not working? What is the भाई UG BCA man BCA. After this I'm gonna do masters. After this I'm gonna do masters. By the way, masters I'm planning in US. Masters by the way I'm planning in US at next year. Why it's not changing? I don't know. Next theme भी import कर दिया मैंने. Use theme. Have you worked for any company? Not yet. Not yet. Not as a full time. Just for a freelancing work I do. For the working companies, I don't think I will go. I'm gonna make an own company as a startup. I'm thinking for that. So I'm waiting for that purpose. Basically, I'm learning for that thing. Theme provider. I'll create a theme provider. Basically, I'll go to the providers. Make a theme provider. .jsx. Paste it out here. I'll make it an export. The export function. As theme provider as a children and constant themes proper. नहीं यार जावास्क्रिप्ट में भी तो होगा. ये तो गलत है. This one is wrong totally. मुझे सिर्फ थीम प्रोवाइडर करना रिटर्न
return. What you are currently building? I'm building so many stuff basically. Basically projects काफ़ी ज़्यादा है which I'm working around. Where one thing is which is on platform which I'm making like that is on DevOps. I'm trying to build like that, and one more thing is one more thing is an UI library which I said before basically. UI library भी build कर रहा हूँ मैं basically. I'm building the UI library also. And one more thing which is I'm building is custom SaaS platform which is for the POS, for the multi-tenant options. Like you can say like platform like Shopify. I'm building it. Shopify or else Wix platform जैसे कुछ I'm gonna build it in the live stream itself. I'm planning these stuffs and all. These platform, and one more platform is around hosting platform, making an own like AWS part, like having a easy to instance here itself, like making it as a AWS clone part. There are so many projects in my mind right now. I'll go step by step. इसको import कर लेता हूँ layout पे. Tell me Mike under 2K. Try out Kiro man. Kiro बढ़िया I think so. Kiro, you can try it man. I'm also using Kiro. Kiro is something good यार. You can try out this Kiro mic itself. Kiro बढ़िया है सच्ची. मजाक नहीं कर रहा मैं. Kiro बढ़िया है. Kiro बढ़िया है यार सच में. Try out Kiro. Kero. That's something good which I'm using currently. You can hear this sound with Kiro mic itself. ये Kiro mic sound ही है और कुछ नहीं है. Kiro मतलब अच्छा है बट अराउंड आ जाएगा 2-2.5 हज़ार में आ जाएगा बेसिकली. ज़्यादा कुछ नहीं है. 2-2.5 हज़ार में आ जाएगा Kiro mic. बड़ा अच्छा है Kiro mic सच्ची. बहुत अच्छा है Kiro mic you can say. I'm using currently around 6 months से यूज़ कर रहा हूँ. बढ़िया है. But not for the streaming purpose. Before I was using for the meeting purpose something. बड़ा अच्छा था Kiro mic. बढ़िया है. मुझे तो पसंद आया भाई सच्ची कहूँ तो. I really liked it. Wait one second. डार्क भी तो है मेरे पास. भाई आपने पढ़ाई की है बैचलर्स या मास्टर्स ने आप. भाई मैंने सिर्फ बैचलर्स की पढ़ाई की अभी तक. सो आई एम ट्राइंग टू डू मास्टर्स इन यूएस नेक्स्ट ईयर बाय द वे. आई एम गोना डू मास्टर्स नेक्स्ट ईयर इन यूएस. माय टारगेट इज दैट थिंग. टारगेट हुआ है. Yes, Kiro man. वही स्पेलिंग है. सही स्पेलिंग है. The theme is not changing still now. I don't know why this is happening. Can anyone help me out here? Themes or set themes. I don't know why this is not working. Previously it was working correctly fine, but I don't know why it's not working. There may be some issues which I'm doing it. Class name which is dark. Here अभी तो चेंज हो रहा है बट बैचलर्स में कौन सा डिग्री है भाई. आई हैव डन BCA man. I've done BCA but I've not learned anything in college time. I've learned on my own basically. खुद से सीखा सब कुछ. So कॉलेज से कुछ नहीं सीखा मैं बट कॉलेज ने कुछ नहीं सिखाया. बस कॉलेज ने कुछ नहीं सिखाया. सिर्फ करो बकचोदी भाई. और कुछ नहीं सिखाया इसने कॉलेज ने. और कुछ सिखाता भी नहीं है कॉलेज बेसिकली. कुछ सिखाने के लायक भी नहीं है कॉलेज बाय द वे.
आईआईटी वगैरह ठीक है, नेक्स्ट लेवल है, बट टायर 3 कॉलेजेस डजंट टीच एनीथिंग. यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन. खुद से सीखना पड़ता है. इवन टायर 2 कॉलेज कुछ तो सिखाता है एटलीस्ट. टायर 2 कॉलेज कुछ तो सिखाता है एटलीस्ट, बट टायर 3 कॉलेजेस नथिंग. लास्ट ईयर प्रोजेक्ट में क्या बनाते हैं? लास्ट ईयर प्रोजेक्ट क्या बनाया था? मैंने बनाया था एक प्रॉपर वेबसाइट ही बनाया था कॉलेज के लिए, CRM. फिर मैंने डिलीट कर दिया. CRM बनाया था मैंने कॉलेज के लिए, पूरा वेबसाइट ही बनाया था मैंने. रीवैम्प. पूरा उनका वेबसाइट बनाया था, पूरा प्रोडक्शन ग्रेड वाला. फिर मैंने डिलीट ही कर दिया कोड. कुछ दे ही नहीं रहे थे मुझे, मैं क्यों बनाऊँ भाई? कुछ क्रेडिट्स नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे. मैंने सोचा भाई बनाए क्यों कॉलेज के लिए, इस चूतिया कॉलेज के लिए क्यों बनाए. बेसिकली ये था मेरा पॉइंट. तो मैंने डिलीट ही कर दिया फिर कोड उनका. मन ही नहीं गया कोड करने का, तो डिलीट ही मार दिया सीधा. बहुत गंदा था भाई कॉलेज मेरा, सच्ची. भाई कॉलेज में तो भाई कुछ करना नहीं चाहिए, बट जाओ सीखो मज़े करो बस. खुद से घर पे बैठ के जो सीखने का मज़ा ही अलग है कुछ. दैट थिंग व्हिच आई लव. भाई लॉगिन पेज पे तो वाई वाई द शिट इट्स हैपनिंग. आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग. कुछ नहीं करना, थीम लिखना. अगर लाइट हुआ तो लोगों को डैमेज मिलेगा, और डार्क होगा. यही तो बेसिक कोड ही तो है. फिर भी काम नहीं कर रहा है. डोंट नो भाई क्या दिक्कत है. ये डार्क होगा, ये लाइट होगा बेसिकली. ये तो अभी डार्क दिखेगा. अगर मैं थीम चेंज करूँ, थीम चेंज भी नहीं हो रहा. सेट इट टू डार्क, इट्स नॉट चेंजिंग. सेट थीम को कॉल किया इधर बराबर, फिर भी काम नहीं कर रहा. इट्स नॉट वर्किंग. अगर मैं इधर चेंज करूँ, सो इफ़ आई चेंज इट हियर, इफ़ आई चेंज टू डार्क थीम इज डार्क, शुड शो, बट शो नहीं हो रहा. आई डोंट नो वाई बट if I switch to dark mode and if I see in the console log में चेक करता हूँ. बेसिकली कंसोल लॉग में कुछ तो इशू आएगा. डार्क ही तो, इधर भी डार्क ही तो दिखा रहा है, बट वाई द लोगो इज नॉट अपडेटिंग एज वाइट. वाई इट्स नॉट अपडेटिंग, आई डोंट नो. लेट्स टेल टू Copilot fix this issue. Theme not working. स्विच करते और क्या भाई, थीम काम ही नहीं कर रहा. कब से ट्राई कर रहा हूँ. द टीम इज़ नॉट इवन वर्किंग. वाई आई डोंट नो. मैंने यही बराबर से सेट किया था, टीम इक्वल्स टू. अगर थीम होगा तो थीम, फोर्स रेंडर ऑन द थीम. भाई ये तो पता ही नहीं था मुझे फोर्स रेंडर करना है. देख फिर भी तो नहीं दिखा रहा बड़ी. दैट्स द मेन इशू ना. फिर भी तो नहीं दिखा रहा. तो कुछ भी करना, फिर भी तो नहीं दिखा रहा ये. देख फिर भी तो नहीं कर रहा ये चेंज. अगर चेंज करता तो मैं मान जाता. लाइट पे डार्क दिखा रहा है, डार्क पे लाइट दिखाना है मुझे, सिंपल एज दैट. अगर इस पर लाइट कर दूँ, ले अब दिखा रहा. तो इफ़ आई चेंज दिस एज लाइट, लाइट पे लाइट दिखाएगा, डार्क पे डार्क दिखाएगा. अच्छा की 10 मैटर्स इन दिस. भाई सब कुछ सही लिखा था, सिर्फ की मैटर नहीं करा था मैंने. देख फिर भी सेम इश्यूज. वाई इज दिस हैपनिंग. इफ आई सेट इट एज लाइट, okay, value is not changing backend. Have you ordered from official website? Yes, I've ordered from the official website. Or no, official website, here it is. My bill is, here it is, mail. Here is my bills, hero. Here it is. Okay, Kiro website. I think so. I'll show my orders basically. If I go to my account, if I log in it, okay, I'll just log in it by लॉगिन कर लेता हूँ. हो जाएगा लॉगिन. हो गया लॉगिन.
ओ माय गॉड, पासवर्ड गलत है. Password is wrong. पासवर्ड गलत है फिर से. ठीक है भाई, फॉरगॉट पासवर्ड कर लेना तू. भाई एनिमेशन इजी है, पता कितना इजी एनिमेशन. इट्स वेरी सिंपल यार दिस एनिमेशन. ट्राई आउट कर लिया मैंने कब का इस वाला कीरो वेबसाइट वाला. जस्ट चेक माई मेल एंड शो द ऑर्डर. सेंड एन ईमेल. ऑल मेल्स. refresh refresh. No mail is here. Why I don't know. मेल तो नहीं आया. कीरो भाई इनवॉइस कहाँ गया. कीरो. माइक रिप्लेसमेंट आई थिंक सो. अरे नहीं मैन, नहीं दिखा रहा. आई डोंट नो. मेल भी भेज दिया मैंने. मेल फॉरगॉट मेल पासवर्ड भी नहीं, मेल नहीं आ रहा. समथिंग इज. In which year you are done BCA, bro? Which languages you use? In college, I never studied basically for your website. So basically, I know these many languages right now, full-fledged. I know these many languages in full-fledged. Full-fledged, I can say, means full-fledged. I work these languages daily. In college, I learned C++, Python, even C. I learned even C and Python, Java, and I learned PHP. I learned VB.NET and C Sharp and JS, JavaScript, which is JavaScript. HTML, they taught me these and all. HTML, they never taught me CSS. These were the things they taught, but before this I already know these many languages already, which is Python. I already know before the college. This was they teached after joining college. They teached me, okay, but before joining college, I know these many languages basically. Before joining college, I already know the Python. I'll just make a clone. I already know Python. I don't know C++ that time, even the C. I don't know. I was using Java, but I don't know PH. These many languages I used to know it that time. HTML is not a language, but they taught. This was the things of which I know. Right now, I know Mern. Even I know Next. I know Mern and one more which is Swift UI and Dart. Swift and Dart. And one more thing which is Kotlin, which I know. There are many. One more which is R Sharp. If you guys know R Sharp, there's an R Sharp also. R Sharp भी एक लैंग्वेज है ऑटोमेशन वगैरह के लिए. उसके बाद आई नो आर्डुनो. हाउ मेनी गाइस यू नो आर्डुनो? भाई स्पेलिंग भूल गया मैं तो. RDUNO. हाँ मैं यू गलत लिख दिया. RDUNO. आई नो आर्डुनो ऑल्सो. आर्डुनो भी पता है मुझे. आई यूज दीज मेनी लैंग्वेजेस बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज. ये था मुझे. उसके बाद ये तो कुछ सिखाया नहीं, मैंने भी खुद सिखाया था. I learned, I have taught in college so many things, which is one thing is GitHub, another thing which was Postman, and another thing which was C Sharp, which with Windows Forms project, and
लंबी लाइन बोल रहे हो, हाँ यार मैं क्या करें. उसके बाद डॉकर सिखाया था मैंने. आई थॉट डॉकर देम. आफ्टर दैट आई थॉट देम गेट हो गया. इवन द गिटअप सिखाया था. उसके बाद पोस्टमैन डॉकराइज्ड हो गया. फिर आई थॉट देम वर्सल ऑल्सो फॉर द होस्टिंग. I taught them Versal also. Even and I taught one more thing which was um I think यही बस सिखा था. This was which I taught in the college. This was recommended by the sir. Sir ने recommend किया पढ़ाने के लिए, तो I taught it. Where do you live? I live in a peaceful area which is called my room. I live in Chennai, man. Chennai Super Kings. You know about Cloudinary? Yes. Buddy, I'm using Cloudinary in this only. If you want to see, I'm using Cloudinary only in this. Here it is. Cloudinary. I'm using Cloudinary. Here it is. See, I've made a proper production grade Cloudinary setup if you want to see. I've made a chunk size. If I upload, it uploads in chunks, not by the whole file. It divides in the chunks and uploads. And even for the update and all the stuffs are like proper production grades. Let's move. Okay. Why this is not working, man? This value is not changing. If I click to light, it's changing. If I change like this, I joined live today. That's why, bro. Got it, man. Thank you so much, buddy. You guys are literally awesome. What was something I've missing? Disable, right? Disable. Transition change. Okay. I'm not just showcasing my face. Deploy हुआ भाई. डेप्लॉय करना है भाई मुझे, बट थोड़ा मेंटेन करना है यार. कुछ मतलब अच्छा डेप्लॉय करना ही है. ठीक है चलो यार डेप्लॉय कर देता हूँ, बट बार बार कोड चेंज करना पड़ेगा मुझे फिर. चलो यार डेप्लॉय कर देता हूँ मैं. आई मेक अ डेप्लॉय टुडे बाय द वे. डिप्लॉय कर देता हूँ मैं बेसिकली. चलो बैकएंड डिप्लॉय कर देता हूँ मैं आज. डॉकर खोल लेता हूँ मैं. डॉकर कमांड लाइन टूल्स में डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे. रुको भाई, कोई जल्दी नहीं है भाई, बस पूछा था. अभी रिजॉइन क्या स्ट्रीम. नाइस भाई. अपना हिसाब सही करो. कौन सा हिसाब भाई? कौन सा विच हिसाब विच वन कौन सा हिसाब? इंट्रो सॉन्ग नेम ग्रेटफुल विच इज समथिंग गुड ना. अच्छा है ना गाना इंट्रो. ग्रेटफुल भाई, ग्रेटफुल रहो सबके लिए. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइस. भाई आप लोगों से मैं ग्रेटफुल हूँ. इवन फॉर द आई एम मेकिंग एन एसी टू इंस्टेंस भाई. अभी कभी इंस्टेंस बना रहा हूँ मैं, तो जीपीटी खोल रहा हूँ पहले. आई डोंट नो हाउ टू डिप्लॉय. फिर भी मैं एक बार करा था पहले, लाइक व्हेन आई वाज लर्निंग AWS. आई लर्न कैसे डिप्लॉय करता है, भूल गया था. अभी मैंने रिएक्ट में प्रोजेक्ट्स कैसे साथ बांधूँ या TS से लिखना शुरू करूँ. भाई TS मुझे आता नहीं है ज़्यादा, सच्ची आता नहीं है, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ TS लिखने का. बेसिकली मुझे आता नहीं है TS, बट आई इवन रोट इन TS. पिछले 2 प्रोजेक्ट मैंने TS में लिखे थे. सीख के लिखा था मैं भी. बट जावास्क्रिप्ट मैंने स्विच कर दिया फिर से भाई. जावास्क्रिप्ट ऐसी लगती है, बट सीखना पड़ेगा. टाइपस्क्रिप्ट जल्दी सीख लूँगा. बट टाइपस्क्रिप्ट अच्छा है, आई थिंक सो. दिस एक गुड टाइप सेफ्टी के लिए अच्छा. दिट्स गुड, वेरी गुड. बट AWS ना चार्ज करता है ज़्यादा, वही तो दिक्कत है. राउटिंग वगैरह पे चार्ज करता है. मैं ना डॉकराइज कर रहा हूँ अभी, ठीक है. आई एम मेकिंग द थिंग डॉकराइज विच इज़ हियर इट इज. चलो यार डॉकराइज करते हैं पहले.
ठीक है. So first I've made a file which is docker file. docker file बना लिया मैंने. और एक करना मुझे docker which is ignore file भी करना मुझे. इस पे I will write I'll mention all the which is node models mention कर दूंगा. node models मुझे नहीं चाहिए. उसके बाद one word project बताओ. I will build it and deploy it and show it to you next week maybe. Okay. Easy project you want or tough ones? Or an AI project or else non-AI project? And even the .git I don't want. And even the docker file, which is this one, docker file. And one was this is docker ignore. Ignore. I really like Shopify with tenets, but I guess that's a little bit advanced. Not a little bit advanced, it's too advanced, and it's literally tough to build like that thing. Really, it's very tough to build like that thing. Arey yaar, I've written not the proper spelling, docker file. These are the ignore files. Okay. अभी ना मुझे docker खोलना. I'll just write from non-AI first. I'm just a beginner in React. भाई इसने खुद लिख दिया यार. मैं क्या करूँ. इसने तो खुद लिख दिया पूरा. इसने तो मुझे ना कुछ नहीं चाहिए यार. हटा दे भाई, तो हटा दे. फ्रॉम मैं ना बताता हूँ बस. Node.js 20 चाहिए, वर्जन 20 है. Alpine ले ले तू. Alpine सही रहेगा. एंड वर्क डायरेक्टरी है मेरा. वर्क डायरेक्टरी है ऐप. एंड कॉपी कर ले package.json कॉपी कर ले. फिर कर दे रन pnpm इंस्टॉल कर दे. इंस्टॉल एंड फिर कर दे कॉपी कर ले सारा फोल्डर कुछ. एंड एक्सपोज कर दे 3000 पे. एंड pnpm स्टार्ट कर दे. फिर ख़त्म. सिंपल हो गया. डॉकराइज हो गया प्रॉपर. मैंने और एक बार चेक कर लेता हूँ अपना. लेट मी चेक वन मोर थिंग विच इज दिस वन. ओके. अभी वेट यार. वर्जन कुछ नया आया. डॉकर का वर्जन नया आया. Node.js का नया वर्जन आया. आई विल राइट इट एज Node 22 वर्जन ले ले. Alpine ले ले. और उसके बाद रन कर दे pnpm इंस्टॉल. npm इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा पहले. pnpm. उसके बाद वर्क डायरेक्टरी ऐप हो गया. फिर कॉपी YAML भी कर ले, ये भी कर ले. फिर रन फ्रोजन लॉग फाइल. हाँ बस सही है. फिर कॉपी ऑल दिस कर ले. एक्सपोज भी तो करना बड़ी. एक्सपोज दिस एज 8080. एक्सपोज दिस एज 8080 बैकएंड का वो है. एंड CMD होगा pnpm स्टार्ट. उसके पहले बिल्ड भी तो करना मुझे. रन फर्स्ट npm build then start. ओके प्रॉपर हो गया. ये तो लिख दिया मैंने. ओके. एंड शैल आई राइट वन मोर थिंग विच इज कंपोज फाइल. इग्नोर भी लिख दिया मैंने. आई विल राइट वन मोर विच इज docker compose डॉट YAML YAML. ठीक है. docker compose लिख दे रहा हूँ. फिर इधर लिखते हैं सर्विसेज विच आई एम गोना यूज. सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ. बैकएंड नाम है मेरा सर्विस का. फिर कंटेनर नेम होगा विच इज़ बैकएंड. एंड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट दिस इज़ परफेक्ट. डॉकर पोच लिख लेते हैं. और पोच होगा 80,000 नहीं 8080 पे मैप करते. 8080 पे मैप करते तो प्रॉपर. एंड एनवायरनमेंट होगा ना. एनवायरनमेंट अभी नहीं दे रहा हूँ. env होगा. नहीं env फाइल होगा विच इज़ .env.production फाइल होगा. एंड डिपेंड्स ऑन क्या करें.
डिपेंड्स ऑन, कुछ किस में भी डिपेंड नहीं है, जिस पे भी डिपेंड नहीं है. रिस्टार्ट ऑलवेज करते हैं, रिस्टार्ट ऑलवेज, ख़त्म. एंड उसके बाद वर्कर बना लेते हैं एक. लेट्स मेक एन वर्कर विच अगेन कंटेनर नेम जस्ट वर्कर. ओके, कंटेनर नेम वर्कर कर दिया, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हो गया, बराबर लिखा है इसने, ठीक है. फिर डिपेंड ऑन नहीं लिखना मुझे, बेसिकली रिस्टार्ट ऑलवेज कर दिया. फिर आई राइट एन कमांड ऑल्सो, कमांड भी लिख लेते हैं. कमांड विच विल बी pnpm run start worker, which is this worker is for basically worker किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, this is for bulk MQ के लिए. और else let's not write this, नहीं लिखते अभी तक के लिए, this is enough I think so. Let's give it a ChatGPT, पूछते हैं is this proper, चेक कर लेते हैं. this and this, पता नहीं जो लिखा था मैंने सही लिखा, I know this is proper, but let's still give this. ये भी दे देता है, ये भी दे देता है, इग्नोर वाला भी प्रॉपर. चेक कर लेते हैं. If anything goes wrong, he will make sure it corrects it. There are few things error here. It is. What are your projects? No, I'm using no. Don't use it. Don't use it. Don't use it. No, I'm using PNPM only, buddy. I'm using only PNPM. Based on a project workspace. No. Don't do it. Don't do it. No. No, I'm using PNPM. Not bun. Okay, alpaline. Okay, spelling mistake. Nice. Good. उसके बाद next, which is docker compose ignore, which is proper, ठीक है, spelling wrong. Okay, because of that. And next, which is yes दे देते हैं. He will generate it. He will fix it. कोई दिक्कत ही नहीं, काम ही नहीं करना ज़्यादा. आई थिंक सो लिख दिया इसने लिख दिया, आई थिंक सो. ही हैज़ रिटर्न इट. कीप कर लेते हैं. लिख दिया, हो गया. सो लेट्स डिप्लॉय दिस इन AWS राइट नाउ. तो चलो चलते हैं AWS पे डिप्लॉय करते हैं. लेट्स गो टू AWS. किस में पुश करना है बताओ यार. EC2 में करना है, ECS में करना है, और एल्स किस में करना है बताओ. इन विच हैव टू डू इट. किस में करना है. EC2 में करना है, ECS में करना है, इलास्टिक में करना है, और एल्स Kubernetes में करना है. इन विच हैव टू डू इट. बताओ यार. इन विच हैव टू डू इट. किस पे करना है बताओ चैट. शुड आई डू इट इन EC2 और ECS, और एल्स विच हैव टू डू. चलो यार, नहीं बता रहे हो राइट, ठीक है. मैं ना लॉन्च ही करता हूँ नया, EC2 ही करता हूँ मैं तो सीधा. पहला कदम बैकएंड एंड भाई आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है. बता रहा हूँ यार भाई, ठीक है. बताओ. आई विल बी वेटिंग.
आई थिंक सो EC2 बेस्ट रहेगा, राइट? EC2 बैकएंड के लिए EC2. हम इस लिनक्स क्लिक करते हैं. चलो यार बिल्ड करता हूँ. EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ मैं. आई एम जस्ट गिविंग अ नेम पहला कदम बैकएंड. आई जस्ट गिव इट एज पहला कदम बैकएंड. एंड मैं चूज़ कर रहा हूँ अमेजॉन लिनक्स चूज़ कर रहा हूँ. एंड मुझे चाहिए अमेजॉन लिनक्स लेटेस्ट वर्जन चाहिए. फ्री एलिजिबिलिटी ECS पे करो. ECS पे कर दूँ पक्का? ECS पे कर दूँ? ठीक है चलो. आई स्विच टू ECS. लॉक कर दिया जाए. 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़. क्लस्टर बना लेते हैं. न्यू क्लस्टर. आई नेम इट एज न्यू क्लस्टर. डॉकर क्लस्टर नेम इज पहला कदम बैकएंड. ओके आई एम मेकिंग दस AWS सर्वरलेस बना रहा हूँ मैं. सर्वरलेस बनाऊँ क्या कराऊँ? Should I make it a serverless or else EC2 instance in this itself cluster पे? What shall I do? I'll go with AWS serverless itself. Serverless ही अच्छा रहेगा, I think so. ठीक है. एंड मॉनिटरिंग ऑप्शनल रहेगा. ये तो कुछ नहीं करते हैं. I'll just सर्वर्स बनाओ. ठीक है सीधा मैंने क्रिएट बना दिया. ठीक है क्लस्टर बना दिया. क्रिएटिंग क्लस्टर आ रहा है. मैं भी तो सीख रहा हूँ. आपके सामने तो सीख रहा हूँ मैं भी. क्लस्टर बना दिया. क्लस्टर बन रहा है. ठीक है लेट्स वेट. क्लस्टर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली. व्यू क्लस्टर करता हूँ. लेट्स क्लोज दिस क्लस्टर पे जाते हैं. उसके बाद नाउ आफ्टर क्रिएट एंड टास्क डेफिनेशन बनाना पड़ेगा मुझे. आफ्टर क्रिएट एंड टास्क डेफिनेशन. लेट्स जस्ट क्रिएट एंड टास्क डेफिनेशन. बेसिकली क्रिएट न्यू करते हैं. टास्क डेफिनेशन ये रहा. द राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पैनल दिख रहा है. आपका क्या टाइम है लाइव आने का? 2 to 6 आई थिंक सो. 2 to 6 माई लाइफ टाइम है. मैं ना बेसिक टास्क डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ. आई जस्ट गो टू दिस टास्क डेफिनेशन ईयर. जैसे दिख रहा है आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे दिख रहा है टास्क डेफिनेशन ईयर. सो आई क्लिक इन दिस. आई क्रिएट अ न्यू टास्क डेफिनेशन विच इज डेफिनेट टास्क नहीं है. आई जस्ट क्रिएट अ न्यू टास्क. आई रिमूव दिस वन. बेसिकली इसको रिमूव कर देता हूँ. मैंने पहले भी किया था. सो आई जस्ट रिमूव दिस वन. ना आई जस्ट क्रिएट अ न्यू इटसेल्फ. न्यू टास्क डेफिनेशन. And I'll just name it as पहला कदम बैकएंड टास्क. ठीक है. एंड जस्ट दिस सेम. बस कुछ नहीं करना. क्रिएट पे क्लिक कर देना. कुछ ज़्यादा देखना नहीं है. ओके लेट्स चेक वन मोर टाइम. मशीन यही है. CPU यूसेज यही है. एंड ठीक है 1 CPU है. 1 CPU is enough. एंड मेमोरी इज 3 GB. ओके टास्क रोल क्या है? ACS टास्क एग्जीक्यूशन रोल है बेसिकली. ठीक है फिर आफ्टर दिस ओके देन आई जस्ट गो टू कंटेनर्स. आई विल ऐड एन कंटेनर इमेज URI. आई हैव टू build an URI. okay I will take an URI. I'll take an URI port mapping to 880 है. Container port mapping is 880. Port name ठीक है. WordPress image URI. Let's remove this. Add container. Storage. Add container. Container
specify a name, container image, whether the container should be marked essential or else what. So करने के बाद टास्क डिटेल्स करने के बाद ठीक है, तो ऐड कंटेनर में क्या करना है मुझे? कंटेनर में नेम दे देता हूँ पहला कदम, बैकएंड दे देता हूँ कंटेनर का नेम, ठीक है। इमेज URI देना पड़ेगा मुझे बेसिकली। मेक श्योर मतलब पुश भी नहीं किया मैंने। तो अभी तक पुश ही नहीं किया, URI कैसे आएगा मेरे पास? पुश तो करना पड़ेगा मुझे पुश भी तो करना पड़ेगा। चलो यार पुश करते हैं पहले। आई हैव नॉट पुश एनीथिंग, डॉकर पुश कर लेते हैं इसके पहले तो। डॉकर इमेज बिल्ड कर दिया था मैंने, राइट? बिल्ड नहीं किया था, ठीक है। तो बिल्ड करने के लिए आई जस्ट गो हियर, मैं ना डॉकर पे जाऊँगा। डॉकर पे चलते हैं सीधा। I'll just go to the Docker dashboard. Okay, I'll just open the warp terminal. I'll just do a command which is docker build /-t. My backend name is पहला कदम /latest, I think latest पे build कर लेते हैं, ठीक है। Okay, there's some error. No such docker file. Okay, डॉकर फाइल नहीं दिख रहा तुझे, ठीक है। ओके, डॉकर फाइल है तो सही। पहला कदम हाई। I'll just एक कोड दे देता हूँ। सो बेसिकली I'll just give these codes which is मैं ना एक बार चेक कर लेता हूँ कोड कैसा बड़ा प्रॉपर है, नहीं है प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, AWS पे पुश करते हैं अभी सीधा इसको ना जल्दी से, फिर देखते हैं। सब कुछ काम करना चाहिए प्रॉपर, चेक भी तो करना पड़ेगा मुझे बैकएंड पे सीधा। अल्पाइन सही है, रन npm कर दिया मैंने, pnpm पूरा। वर्क डायरेक्टरी इज दिस एंड दिस इज प्रॉपर। वर्क स्पेस देख लेते हैं, कंपोज वाला सर्विस बैकएंड नेम इज दिस बैकएंड। नो, बैकएंड नेम इज पहला कदम बैकएंड। इमेज नेम इज पहला कदम बैकएंड लेटेस्ट एंड ये तो सही है, अभी सही है। एंड डॉकर इमेज वाला द पार्ट इज नॉट राइट, सो इवन आई विल गिव इट दिस। अच्छा ठीक है, इससे पहले डॉकर फाइल का देख लेता है, नोट फिर से चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर है तो प्रॉपर है, ठीक है। अब ना मुझे कंपोज रन करना सीधा, और इसको ना पहले फिर से चेक कर लेता हूँ मैं कंपोज सही है क्या नहीं है। कंपोज चेक कर लेता हूँ, इवन डॉकर इग्नोर भी चेक कर लेता हूँ मैं, अगर मैंने सही लिखा नहीं लिया, बिकॉज आई हैव रिटन माई डॉकर नोशन वाला डॉकर लिखा है मैंने। सो आई एम जस्ट चेकिंग दैट पार्ट कि सही लिखा नहीं लिखा मैंने। यस, मैंने ऑलमोस्ट सही लिखा था, थोड़ा दिक्कत कर दिया मैंने। नो, आई थिंक सब प्रॉपर है, सिर्फ डॉकर इग्नोर में इशू है मेरा, सिर्फ डॉकर इग्नोर में इशू है। सो लेट्स मेक दिस प्रॉपर। नोड मॉड्यूल्स लिया मैंने, npm डॉग लॉग लिया एंड गिट फाइल, ये भी सही है, आई थिंक सो सब कुछ सही है इसमें भी। सो now the time is to build the docker file really, so hands cross. So I'm gonna build this, so I'm gonna do something which is building this docker docker build। भाई डर लग रहा है, करे ना करे बिल्ड।
करना ही तो पड़ेगा. डॉकर कंपोज बिल्ड करते सीधा. ठीक है, कंपोज बिल्ड. लेट्स सी. हैंड्स क्रॉस. आई एम. देख, दिक्कत दे दिया फिर इसने. डॉकर्स कंपोज अप कर. भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइडर. भाई क्या दिक्कत है ये, क्या दिक्कत है ये. What is this issue? Anyone has any idea how this works? I don't know. I'm just checking up how it works. ठीक है, builds तो आ गया. Docker file. ठीक है, ये भी तो सही है, सब कुछ तो सही चल रहा. Why aren't you using the recently visited? What I visited recently? Which one? कौन सा वाला? Which one, man? Which one? But I've written the proper ना. अरे भाई तू ना थोड़ा सा पागल है क्या, सच्ची बता रहा हूँ. आई एम लिटिल बिट मैड, आई थिंक सो. आई हैव टू रन डॉकर इन द बैकएंड फोल्डर, नॉट इन द एडमिन पैनल फोल्डर. इडियट, यू इडियट. रियली लॉल मैन, लॉल. डॉकर बिल्ड कंपोज अभी रन होगा यार. कंपोज नॉट. अरे अनएबल टू प्रिपेयर. व्हाट द हेल, हाउ इज दिस अप? ओके, docker compose up -t running backend is pulling. Nice. docker run हो रहा है, ठीक है, build हो रहा है. let's hands cross, let's build this perfectly. Which cloud server are you using still in this dev? I'm trying to use ECS. Someone said ECS to use it, Elastic Container Service, which is good, I think so. Or else EC2. Which is best? I don't know which is best, but I am doing it just. Which is best? I'm using AWS. Which service is best in AWS? Or else should I buy an VPS server now itself? I think AWS is something good and easy to use because my front-end app also is deployed there only in Amplify. Even the admin is deployed there. Okay. It's completing. Make it fast, man. Docker, make it fast. Docker, you're really slow. So you don't have a static IP for the server? Yes, man. I don't have any static IP. What is the best way to do it? Just give me a good idea. With the low costing itself. Sagarmo.in. Hello brother. Hello G. Hello brother. Which is the good thing? There's an npm run build error. What is this build error, man? What is this build error? Let's run this build first. pnpm build. वही तो बोला था यार, complete नहीं है पूरा backend है, तुम लोग मानते नहीं हो. pnpm install करा मैंने. pnpm build करा पहले. अरे pnpm run build. अरे ये क्या सीन है? अरे बिल्ड कमांड है ही नहीं ना. कहाँ से बिल्ड होगा भाई? तू तो बिल्ड कमांड लगाया नहीं तूने. तो पहले मुझे ना बिल्ड कमांड लगाना पड़ेगा. I have to add build command first of all, then only I can do it. Build command, I have not added build command. Build command, which is your just do and build command, which is just run. What shall I do?
Okay. Should I not write this build command? I'm removing this build command, by the way. I'm removing this build command, and by the way, what I'm doing is I'll just do an npm start or dev. I'll do a dev or npm start. I'll do npm start. Just I'll do npm start, and by the way, the work must not run, right? Work run नहीं होना चाहिए basically. So I'll just give it as start तो बराबर करेगा, but दिक्कत करेगा ये तो. Should I make an npm start wala program proper? So let's make another script which is for the start. Let's start and node on this proper. Yes. Okay, I have written this properly. So let's do npm start here, and again let's build docker compose up d. Okay. Let's do docker compose, only docker compose. Docker compose, man. Docker compose up, not in detached mode, just do it. Backend pulling, already build, running npm pnpm install frozen log file. Good boy. Okay, there is an error on pnpm build not found. Basically, I have not written, so I have to change this as I have to remove this and just do an pnpm start. That's my mistake again. Just I'll do docker compose build. Okay, let's do it. It's built, by the way. It's done. And docker compose up, if I do, the backend is running perfectly and fine. See, if you can see, the port is running in the 8000, but I need the port in the just give me a second. I'm just hiding the screen because I'm gonna open the env files. So env files is this, and I'm gonna use 880 and production, which is 8000. This is proper 880 and 8000. Okay, nice. So let's hide the screen. Here you can see it again. So I have made it proper. Let's rerun it again. Docker compose up. Docker compose up again. Docker compose up. So it's running properly. The backend is running in this port 880. So backend is running in the 880. So let's check the local 880 port, and let's open this localhost 3000. It's not running, so let's run this also. Friend admin panel, and let's do a login. First of all, let's check harshit@gmail.com and 123 invalid email ID and password. Okay, Harshit Ostwal 1234@gmail.com and 123. This account is not supposed to login. Does not use a login. There is a mistake something, because I have used proper authentic RABC type, so it's showing error here. So let me do one thing, which is let's connect to this production grade database, and I'll change the users. Basically, what I will do is I'll make it as admin role, but admin works, right? Okay, Harshit Oswal is a user, not an admin. Okay, Harshit Oswal is a user. So let's log in with Harshit at gmail.com. Okay, Harshit at gmail.com, and Harshit is a password. Login is successful, I think so. No, login is not successful. Let's check the console if possible. If I check the console and if I check the Docker console, there must be showing an error. The login is successful, by the way. Okay, cool. The login is successful. The API is running. The backend is running properly. So the backend is running. Let's stop the compose and let's build this. Okay, let's build this docker build -t, and let's name it as pehla kadam -backend dot latest here. Let's just do this -t. That's it. pehla kadam
backend or latest dot. It's building. Backend has built. Now I will do is docker tag pehla kadam latest and I'll use the id create and load balancer तो बनाना पड़ेगा राइट मुझे. अरे यार बहुत लंबा स्टेप्स है यार. आई थिंक सो. But it's so much long यार. I'm getting a little bit confused. कैसे डिप्लॉय करते हैं यार AWS पे. दिक्कत है बहुत तो. भाई ECS अच्छा है कौन सा अच्छा है यार. आई डोंट नो मैन. पहले ना AWS लॉगिन तो करना पड़ेगा मुझे. लॉगिन भी नहीं करा मैंने. लॉगिन तो भाई करना पड़ेगा. क्रिएट एन ECR रेपोस्ट्री तो बनाना पड़ेगा मुझे. रेपोस्ट्री तो ऑलरेडी बना दिया मैंने ECR वाला. तो फिर और क्या ये वाला नया इस पे पुश करना मुझे राइट. इस पे पुश करना लेटेस्ट वाले पे. इस पे पुश करना मुझे. समझ गया. एंड इस पे पुश करना है मुझे. बेसिकली टैग इस पे कर दूंगा मैं. तो इस पे टैग कर दिया मैंने. ठीक है. आई एम जस्ट टैगिंग दिस हियर. नो दिस इज़ रॉन्ग. पहला कदम है राइट. पहला कदम है बैकएंड. टैग इस पे कर दिया मैंने. एंड एंटर. नो नाउ account ID is necessary. So account ID docker push account ID which is cluster. Okay, account ID कहाँ से निकालें. Okay, load balancer. Okay. Okay. सब कुछ सही चल रहा है आई थिंक सो. फिर भी इट्स लैगिंग फॉर मी. भाई यस वेंकटेश गुप्ता. वेंकटेश गुप्ता राइट. ओके भाई डॉकर कैसे डिप्लॉय करते हैं भाई. वही तो दिक्कत है. देख रहे हैं. हो जाए यार कैसे भी करके. पता चल जाए मुझे. बट एक बार किया था मैंने. बट ट्राइंग अगेन trying my best which is I have built this docker properly. प्रॉपर बिल्ड तो हो गया. रेपोस्ट्री तो बना दिया मैंने. ठीक है रेपोस्ट्री तो बना दिया. प्राइवेट ही है मेरा. ये रहा. अगर रेपोस्ट्री चाहिए ECR हो गया. ECR पे गया मैं. हाँ सही है वेंकटेश. गॉट इट मैन. ECR गया मैंने ना. ये मिल गया मुझे कि यार रेपोस्ट्री तो मैंने ऑलरेडी बना दी. रेपोस्ट्री प्राइवेट रेपोस्ट्री तो अच्छा नहीं बनाई मैंने. ओ माय गॉड आई हैव टू क्रिएट अ रेपोस्ट्री विच इज़ एन. पहला कदम बनाई नहीं मैंने. भूल गया. शिट यार. पहला कदम बैकएंड है मेरा. म्यूटेबल है एंड इम्यूटेबल नहीं है. म्यूटेबल है. क्रिएट कर देता हूँ सीधा. लेट्स क्रिएट पहला कदम. आई हैव क्रिएटेड इट. मुझे इस पे पुश करना है बेसिकली. ओके आई हैव टू पुश इन दिस. मुझे उससे पहले AWS भी लाना है मुझे. AWS की अकाउंटिंग भी लानी. AWS ECR. AWS है ही नहीं मेरे पास. AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. AWS इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा. AWS इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा. आई डोंट हैव एनी AWS हियर.
So let's do one thing. Let's build an AWS. Let's build AWS here. भाई कौन सा बेस्ट है यार, पता नहीं मुझे. बट विच इज़ बेस्ट गाइज, यू कैन से कौन सा बेस्ट है. ग्रेट थिंग भाई वाई टी कब चलाओ किया था आपने. भाई आई स्टार्टेड वाई टी अराउंड 1 month बिफोर, 1 महीने पहले. 1 month बिफोर आई कैन से. वाई 1 month बिफोर मैन. व्हाट हैपेंड. कुछ अलग हो गया क्या वाई टी पे, मैंने देखा नहीं. आई डेंट सी इट. ओ 2020 सब्सक्राइबर्स. 2020 हो जाए तो बढ़िया. हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. काम करने में 200 व्यूज़ है, ठीक है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है. मज़े करते हैं. आई जस्ट केम फॉर लर्निंग पर्पस, नॉट द व्यूज़ पर्पस. सीखने के लिए आए हैं. सही होगा वो तो पता ही है. 320 व्यूज़ है, 330 व्यूज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई. अच्छा ही तो है. 13 लाइक्स है, बढ़िया ही चल रहा है. सो डिप्लॉय कर भाई. कौन सा अच्छा है. ईसी टू आर बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है भाई. मुझे समझ में नहीं आ रहा. चैट कैन यू जस्ट 1% सेड ई सी आर, बट आप बताओ कौन सा बेस्ट है. विच इज़ बेस्ट. आई एम जस्ट पुशिंग कमांड्स. मैक पे हूँ मैं. एंड डॉकर करना है, पहला कदम बिल्ड करना है, फिर डॉकर टैग भी करना है इसको, एंड इसको भी टैग करना है. ठीक है राइट. मुझे ए डब्ल्यू एस भी इंस्टॉल करना है राइट. ए डब्ल्यू एस सी एल आई भी चाहिए मुझे. ए डब्ल्यू एस सी एल आई भी चाहिए, आके यूज़ होगा तो इंस्टॉल कर लेते. मैंने पहले इंस्टॉल किया था बट डिलीट भी कर दिया मैंने यार. मुझे अच्छा भी नहीं लगा, डिलीट भी कर दिया मैंने. ए डब्ल्यू एस सी एल आई मैक ओ एस. एंड लेट्स गिवन जी आई कमांड और एल्स कमांड लाइन यूज़र इंस्टॉल. हियर इट इज़. इसको कॉपी कर लेता हूँ. और एल्स लेट्स डू एन कर्ल. लेट्स डू दिस. इंस्टॉल दिस पैकेज. डाउनलोड हो रहा है, होने देते हैं. ओके. It's running something. It's running. देखते हैं. Something. It's downloading the packages. Wait करते हैं यार. It's installed. Let's do this package install again. A package install करना पड़ेगा. Sudo installer this one. I'll give the password which is okay. It's installing. Install हो रहा. अपडेटिंग हो रहा, अपग्रेडिंग हो रहा है. ओके, डू इट फास्ट मैन. AWS कॉन्फ़िगर करते हैं. ठीक है, AWS कॉन्फ़िगर क्लिक किया मैंने. अरे यार ये भी तो करना था मुझे. विच AWS. इसके बाद क्या करना था. एक AWS एक्सेस आईडी चाहिए इसको. ओके, आफ्टर टेक एक्सेस आईडी. एक्सेस आईडी कहाँ से मिलेगा. AWS एक्सेस आईडी. एक्सेस आईडी मैन. Okay, where's the access ID? Well, where I'll get access ID? Why I'm confused. On Django React AIML. By the way, I am building a third year BCA. I know JS and Python. I've given time to both languages. Can you tell me what should I do? You have given in time in JavaScript and Python, right? Which one do you like most?
Which one do you like most? Which one do you like most? I think so. Py. Then try to go in Py itself, Python itself. Try to build everything in full stack app in Python, so you will get it. Or else build an own AI data model using the Python language. It's so easy to build, right? By the way. Try Python itself. Python, I think so. You have loving Python, doing Python. Then go with Python. Don't just move into JavaScript again, because you like already Python, right? Okay, let's launch an instance. Okay, let's name it as this. And let's make it as Ubuntu. Okay, Ubuntu and okay. Which one can we take? Linux or else Windows machine? Or else Windows machine? Okay, what is this? AMI? No. Okay, let's move to Windows or else Linux. ओके क्या कर रहे हैं भाई पता नहीं चल रहा. व्हाट कैन वी डू कौन सा चूज़ करना. दिमाग ना बच चुका है घंटी. बेसिकली ना कॉस्टिंग पे भी मैटर करता है पहले तो. बेसिकली कॉस्टिंग मैटर करता है यार. कॉस्टिंग अगर क्लाइंट नहीं दे पाता तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर. कुछ कर भी तो नहीं सकता मैं. कॉस्टिंग भी तो मैटर करता है. फिर मुझे मार ही देंगे ये तो. फिर कॉस्टिंग पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँगा फिर. पैसे नहीं दे रहे तो फिर भाई मेरी तो लग जाएगी फिर. मेरी तो लग ही जाएगी फिर तो. मेरी तो लग ही जाएगी. चलो यार उबंटू चूज़ करते हैं और क्या. उबंटू करते हैं. ओके उबंटू लिनक्स करें. कौन सा करें यार दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा. हम्म भाई लिनक्स लिनक्स करें. कौन सा करें. हाँ उबंटू लिनक्स भाई. लिनक्स कर्नल यूज़ कर रहा हूँ और क्या. लिनक्स उबंटू कहाँ पे है भाई अभी तो. ओके ओके हम नाइस एक्चुअली. आई एम ट्राइज टू क्रैक एंड पेड इंटर्नशिप इन द सेम एंड लिनक्स करो. हाँ लिनक्स ही कर रहा हूँ बेसिकली. लिनक्स फ्री ट्रायल क्लिक कर रहा हूँ. फिर कर्नल क्लिक कर रहा हूँ. Let's give this to ChatGPT. I don't know to how to deploy this ECR, EC2, but I am trying to do it best. A Linux machine is proper. I am taking this T.2. Should I take this free version first of all? I'll take it, and if not possible, I'll take an paid version. फ्री टेल एलिजिबल तो है ही है. फिर क्या और क्या टेंशन. ठीक है फिर ना मैं की पैड सेलेक्ट कर लेता हूँ. Okay, so
बट चैट जीपीटी बोल रहा है यूज Ubuntu. So what to do it? So what to do? ChatGPT says use Ubuntu. You are saying use Linux. What should I use? Just ping me up. What should I use? Say me guys. What should I use? Should I use Ubuntu or else should I use Linux? Should I use Ubuntu or Linux? Should I use Linux or Ubuntu machine? I'm using, so let's go to Linux itself यार. I think so. Linux यूज़ कर रहा हूँ मैं बेसिकली. ठीक है, लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली. फिर हो जाएगा. अच्छा, की पैर बनाना पड़ेगा मुझे नया. क्रिएट ए न्यू की पैर बना लेता हूँ. दिस विल बी एन RSA एनक्रिप्टेड पी कैर विल बी. पहला कदम की रख देते हैं. और क्या, पहला कदम की रख देता हूँ. फाइल फॉर्मेट पेमी होगा. एंड की रख दिया मैंने दिस वन एंड क्रिएट ए न्यू की पैर. This will be and create a new key pair and I'll save it in the websites and pehla kadam, and I'll keep it in the saves in the keys fem folder. Nice, I've done it. So after this I will add a very important, which is SSH traffic will be from anywhere, and HTTP port from the network, which will be an 8080 port, which is true. And HTTP port, HTTPS from the traffic. No, only the HTTP traffic I can say. Or else select an existing group. Or else no. And the GB with 8 is enough, I think so. Free tier can get up to 30 GB. 30 GB means, which is root volume, configure storage. ठीक है, check this one यार. GPT check this one also. If you check this one, okay, I'll just keep it as 8080 port na. Or else my IP I will do it. Should I do it in my IP or else what should I do it? Okay. No, I want HTTPS also, because the set an endpoint for the creating web server also. Let's encrypt later. ठीक है, बाद में कर लेंगे. So set a security groups is around create a security group, which is this something, and click launch instance. That's it, right? Launch instance. This will be one instance. I'm launching it. The instance is launching. So instance is launched. We will instance, and I'll go to this Pelakadam instance. I'll go into this instance ID. The instance is running. The connect, I'll click it. The connect private public ID is this one. So let's go into this public ID. Basically I'll do SSH which will be I, and it's just the Pelakadam. No. After running, I'm gonna use Amazon Linux. ChatGPT is something good, man. I'm coming. Give me a minute. I'll be back.
आ गया मैं भाई, चले गए क्या? नहीं नहीं नहीं, आ गया सॉरी यार। जय हिंद मैन। आ गया मैन, आ गया। ठीक है, ओके। इस पे रखता हूँ मैं। पेम की आईडी हो गया, एंड पब्लिक आई भी। I'll make the public ID pasted here. ना public ID era, public ID era. So कर देते हैं no such file, no. Finder, I'll just paste that public ID here. Public ID ना, जो public ID मैंने लिया था कीज़ में, जो पेम लिया था राइट, बैकएंड पेम कौन सा था, ये वाला ना, ये वाला। तो मैं ना बैकएंड में चलता हूँ सीधा। आई पेस्ट इट हियर, इसको डिलीट कर देता हूँ पैकेज। एंड चलो यार, अभी रन करता हूँ फिर से। कांट एस्टैब्लिश, ठीक है। अदर नेम्स कुछ रन करते हैं। एस एस लिखता हूँ मैं। ओ नहीं, काम नहीं कर रहा। लेट्स कॉपी दिस पब्लिक आईडी अगेन। कनेक्ट यूजिंग प्राइवेट आईडी। ये रहा प्राइवेट आईडी एड्रेस। सेलेक्ट एंड पॉइंट विच इज़ ग्रेटर एंड पॉइंट, ईजी टू यूज सर। इंस्टेंट आईडी रहा PCM। फिर से ना कनेक्ट करता हूँ मैं। प्राइवेट आईडी, ये रहा प्राइवेट आईडी। ओके, कनेक्ट हो रहा है, आई थिंक सो। लेट्स वेट। ओके, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल प्रेमा टू ओपन। भाई कनेक्ट हो जा भाई। वेटिंग फॉर यू मैन। सेशन मैनेजर कनेक्ट। चिट। एक कौन सी है भाई IP एड्रेस चेक करते हैं इसका। IP एड्रेस पता नहीं भाई, अलग ही मजे ले रहा है ये तो। पब्लिक IP, but why it's not running, I don't know, something it's happened. Let's run with public IP. Okay, it's running. Bad permissions. Let's just check what is this. Unprotected something, it's coming. Check karte hain why it's unprotected, man. I don't know, I really don't know why it's unprotected. Okay, क्या सीन है इसका? गुड, वेरी कॉमन इशू। लेट्स फिक्स दिस। ओके, PEM must be readable only by you. Okay, if the permissions are open to come order, I'll do as a mac run terminal as this and try again. I'll just run this and I'll just try again. Okay, let's see again. Let's wait. The youth authentic, it starts shelling, man. Oh, great. My EC2 instance is running, by the way. Nice. My EC2 instance is running. Sudo yum update. Why? Okay, so that's running the update. Okay, nice. Okay, sudo, or else let's go to the instance terminal. Completed, nothing to do. Okay, sudo y install docker. Nice, docker is installing. Success, running the transaction proper. बढ़िया. Service, docker run mode. Oh, it's downloading the docker. Let it do it. ठीक है, चलो यार इंस्टांसेस पे चलते हैं। इंस्टांसेस पे एंड इंस्टांस स्टेट पे चलता हूँ मैं। कनेक्ट पे चलता हूँ। पब्लिक IP पे कनेक्ट कर लेते हैं सीधा। आई एम कनेक्टिंग द पब्लिक IP. So let's close this console ये रहा console. मेरा console ये रहा एंड मुझे सिर्फ करना, एग्जिट कर लेता हूँ इधर से। ठीक है, कनेक्शन क्लोज कर दिया मैंने। मैं ना इधर इंस्टॉल कर लेता हूँ। बेसिकली ls कर लेते हैं। ls नहीं आ रहा, ठीक है। sudo, एंड sudo करना मुझे सर्विस sudo doc service docker
docker start करना, right? Okay, something is happening. Okay, अच्छा, sudo. No, the website is so slow. मैं ना टर्मिनल पे चलता हूँ यार, वेबसाइट बहुत स्लो है, तो मैं टर्मिनल पे कर रहा हूँ बेसिकली, तो वेबसाइट बहुत स्लो है. sudo docker सर्विस docker स्टार्ट कर देता हूँ सर्विस. डॉकर स्टार्ट हो गया आई थिंक सो. डॉकर पीएस करूँगा तो नहीं हो रहा, राइट? सो sudo यूज़र मोड -a-g docker ec2 user. Okay, permission denied. New group docker. sudo हो गया. exit and reconnect. exit and reconnect. exit and reconnect it. Yes. Okay, I've reconnected the server. So I've connected the server. Basically, let's check again. After this, I have to go something I have to do, which is I've updated this. I'll just update sudo. Okay, I'll just run these commands again. Okay, complete and install. Try to install this. Nothing. Docker start कर लेता हूँ एक बार. Docker has started. Redirecting the Docker service. And user mode, I'll make it as this one. Okay, after this I'll make an exit. Okay, I'll just give an Docker version. What are you using for backend? For backend I'm using Node.js, man. Node.js, I'm using Node.js. सो बेसिकली मैं अपने टर्मिनल चलता हूँ, बैकएंड वाले टर्मिनल पे चलता हूँ. बैकएंड सीडी पहला कदम, सीडी बैकएंड चलता हूँ. एंड ना एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ना 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 रन हो जाए बैकएंड बेसिकली. बैकएंड ही रहा पहला कदम, बैकएंड. एट लेटेस्ट भी लिख देता हूँ, लेटेस्ट भी लिख देता हूँ. लेटेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक सो. पहला कदम बैकएंड चलेगा. बिल्ड हो रहा है बैकएंड बेसिकली. ठीक है, बिल्ड हो गया बैकएंड. आफ्टर दिस मैं क्या करूँगा, रन करके देखूँगा एक बार. डॉकर रन हाइफन डिटैच मोड में नहीं चाहिए. अच्छा, डिटैच मोड में कर दे. फिर हाइफन पी. डिटैच मोड में नहीं चाहिए मुझे बेसिकली. पोर्ट इज़ 8080. पहला कदम बैकएंड रन कर दे. ओके, ओथ आईडी इस ठीक है. डॉकर लॉक्स कंटेनर चेक कर लेते हैं. ENV में देना पड़ेगा, राइट? मुझे ENV पूछ रहा है, तो ENV भी देना पड़ेगा मुझे बेसिकली. Or any other service which is that where I can push the backend folder and just run it as npm. I don't want any Docker, man. That's a really tough thing for me right now. I'll learn it afterwards, by the way. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, बेसिकली मैं क्या करूँगा, ठीक है, बेसिकली मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ नोड, विच इज़ समथिंग दिस वन. नोड इंस्टॉल हो रहा है, बढ़िया. मैं ना pnpm यूज़ करता हूँ, pnpm यूज़ करता हूँ मैं. npm इंस्टॉल pnpm globally. npm इंस्टॉल pnpm global इंस्टॉल करते pnpm. sudo इंस्टॉल npm, sudo pn. ओके, npm install -g npm at latest, man.
लेटेस्ट इंस्टॉल करते तो कोई दिक्कत नहीं है. sudo npm install latest and even the node. ठीक है, फिर नो एन पी एम वी करता हूँ मैं एंड पी एन पी एम वी करता हूँ मैं. पी एन पी एम पी चल रहा है बढ़िया. ओके, फिर अभी क्या करना मुझे मुझे ना अभी गिट क्लोन करना विच इज़ माई बैकएंड रेपो. बैकएंड रेपो विच इज़ दिस. ओके, ठीक है. एल एस कमेंट फोन नहीं है. सी डी क्या है भाई. एक्सेट करते हैं सीधा. Bro, I should learn Postgres SQL or a SQL first. Try to learn Postgres itself. Postgres. No. Try to learn SQL. SQL is something good. After that, you can go switch to Postgres. You'll get easily. You can learn it. Try to go to SQL itself. SQL is good. I think so far now. Let it be. I'm getting a little bit confused where to deploy. Let's just close the instance itself. By the way. Instance settings. Yeah, one more person guide. Learning to learn SQL instead of MongoDB. Yes, if you want to learn MongoDB, there's no much to learn in MongoDB. कुछ ज़्यादा नहीं है. There's nothing much to learn in MongoDB. Try to learn this itself, SQL. SQL is something good. After learning SQL, the Postgres will be so easy for you. It'll be like Oppu Chappa. It'll be like lol, this much only. Oh, nice man. Nothing man. SQL is also very easy. Nothing much. It's very very easy. SQL also. How to? Okay, thanks, brother. Oh, thank you, man. How to delete this instance, man? I don't know. I don't know how to this works. How this works? How this works? I don't know, man. Really, this literally. Why this literally? Man, यार क्या है पता नहीं. ये तो कंफर्टेबल चाहिए भाई. मुझे कंफर्टेबल चाहिए. हाँ, ये ठीक है. आई थिंक सो. इंस्टेंस पे जाता हूँ. इंस्टेंस डिलीट करना है मुझे बेसिकली. आई गो टू दिस actions, instance settings, change or shut down behavior, or else modify. How to shut down this? How to shut down this instance? How to remove this instance? There is no option to remove the instance, right? CPU utilization is something. This bits network bytes or security or storage. Okay. Tags. I wanna remove this instance itself. So actions, image templates, or else a monitor, security, a networking, or instance settings, which is this. A change instance type, or else modify instance. That's no option to remove. Let's search.
how to remove AWS instance. Easy to instance, yes. Terminate it, yes. Terminating it. How to terminate it? Choose the instance state. Terminate delete instance. भाई वही तो नहीं था. Instance state. Okay, so easy. I was searching in the actions button, by the way. I don't know, it's so easy to do this. But I'll say the chat GD, but I am already running front and in the amplify, even the admin. Both are running in the amplify, so that's better, I think so. Amplify बढ़िया था. I'll go to ECR repository, which is repositories. Elastic. I'll just delete the repository also, which I've already created it, because that maybe building also ECS, Elastic Container Service. Let's do this also. Okay. Okay, easy to enchant charges per hour, whether you run backend without Docker or the Docker. Okay, the same charges are same, but a node plus PM2. Okay, he's saying backend simple easy to node plus PM2 machine. Do you want the final? No. Say the pricing in INR. How much it will cost per the AWS? How much it will cost? I don't know how much it costs us. So front end it gives an okay. This is an free around 12 months. After this one, which is around this much. So rough example, if your front end gets slow traffic, you might pay 100 or 500 per month. After the hosting, you have a free tire. Okay, that's cool. And if for a backend, easy to instance, 750 hours, it's about 4 to 5 USD dollars per month. Okay, 5 to 4 USD dollar per month. That's okay. In INR, it costed around 400 to 500 rupees, I think so. And monthly, it costs around 1000 to 1200, I think so, mostly. The cost is around front end amplify cost is around 500 rupees, and backend costed around 500 rupees, and domain costed around 1200 rupees. And SSL is free, bandwidth is free, and then it's same, I think so. Let's do it today. Let's do a Docker setup itself today. Right now I'll do it, the Docker setup. So okay, let's do a Docker setup itself. By the way, I don't want any stuff. Let's ask him how much ECS cost us. Let's ask him how much ECS cost us. How much can you say the price difference of ECS and EC2? Which is better? Clearly in INR, so you know. Okay, single node backend, yes. For single node backend, yes. Okay, for run to which was served directly, you SSH in, yes, I do this. A managed server running Docker containers. Two types of this is there's an same pricing, which is EC2, and one is the Fragment auto kills and good for microservices. Real pricing, which is, let's check. Or T2, which is 12. I know this costing, it's around 5k per year, I think so, mostly 5k. 2k per month you have to pay here. And ECS on EC2, I don't want this, I think so. I'll use Fragment. I want a serverless basically. Serverless चले तो अच्छा है. No servers to manage. You per
you pay per second, and CPU RAM are your currently usage. Yes, and this costs around 0.0125 hour per hour. Also, monthly cost around 800 to 1000 rupees. Yes. Oh, which is cheaper and which is good, I think so. EC2 Direct, which is cost around 500 rupees, or else manage no service and scaling plus serverless style. Many containers and solo backend simple. EC2 Direct, which is better. I think so. He's saying EC2 Direct is better and simplest, cheapest. You did already the responses. Swings. Okay. If you want to finish your node decode Docker deploys or else compare, which is easy to use, that's main thing, which is easy to use, that's the main thing. I thought Fragate is easy to use, I think so, which is easiest for the beginners. You literally get a full virtual server, I know, man, just like your own computer but in the cloud. Okay, run your app, you have full control, edit files, restart processes, tools like PM to make it install. Okay, make it simple to keep your live app. Millions of beginners tutorials on Stack Floor. Okay. Oh, ECS is more advanced. ECS in container orchestrator. So you build Docker images, push them into ECR, task definitions, create cluster, manage and handle loader balancers. It's amazing to have multiple containers, microservices, auto scaling, rolling deployments. But for one it's overkill. For beginners, ECS can feel complicated. It forces to learn Docker, ECR, ECS tasks. Okay, super easier needs Docker, or not really, or not ideal. Good for multiple countries, not ideal. Lowest learning curve, it's the same. And your best plan is amplify. And okay, let's move to this itself. Yeah, I have deleted all the stuffs. Start from again. Okay, I'm starting it, or else let's create an new account for the Pelakadam itself. So let's pay bill that itself. What do you say? Let's create a Pelakadam account. So let's pay the bill that itself. So we don't have any cluster in my account because there may be credits free also. So let's do one thing. Let's create an account itself. By the way, let it delete and close. So let's go to logout, sign out, and let's take an credit card or else card details here. Sign in. Let's create an account, by the way. I'll pay the bill. By the way, I'll pay the bill. No issues. But the account will be different, by the way. Okay, create a new AWS account, which will be something this. I'll make a new AWS account which will have code with Harshit. I'll take it, or else official FS software. Root email will be official SS software, and account name will be SS software itself. Verify email address. I'll verify this email address, by the way. Okay, all mails. Okay, I'll just take it as SS software. I'll go to into this. I'll just check my mails, which is all mails. Okay, leave this page and Amazon.no. Oh, that's a code SM 56DR, right? Yes. Verify the code basically. Oh, no reply, which is this. Oh, here it is. Root password, which will be something crazy. Oh my god, not this password, man. Okay, if I type, it's showcasing. Oh bhai sab, to hide karna padega, man. I have to hide this. Okay, I'm generating a password, which will be okay. I have created the account. Continue. uh,
ठीक है. I'll show you the my okay. I have to fill my address also. I'll fill my name. I'll fill India. My address I can't show it, by the way. So I'm filling the billing details. So please wait for a few minutes. India and okay. Okay, I have created my address. So I've added my number. Here is my credit card date. Okay, I have to create my credit card details. Oh my god. Okay, I'll give my credit card details, by the way. 1 minute. I don't have any credit card, by the way. I have the rupee cards. I'll just switch to this and generate the rupee card. Okay. I'll just generate my rupee card. Okay. Card number is this one. Oh, this is the card number. Okay, got it. But okay, chat, are you there really? People are there or not? I think so. Your people have gone, right? Why? Why you have left me? Not automatic payments I need, and $1 as per verify equivalent currency as pending a transaction for to verify 3 to 5 days identity. Okay, I have to verify the payment. Okay, I have to verify the payment right now. Yes. It's should I? Adding my credits, credit idea. Okay. Okay. Got it. But why this is not working? I've now okay. I'm in the payment section. Okay, payment section. Okay, payment section is done. Oh my god. Yes. Okay. Okay. Yes, done. In the payment section. Okay, waiting it. Okay. हो जाए भाई, हो जा पेमेंट हो जा. अरे हो जाना पेमेंट भाई. लो हो गया, पेमेंट हो गया. पेमेंट इज ऑल्सो डन. बट सक्सेस तो दिखा दिया, बट रीडायरेक्ट हो रहा है. इट्स रीडायरेक्टिंग द पेमेंट पेज. वेट. ओके. ओके नाइस. ओके, पेमेंट पेज पे हो गया. डन. रिफ्रेश भी हो गया. आई एम फिलिंग नेक्स्ट डिटेल्स विच इज दीज डिटेल्स. Alright, saying I have to wait for 3 to 5 days for the verification identity.
ठीक है, I'll wait it. No issues, I'll wait it. वेट तो करना ही पड़ेगा. ओके ठीक है, सब बढ़िया. ये तो बढ़िया हो गया फिर. नाइस. ओके, let's, you can see my screen now. You guys can see now. I have done all the process, so let's do this afterwards because I'll do it off screen because I have to set up all the things. तो तब तक काम करते हैं सीधा, और क्या कर सकते हैं. Let's do work again. I'll start the work. I'll start the work again. I'll just run this. I'll just run this and रन करते हैं. बैकएंड भी रन कर लेता हूँ एक बार. pm dev हो गया, ठीक है. okay, running, backend is running, front end also is running, and let's log in first of all. gmail.com 123 it's let's fix this first of all. Let's fix this. एक कुछ गड़बड़ है यार, फिक्स करना है ऐसे मुझे. I have to fix this also. Okay, let's fix this login page by the way. This is backend. Okay, let's keep this here. मैं ना login पे जाता हूँ. ये login ही है, ठीक है. So I have to remove this one. Login failed क्यों आ रहा है, but login successful है, right? Okay, the issue is I'm not using this const. There is no const here. Const, I have to set it here. Const is user, or no, user set, or set user. Const state is null, and I'll use the state variable here, and this is a use line component. And if I do login again, there's one more issue here. There is then this issue which is rendering SSR image component issue with it here. Issue is here. If I do one thing which is if I use this itself, let's say this SSR issue, let's mention it here. He will do it. Let's do other work which is let's check the process, login process again. gmail.com at on 123. If I enter login successful but login error, why? Login successful but login error, there is some issue here again. Let's check again. Theme mounted. Okay, ठीक है. Okay, I've done this. He has done this task. So basically after doing this, let's check. Okay, login failed but error it showed, right? So let's do it. Login again at gmail.com 1313. This suppose has not to login. Why? I can login, right? Harshit, right? I have made it as 123.1. Login successful but error. Why? Login successful but error. I'm not seeing any console error. So let's see login error showing. So let's log this error first of all. Log error कहाँ दिक्कत आ रहा है. सेट यूज़र तो हो रहा है. सेट यूज़र, फिर क्या दिक्कत तुझे? राउटर रिप्लेस भी कर रहा है. राउटर लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है, फिर राउटर इज़ नॉट वर्किंग. Okay, router is not const router is not working. Router is not there. Then how it will work? Now it will work, I think so. Basically now it will work. There were some tags missing, library missing, calling it. It shows not found user. So let's go to Harshit at gmail.com. 123. Login successful and it's redirected perfectly. 2 responses receiving. 2 responses. By the way, what 2 responses? Hydration error again. Man, this is so silly fucked. So let's do this mounted again. It's from sidebar. Okay. Or else what I'll do is I'll just make it as a default SSR. So it'll manage all the stuffs. Okay. Now I'll go to this query provider also, or else a theme provider. I'll make this here, call it here.
use effect, I'll call it here, basically mounted, so it runs everywhere, whole, or else let's call this theme provider में भी हो जाएगा, right? तो एक काम एक साथ हो जाएगा ना. Oh, it'll make us simple work. Let's do it here. Is the hydration error in dev ignorable? Ha, ignorable, but in the dev, let's do one thing. But there's an issue here. Let's run this dev again. Let's stop this and pm build and pm start. So it'll build and start. But there is an logging issue, no? If I do an request, it arrives at 2 users, by the way. Let's fix this also. There is an error, see. Hooks. These many warnings. Oh my god. I know. I can't run this also. Man. These many errors. Oh my. Let's do in this dev itself. First of all, I can't. Let's check the refresh also. But this is also an issue. When I reload, it pops up. By default, it must not be here. I have to fix this also. When I refresh, it's coming. Okay. App sidebar. Okay. Oh. App sidebar, which is this user. This user comes in themes. I'll not use these themes. I'll go to login. I'll just copy this one and paste it out here again, and just copy this mounted variables here, theme and this theme, and paste it out here. Themes here. I'll just import. I don't want this. I'll just import the state variable. State, and this is already in use client, and I'll just import this also. Use theme is already imported. Use effect. Yes, use effect. Use effect is also imported. So, okay, this mounting issues still occurred. Okay, it takes time, but it's not visible, right? It should not be visible. State, which will default first, it should be hidden, right? Hidden. So there must be something here. There's some state here. Just join the stream. What's the use of set mount for the SSR, man? For the rendering, because basically what happens, the issue is when I change the logo according to the theme, when I change it, when I refresh, there is an issue occurred here, SSR issue, server side rendering. So I use mounted basically. If the mounted is true, then it's render the logo part. So that's I'm using mounted. So you can see there is no logo visible. After rendering all these stuffs, it's visible. That's the main useful. So I can use SSR package also. SSR doesn't package also here. There's an SSR package. Oh, where it is? Oh, no. I forgot the name, but there's an SSR package also for the Next.js. Okay. Watch these. It should not be visible. So default, I'll set the state as false, right? So what you say? Use sidebar. Open sheet. State must be default as false. Collapsed. No. Make it as this. Okay. No, not works. Don't works. This is a sidebar main state. I'm new to this Next, but why can't make the whole nav as a client side? And then what is all the issue? But you see, already the page is in client side. Basically, if you see the client side is in client side. Basically, if I remove this, there'll be no issues.
but there'll be a server-side rendering error popping up if I show you. If I go to the author login, see, wait, I'll just remove this mounted also. Let me remove it. See, there's basically an issue here. It shows an server-side rendering didn't match the client. Got the point? Because there's some hydration failed here. If I run in the build also, it'll pop an error itself because there's an hydration error, because I'm using an element here, theme, because the theme renders after the application loads. So this is an issue because I've made a condition here. If I wouldn't made a condition here, it would automatically run this. If I not make a condition, so it doesn't pop up as the error, hydration error. So basically, if I use this condition here, like ternary operator, so it shows an error. By the way, that's the issue. Nothing much. So that's why I'm using mount. So I think so. Basically, let's shift in light mode itself. I don't want any dark mode themes and all. So let's shift into this itself. I don't want this. Let it be itself. This itself. I don't want any other stuff to be in light mode. So I want to handle these gaps, not these gaps. If I log in again, Harshit at gmail.com and Harshit, it should log in. Oh, the password is incorrect, which I've made it. .com and 123. The login is successful. And now the issue is when I refresh, there is an pop-up here. So I have to fix this. Got it. So that it can't handle the DOM changes. Yes, that's why. Yeah, correct, man. You got the point. That's the issue which I was using mounted true. So I'll just change here itself. Also, I'll use dark mode while light mode itself because I like light mode for this website. I'll just remove this, and use theme is not needed right now here. Even these are not needed. I'll just remove these packages, and I'll remove these packages, which is next theme. I'll just go to this another cd pehla kadam, and I'll just go to the admin panel and just remove next themes. I'll just remove this package. I don't want this package anymore. Whereas I'm using X packages again on this, maybe here it is, and I don't want any of this use thing and all. So now in the login page, I'm going to manage these validations in this separate file, which will be in the schema folder. So let me write the schema here, by the way. So schema will be login schema. This is the login schema which I have written here. I'm exporting this, and I've already written here. So let's do one thing. Let's make a mutation part here. Let's do one thing. Let's make a mutation. I'm using tanstack query, right? So I'll go to a lib folder. I'll write an API for all these stuffs. I'm going to mention all the APIs here basically. So let's export one API, which is export const login. Async, it will be async. No, man. Let's do one thing. Let's say GPT itself, it will prepare. Or else let me see an example. I've shown an example for the production grade. I don't know so much production grade, so I'm just seeing the examples that helps me to write the code properly, to managing the code. Where the repo is. Here is the repo, which I've got today only. So this is an API file which here I've made it. What's tanstack query? Sorry for the newbie questions. So tanstack query handles so much stuff. It makes you easy basically. It's an open source library for the developers only. So tanstack query I'm using is for managing the states. Managing the state variables basically. Nothing else bigger. And it has a table. It has so many features like pagination and filtration process, sorting process. Make easy. So if you want to see process, I'll show the process which I've made here. How it helps making easy. So if I go here, I'm not using it. भाई DSA में sorting code करना जरूरी है, फिर sorting के बारे में जान लो प्लीज़ बता दो. DSA में sorting ज़रूरी है भाई. Sorting is very much needed. Yaar. That's the main thing. Sorting bit much stuff. Sorting is necessary, man. You have to learn it. Without sorting,
man. You should learn it, man. Sort of. Okay, let's wait. I don't. Where is the issue occurring here? I'm not using any next themes here. I'm not using any next theme. Then why? That's error. Okay, I'm using a theme provider. भाई क्विक मर्ज कर ले भाई कि तू सब पपलू है. Okay. And what should I do? Which is I've written a provider here, theme provider. I should remove this. And layout में भी मैंने theme provider रखा था, उसको भी remove कर लेता हूँ. ये रहा theme provider, नहीं चाहिए मुझे because मैं यूज़ ही नहीं कर रहा अभी तो theme provider. लाइट थीम में रहना है मुझे तो. ठीक है, अभी तो चलना चाहिए भाई. अभी भी नहीं चला तो भाई तो सोनर में भी है थीम. अरे यार सोनर में क्यों लग रहा है तो थीम? सोनर में लगाया नहीं मैंने तो थीम. ये रहा थीम. कैसे लग गया ऑटोमेटिक? थीम कैसे लग गया भाई? तो हाउ द थीम अकर्ड? ओके, सब में थीम लग गया. ओ माय गॉड, ओ माय शिट फक. अरे यार नहीं होना चाहिए था. सब में थीम कैसे लग गया? मैंने लगाया नहीं थीम सब पे. हाउ इज दिस पॉसिबल? ही सेड थीम इज देयर. Oh, next theme is there in sidebar, app sidebar, but I have removed already. App sidebar theme is there already. Oh, where the theme is there? Okay, the key theme is there. Okay, man. Okay, runs. So basically, if I show the user panel, see, this is the thing which I'm using tank stack query, man. It makes easy for me. So searching is easy for me, by the way. वो prompt कर रहा होगा तो उसमें आ गया होगा. तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ. देखो यार, easily पेजिनेशन हो जाता है मेरे लिए. पेजिनेशन हो जाता है एंड सॉर्टिंग के लिए भी हो जाता है, बाय द वे सॉर्टिंग के लिए भी. सो इट्स ईजी टैन स्टॉक क्वेरी यूज़ करने के लिए ना. बार बार कैशिंग हो जाता है डेटा बेसिकली ना. जो डेटा इधर लोड हो रहा है राइट, ये बार बार कैश कर लेता है. सो इट डजंट हार्म द डेटाबेस. मतलब अनयूज्ड डेटा, मतलब अगर डेटा नहीं है तो लेता है, बट अगर डेटा ऑलरेडी सेम है तो फिर कैश ही कर लेता है डेटा. दैट्स द यूसेज मेनली. एंड ईजिली हो जाता है मैनेजेबल. सो मैंने जब मैं यूज़र का कोड लिखा था, जस्ट आई हैव रिटन दिस कोड, दिस मच लाइन्स, दैट्स इट. तो इतने में हो गया था मेरा. ये रहा जस्ट मेकिंग एन फेच कॉल रिक्वेस्ट. नाउ आई एम गोना चेंज दिस ऑल्सो. सो पेज में हाँ करेक्ट. सो दैट्स मेक्स ईजी. बट बहुत सारे इस पे टेबल भी है. आई एम यूजिंग टेबल, बाय द वे टेबल यूज़ कर रहा हूँ इसमें. आई एम यूजिंग टैन स्टैक क्वेरी, आई एम यूजिंग टैन स्टैक क्वेरी टेबल, बोथ आई एम यूजिंग दिस बोथ. सो बहुत कुछ है यार इसमें. Easy, but it's so easy to use. So let's me export this as a mutation. Oh, this is a new feature by GitHub. Oh my god, this was not that earlier. Okay, let's resolve this. I'm gonna make it as okay. He's making like this, exporting as const login mutation and भाई अगर डेटा ज़्यादा हो तो कुछ दिक्कत होगा. लाइक 200-300. अरे 200-300 नहीं, वैसे पता कैसे होगा इस पर. लाइक जब मैं बैकएंड लिख रहा था, आई हैव इन बैकएंड साइड आई हैव रिटन लाइक दिस कि एट अ टाइम यू कैन लोड, इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट अराउंड 10. इफ आई क्लिक दिस न्यू पेज, नेक्स्ट पेज, इट विल लोड नेक्स्ट 10. इफ आई क्लिक अगेन दिस नेक्स्ट, इट विल लोड नेक्स्ट 10. सो इट्स लाइक दिस. इस तरह सॉर्ट होता है ये क्वेरी. इस तरह ही लेता है ये टैन स्टैक क्वेरी. इट्स लाइक पेजिनेटेड, इसलिए तो बोला पेजिनेटेड डेटा आता है इस पर. ओके, दिस इज द यूजर डिटेल्स. बट फास्ट है, सो फास्ट है. इट्स रियली सो फास्ट. Login mutation, and this is an async call and this will be an async call. फिर देख लेते हैं भाई कोड. async कॉल होगा, डेटा तो आएगा ही उससे. एंड और ऑल्सो बैकएंड में पेजेस. हाँ राउट, हाँ करेक्ट सिंपल. वो बार बार वो भी है ना, ऑब्जर्वेशन, इंसर्शन ऑब्जर्वेशन. वो जब स्क्रॉल करते करते डेटा आ जाता है, जैसे ट्विटर में काम करता है, दैट ऑल्सो इट हैंडल्स ईजिली. So I am making an should I do this? I've already made the API Axios request. So let's do this response. I'll just take this and await API
post request which will be admin data, and should I write all these stuffs here? Just return rest.data, so it will handle already there. rest.data return कर, ठीक है, उसमें डेटा मेरा, एंड ठीक है एक्सपोर्ट कर दिया मैंने. रजिस्टर के लिए भी नहीं करना है मुझे बेसिकली, तो ठीक है, ये हो गया पार्ट. सो अब मैं क्या करूँगा, जो फंक्शन इधर लिखा मैंने, सो आई रिमूव दिस फंक्शन, आई राइट इट एज आई जस्ट राइट इट एज login mutation. Just I'll just make it as login mutation, it will work, that's it. इतना ही है बस. Okay, loading user. Okay, that's an 400 status. Okay, let's log again, which will be auth user login. Login page again is search and use theme. Bro, I'm not using really theme. You're really making me so. So I tried pagination. So what I did is manually calculated the pages and returned 10 into 1 into 3 as a manually page 1 2 3, which tan stack कर ले buddy. Tan stack which it'll make you easier. Tan stack literally make you easier. Try using Shatchain also. Shatchain के साथ तेरा तो easy हो जाएगा काम बहुत. Try tan stack तो easy करेगा, but Shatchain का तो easy भी हो जाएगा. UI भी सही आ जाएगा, UI भी सही दिख जाएगा, फिर साथ में सब भी सही हो जाएगा भाई. वो next फोल्डर डिलीट कर दे. शायद कैश होगा थीम वाला. .next थीम में क्या होता है पता है? .next थीम में चेक कर लेना. .next पे इट्स एन बिल्ड. हाँ कैश होगा यार, सही बोला. डिलीट ही कर देते हैं पहले तो. नोड मॉडल्स भी डिलीट कर देता हूँ मैं बेसिकली, सारा क्लियर ही कर लेता हूँ एक बार, झंझट ना आए बार बार. pm लॉग भी डिलीट कर देते हैं, YAML. ओके, आई हैव डिलीटेड दिस. And let's rebuild this. npm install and pnpm dev, that's it. You guys use Coroflex, you use pnpm or else npm? Which you use? Which one do you use? pnpm is literally fast, man. Should I use bun, guys? Should I use bun rather than pnpm? देख यार फिर से दे रहा है npm. Nice man, but try to use pnpm. It gives so flexibility. It's literally faster than npm. Okay, I'm using it here again. भाई अभी तो क्लियर किया था सारा मैंने. This is so bad. If I do again harshitjain.ml.com 123 login successful, it's working. The mutation is working completely. Good. Crazy. Mutation work कर रहा है. अबे how is this possible? I have changed it already. How is this possible? Oh my god. If you scroll this, go behind the stream, you can see I've changed all the datas, right? I've removed these and all. I've added the login mutation. How this, man? I've added the query also. This is something okay, कुछ और ही चल रहा, अलग ही चल रहा. Query लिखते हैं. Query client is this. Query client ऑटो सेव नहीं रखा क्या? अरे सेव, सब कुछ सेव बड़ी, पता नहीं. I really don't know. I've already written this const. I'll just make it as use mutation. How is this possible? I don't know. Mutation, which is okay. I have to import this mutation. It's not working. Import mutation, yes here. Even this login imported. Auto save तो कर दिया था मैंने already. Okay, let's just ठीक है.
ओके, म्यूटेशन फंक्शन दे देता हूँ। भाई म्यूटेशन काम ही नहीं कर रहा। व्हाट द हेल, mutation is not working by the way. Mutation success, on error, show this message. That's it. If I mutate async mutate, but this mutation is not working. Tanstack queries are installed or not, by the way. Let's check it. इसलिए होगा, install नहीं हुआ होगा. Let's do an install by the way. npm install this Tanstack query. What? No fingerprint, man. I don't want any fingerprint to use. Why is this happening? Should I delete this pem? चलो भाई, मैं जा रहा. Thanks for the reply. Subscribed. I will come back for the stream. Thank you so much, man. Bye bye. See you. Tata. Thank you so much, by the way. Okay, pnpm dev. Let's do it again. Okay. Okay. So if I go to this client and src and client src, let's go to src and पेज पे चलते हैं, ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं, सीधा साइन इन टीएक्सएस पे चलते हैं. सो इसने क्या लिया, सीधा लॉक इन म्यूटेशन लिया. मैंने ऐसे ही किया सिर्फ, तो ऐसे तो किया था मैंने भी ऐसे तो किया था. ऑन सबमिट तो मैंने भी ऐसे ही तो किया था. बेसिकली म्यूटेट लिया था मैंने, म्यूटेट कर दिया मैंने सिंपल. अरे यार, समथिंग चूतिया बना रहा मुझे ये तो, बहुत चूतिया बना रहा भाई ये तो. भाई इतना तो नहीं बनाना चाहिए भाई, म्यूटेशन काम ही नहीं कर रहा. आई थिंक सो आई हैव टू इंस्टॉल Tanstack क्वेरी अगेन. Tanstack ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, बिकॉज ऑफ द बिल्ड डिलीट करने वक्त कुछ गड़बड़ हुआ होगा. ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं Tanstack क्वेरी. और रीड द डॉक्स मैन. ओके, इंस्टॉलेशन पे चलते हैं सीधा. लेट्स इंस्टॉल दिस एंड ऑल. बैश पे इंस्टॉल करना है, ठीक है. लेट्स इंस्टॉल दिस. ये क्या बोल रहा है, रीड द रिसीव द ट्रू वैल्यू नॉन बुलियन सेट. ये कहाँ से आ रहा है वैल्यूज़, मैंने यूज़ ही नहीं कहा कहीं तो. भाई एक ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं. इफ़ यू वांट टू राइट टू, नो आई नेवर चेंज्ड एनीथिंग. लेट मी सी व्हाट आई हैव चेंज्ड बाय द वे. कंपोनेंट globals, ठीक है. फोन्स आइकन्स, लॉगिन प्रोवाइडर, query provider, which is this one, and this is the API. Use me is an hook, by the way. I've written this hook, by the way. Then use mobile, menu items, theorems, tooltip, text, ticket. I don't know what the hell is happening here, by the way. Deleted. Okay, it's error updated. Okay, let's install these. pnpm install this, add this. pnpm added already, so nice. So install, add these also. Basically already updated, this is already updated, nice. Then why it's not working, then why are you not working, man? Okay, let's run again pnpm dev. Okay, I've done the pnpm dev. 1 minute. I'm switching it here. ठीक है. Should I keep it that side? 1 minute, please. Okay, keep that side itself. That will be better.
Okay. Is there any noise coming out here? Let me check it up. Okay, 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 okay. और बताओ कैसे हो सब लोग? Chat. How are you guys? How are you guys, man? Oh, how are you guys, by the way? I'm not asking. I was doing just my work. How are you guys? How are you guys, by the way? How are you? Shall we play a game, by the way? You can say. Shall we play a game? बहुत टाइम हो चुका है, 4 घंटे हो चुके हैं स्ट्रीम होके. सो शैल वी प्ले अ गेम इफ़ यू से, और लेट्स प्ले अ गेम इफ़ यू से. व्हाट यू से? शुड आई प्ले अ गेम? इफ़ यू चैट यस, लेट्स डू इट मैन. म्यूटेट. भाई बहन, भाई गुस्सा दिला रहा है तो अभी तू अभी गुस्सा दिला रहा है. ठीक है, एसिंक म्यूटेट चाहिए मुझे. एसिंक मैं ना वी एस कोड बंद कर दे रहा हूँ, फिर से खोलता हूँ. इट्स मेकिंग सो मच मेंटल इफेक्ट फॉर मी. कॉन्स्ट भाई म्यूटेड आना चाहिए यार उधर. एसिंक म्यूटेड, हाउ इज दिस पॉसिबल? एसिंक म्यूटेशन हो गया, ठीक है. तो इधर तो दिखाना चाहिए एसिंक. अभी दिखा रहा है म्यूटेड एसिंक. इतनी देर तो नहीं दिखाया था. इंपोर्ट सही तो किया था मैंने. दिस इज सो मच बैड. म्यूटेड एसिंक फंक्शन लिया था इसने, कॉल किया. तो ये भी चेक कर लेता हूँ मैं बेसिकली. डोंट सेव दिस, क्लोज दिस, एंड लेट्स गो टू दिस हिज फोल्ड, हिज कोड, एंड लेट्स जस्ट चेक इट अप हियर. इसने क्या लिखा? इसने लिखा म्यूटेटिंग इज पेंडिंग, सिर्फ लिखा था. ठीक है, इस पेंडिंग मैं भी लिख लेता हूँ. ये ले भाई तू पकड़. मैंने भी लिख दिया. इस लॉगिन म्यूटेशन लिख दिया इधर. लॉगिन म्यूटेशन फंक्शन. ठीक है, लॉगिन म्यूटेशन फंक्शन लिख देते हैं. फंक्शन. चलो यार, तू लिखा जैसे मैं भी लिख रहा हूँ. सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ, तू भी सीख रहा है. नहीं, आई थिंक सो तूने सीख लिया. म्यूटेशन फंक्शन लिख दिया मैंने. फिर क्या करते हैं? फिर इसने किया क्या? इसने कुछ नहीं किया. इसने सिर्फ पेंडिंग स्टेट ली और ए बी स्टेट लिया इसने. ओके, मैं क्या करूँगा? ऑन सबमिट पेंडिंग, ऑन सबमिट ले लूँगा. फिर से ऑन सबमिट ही ले लेते हैं. ठीक है, ऑन सबमिट पे मुझे ना म्यूट एसिंग चाहिए बेसिकली. ओके, और आज क्या बना रहे हो भाई? वही बना रहा हूँ मैं तो, जैसे बना रहा था पहले. वही चलो भाई. ओ भैया वही चालू है. दिमाग ख़राब कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा. दिमाग ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा भाई ये तो मुझे मेरा. ओके भाई, 12 दिन के बाद आए. हाँ यार, 12 दिन के बाद आया तब. बट 12 दिन हो चुके सच्ची. लास्ट स्ट्रीम कब की थी मैंने? रुक मैं भी चेक करता हूँ. लास्ट स्ट्रीम कब चेक करी थी मैंने? लास्ट स्ट्रीम करी थी मैंने 12 दिन पहले. सही बोला यार तूने तो. 12 लास्ट 1 आवर. आज से लेके 12 घंटे, 1 घंटा हुआ. 12 दिन 1 घंटा. अरे भाई साहब, इतने दिन बाद आया यार. मैंने सोचा था 10 दिन हो चुके हैं. बट कोई नहीं भाई, आ तो गया. अब तो रेगुलर स्ट्रीम करूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं. बस कैमरा ऑन नहीं कर सकता, वही तो एक दिक्कत है मेन. आते वही पूछते हैं कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ है. मैं क्या बोलूँ, कैमरा कहाँ है अभी? ओ भाई. ओके, इस पर लिख दिया मैंने. अब म्यूटेड एसिंग कर लेते हैं अभी सीधा. म्यूटेड एसिंग ऐड दिस. मैं ना सीधा इसको बोल देता हूँ राउटर लेवल. राउटर तो चाहिए. क्या हुआ? कैमरा को कुछ नहीं हुआ मेरा भाई. मेरा बाल उड़ गया यार. मेरा बाल उड़ा दिया किसी ने.
सर गंजा करवा दिया यार किसी ने, एक लड़के ने मेरा सर गंजा हो गया भाई मेरा, मैं क्या करूं अभी। भाई इसलिए तो कैमरा ऑन नहीं कर रहा है। आते भाई स्टीम आते ही बंदे ऐसे बोल रहे, 12 दिन के बाद स्टीम आया, बंदे ऐसे बोल रहे कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा ऑन करो। मैंने 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन किया भाई, मुझे भाई बंदे हंस रहे हैं, मैंने बोला भाई मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। ऐसे हंस रहे हो तो मैं नहीं कर रहा। च्युइंग गम चिपकाया क्या किसी ने? नहीं ना, क्या हुआ? अरे च्युइंग गम नहीं भाई, सर गंजा कर दिया यार मेरा, भाई मैंने सर गंजा करवा दिया। भाई बाहर बारिश आ रही है, मे बी करंट जा सकता है अभी, ठीक है, मे बी स्ट्रीम बंद हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स हेविली रेनिंग आउटसाइड। भाई ज़ोर से बरस रहा बारिश, स्ट्रीम बंद भी हो सकता है, सो ओके। भाई तू इधर से क्यों ले रहा है तू टोकन, ये समझा मुझे। मेरा भी ऐसे ही जा रहा है, मैं भी ऐसे ही जा ही रहा हूँ। मैं नहीं हंसूँगा, नहीं भाई, सब लोग हंस चुके हैं ऑलरेडी, लोग हंस चुके हैं बड़ी। गंदा दिख रहा हूँ यार, इसलिए इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा अभी, है ना। चैट जीपीटी से बात करूँगा अभी पूरा, अभी मैं चैट जीपीटी करने वाला, मुझे पता नहीं टांस स्टैक वेरी को प्रोडक्शन गेट कैसे लाएं, हाउ टू मेक, किधर से आप। मैं चेन्नई से, बड़ी चेन्नई, आई एम फ्रॉम चेन्नई, टोली born and brought up in Chennai. Chennai Express. Let's on the train, baby. Chennai Express. चेन्नई भाई, चेन्नई सुपर किंग्स बेकार है। हिंदी अच्छा बोलते हो फिर भाई, हिंदी तो मम्मी मैं जैन हूँ तो जैन वाले को भाई हिंदी आती होगी, मारवाड़ी। I'm a Rajasthani boy. I'm a Rajasthani boy. राजस्थानी बच्चे को तो हिंदी आती ही आती है। इतना हिंदी अच्छा बोलते हैं भाई, आगरे वाले बंदा सोचे तमिल वाले लड़के भाई हिंदी बोल रहे अच्छा। मैं ना यूज़ करता, ही मैं भी मारवाड़ी फ्रॉम अदर स्टेट। ओह रियली, नाइस नाइस मैन, नाइस टू मीट यू बाय द वे। हाउ टू make an proper production grade login method using tan stack query on split, because this is an admin dashboard. So after after so after this login, tell me how to tell me should I write auth context or not, basically, because the backend I am sending as cookies JWT token, ठीक है। एक बोल देगा कैसे करते प्रोडक्शन बिल्ड, ऐसे ही सीखते हैं भाई प्रोडक्शन बिल्ड कैसे करना। रिसर्च 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 आता तो है कैसे करना, बट देखना पड़ेगा प्रोडक्शन में कैसे करते हैं लोग। इसने एक हुक बना लिया है इसको। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक इनवॉइस जनरेटर जो यूज़र का फॉर्म भरे, बोले और उसका पीडीएफ निकाल सके और डायरेक्ट मेल कर सके क्लाइंट को, फ्रीलांसर्स। ऐसा बना कि आइडिया तो ज़बरदस्त है, ऐसा बना कि उधर से जनरेट कर जाए, मतलब उधर से पीडीएफ जनरेट कर ले, उधर से मेल भी चला जाए उस बंदे को, यूजिंग द प्रॉपर मेलिंग।
समझ रहा है, एक्सेसिंग देयर जीमेल, उनका जीमेल एक्सेस कर ले. तो आफ्टर एक्सेसिंग द जीमेल ट्राई टू सेंड मेल यूजिंग द एमसीपी सर्वर. पर पीडीएफ कैसे जनरेट करो? देयर आर सो मेनी लाइब्रेरीज मैन, बहुत सारे लाइब्रेरीज है. ए रे, और रिएक्ट पीडीएफ ट्राई कर ले, और रिएक्ट पीडीएफ ये रहा, रिएक्ट पीडीएफ ट्राई कर ले जनरेट करने के लिए. दिस इज समथिंग गुड, ट्राई दिस. इनवॉइस जनरेट हो जाएगा इससे, स्टाइलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. ट्राई रिएक्ट पीडीएफ. बहुत सारे यार ऐसे तो, बट रिएक्ट पीडीएफ अच्छा है अभी तक तो इनवॉइसिंग के लिए सब कुछ. ट्राई दिस आउट. मैंने भी ऐसे यही यूज़ करा था इसके लिए, लाइक पेमेंट, आफ्टर द पेमेंट फॉर द इनवॉइस जनरेशन. ये अच्छा है. ट्राई यूजिंग दिस रिएक्ट पीडीएफ. पर अच्छा भाई, प्रोजेक्ट तो बढ़िया तेरा. म्यूटेड एसिंग करे तो अच्छा है क्या इस पर? ऑथ कॉन्टेक्स्ट ले रहा है बाय द वे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को ले रहा है, ऑथ मी पे ले रहा. ठीक है, तो बेसिकली शुड आई ऐड दीज फंक्शन, दिस यूज लॉगआउट हुक भी है इसका. तो भाई कुत्ते, मैं ना सीधा ऑथ कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल दूंगा. तो भाई कैन आई ऐड दीज ऑल लॉगिन, लॉगआउट, refresh token in the auth context itself ना. भाई सबने खाना खा लिया? हैव यू हैड योर लंच? डिनर, भाई डिनर हो गया सबका बेसिक वे. द टाइम इज 9:30 मैन. भाई द टाइम इज 9:30. हैव यू हैड योर डिनर गाइस? डिनर हो गया सबका? आप वेबसाइट होस्ट करते हो, मैंने एक होस्टिंग करवाया है चैटबॉट ऑन रेंडर और नेटलीफाई पर. बोल रहा है ख़त्म हो जाएगा, एडब से वर्क वगैरह नहीं आता. व्हाट आई एम मिसिंग? कौन सा टॉपिक सीखना पड़ेगा? अच्छा, आपने एक चैटबॉट बनाया, वेबसाइट का होस्टिंग करवाया है, चैटबॉट ऑन रेंडर और नेटलीफाई. इट्स एन रिएक्ट प्रोजेक्ट और एल्स नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट? इट्स एन व्हाट प्रोजेक्ट? What project it is? A Next.js or else React project or React.js. Then host it in Vercel itself ना. Vercel पे तो हो जाएगा तेरा easily. Free भी है, it's totally free. You can host it in Vercel ना, easy हो जाएगा Vercel पे तो. Vercel पे तो easy है React.js host करना. हाँ भाई, एक ही फ्लो में लिख देता हूँ. भाई सीधी ना बार. अभी पता है मैं क्या जान रहा हूँ? पता है चैट जीपीटी क्या करता है बार बार? अभी मैं कैसे जवाब देता ना, उल्टी जवाब देता है मुझे, उल्टी जवाब देता है. जैसे एक ही फ्लो में लिख देता हूँ. हाँ भाई हाँ. बना दे. तू बना देना, तू बना देना, तू बना देना मेरे लिए. वो भी प्रोडक्शन ग्रेड. भाई ये तो बहुत गंदा आया. अच्छा सा. अपने कोई प्रोजेक्ट्स का कोई सैस क्या प्रोडक्शंस. हाँ यार, बहुत बड़ा प्लान है मेरा, आगे करने वाला हूँ वो भी. जस्ट वेट एंड वॉच. आई एम गोना डू विथ यू गाइस ओनली. आपके साथ ही करने वाला हूँ वो भी मैं तो. बढ़िया वाला प्लान, बहुत सारे प्लान है मेरे पास तो. तैयार रहना पड़ेगा मुझे. आई एम वेटिंग. हैव ग्रेट प्लान्स यार, बड़े बड़े प्लान्स हैं मेरे पास. अरे पागल, मेरे पास बैकएंड ऑलरेडी लिखा है. बैकएंड सेपरेट. अरे पागल, बैकएंड ऑलरेडी. मुझे वो भी काम करना है. हाँ अरे मतलब प्रोजेक्ट ऐसा बनाए ना जो जब नहीं यूज़ करो.
जेमिनी अच्छा लगता है जेमिनी, बट मेरे पास वो है ना गिटहब प्रो मॉडल वाला वर्जन लिया मैंने, तो इसको यूज़ करना सोच रहा हूँ मैं। तो गिटहब वाला वो लिया था मैंने, प्रो वर्जन, गिटहब प्रो वर्जन लिया था मैंने अभी। आई परचेज गिटहब प्रो वर्जन, $100 का पड़ा भाई, $100। मैंने सोचा कर्सर ले लेते हैं, इससे बेटर तो मैं भी कर्सर लूँगा अभी, बेटर फिर से कर्सर लूँगा अभी मैं। आई एम गोना बाय कर्सर ऑल्सो। अरे भाई ठीक है। तो बस तेरा क्लाइंट साइड का फाइनल सॉलिड सेटअप देना है तो प्रोडक्ट। ओ भाई, दिस इज अ गुड रिप्लाई मैन, ChatGPT हैट्स ऑफ मैन। ओह ओह माय गॉड, he just took and use me hook। भाई सही किया था इसने, बहुत आराम है भाई। ChatGPT मज़े बहुत लेता है ये भी। तो हुक्स पे चलते हैं। ह्यूज ह्यूज लॉगिन डॉट JS, और एक हुक बना लेता हूँ विच इज़ यूज लॉगआउट डॉट JS। प्रो वर्जन यूज़ करते हो ChatGPT, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्जन? ना, नॉट प्रो, नॉट ChatGPT, आई एम यूजिंग गिटहब प्रो वर्जन, हियर इट इज, गिटहब प्रो वर्जन, हियर अ मॉडल 4.1 इज़ बेटर यार, 4.1 इज़ बेटर, सो बेटर। बट ऐसे नॉर्मल चैटिंग नहीं करता है ना ये, वैसे गिटअप करता है, वैसे ChatGPT करता है। गिटअप इज़ समथिंग कोड चैट करता है वो, तो पूरा ऐसे काम नहीं करता वो, नॉर्मल चैटिंग के लिए सब। वही तो दिक्कत है, मुझे फ़न भी चाहिए ना कोड पे, तो मज़े भी ले, ऐसे ऐसे मज़े भी दे मुझे। भाई ऑथ कॉन्टेक्स्ट में ना, साले समझ ले, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में मुझे लॉगिन भी डालना, अच्छा लॉगिन डालने की ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक सो, बिकॉज पहले मैंने डाला था। चलो यूज़ हुक बना लिया इसने, ठीक है। ये तो लॉगिन हुक हुआ, फिर लॉगिन हुक इधर डालता। मैं TS यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिकली आई जस्ट एक्सियोस क्लाइंट, नहीं तो ठीक है, ABC सीधा लिख लेते हैं यहाँ। ये ले भाई, एक्सियोस क्लाइंट, एक्सियोस डॉट क्रिएट, एक्सियोस डॉट क्लाइंट, एक्सियोस डॉट क्लाइंट, ठीक है। एंड एक्सियोस यूज़ कर रहा हूँ, एक्सियोस क्लाइंट। आई एम जस्ट पोस्टिंग एन डेटा विच इज़ डेटा, मैं सिर्फ डेटा डाल रहा हूँ, ये ज़रूरत नहीं है मुझे, डेटा पोस्ट कर रहा हूँ। ओ गूगल गिटहब नंबर सेंट। हाँ बेसिकली मैं कर रहा हूँ एडमिन पैनल के लिए सिर्फ क्रेडेंशियल लॉगिन, एंड फ्रंट एंड के लिए गिटहब, नॉट गिटहब, गूगल, फेसबुक एंड ईमेल, मैजिक ईमेल लॉगिन, दैट्स इट, दीज टू स्टफ्स आई एम डूइंग इट। वो ऑथ के अंदर आते हैं ना, हाँ हाँ वो ऑथ के अंदर आते हैं सब कुछ, वो ऑथ के अंदर आते हैं सब कुछ, यस। इवन क्रेडेंशियल्स भी नहीं, फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन आता है, यस हाँ। सही मैन, सही सही जा रहा है भाई तू। login API, no, not this, don't use this. I'm using is admin slash auth। कैसे करते हैं मुझे भी सिखाना है, कैसे सीखूं भाई? इजी है, इजी सेटअप है, सो मच। फ्रंट एंड में करना है या बैक एंड में करना? अगर फ्रंट एंड में करना भाई सीधा इस पे चले जा, लाइक दिस इज़ बेटर, नेक्स्ट डॉट बेटर है, नेक्स्ट डॉट ना बहुत ईजी है, लिटरली सो ईजी है। नेक्स्ट डॉट ईजीली हो जाएगा तेरा नेक्स्ट डॉट। म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन फंक्शन विच इज़ दिस, एंड दिस विल बी लॉग आउट। क्लर्क यूज़ करो, आज ही सुना इसके बारे में। हाँ क्लर्क भी बढ़िया है यार, बट चार्जेस भी ले लेता है वो, बट ये नेक्स्ट डॉट चार्जेस नहीं लेता ना, बट ओ भाई डर गया मैं। Oh man, literally I was just scared. Dhruv J, thanks for subscribing, buddy. I literally scared, man. You literally scared me. The sound was too loud. भाई डर गया भाई।
ओ भाई डर गया मैं तो, फट ही गया मेरा। भाई ऐसा मत रहा यार, सब्सक्राइब करके डील और लॉग आउट। भाई क्लर्क बट बिलिंग भी तो देता है क्लर्क का। भाई बिलिंग में तो फाड़ देता है ये तो। बिलिंग में प्राइसिंग, नेक्स्ट और प्राइसिंग नहीं है ना उस पर, लाइब्रेरी तो है वो। ये रहा नो क्रेडिट का 1000 मंथली एक्टिव, बट ईजीली हो जाता है, बट मैनेजेबल। बट ना नेक्स्ट और बहुत ईजी है, बट प्राइसिंग नहीं है इसमें। खुद का लाइब्रेरी है, खुद ऑथेंटिकेशन लगाओ, कोई बिल भरने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए यार नेक्स्ट और बिलिंग करता है ना बेसिकली। सो बिगिनर्स के लिए आई थिंक सो नेक्स्ट और ईजी है, बट प्रोडक्शन ग्रेड में खुद का ऑथेंटिकेशन बेस्ट है, राइट। दूसरों का थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन क्या करेंगे यूज़ रख के, समझ रहे हो। खुद का ऑथेंटिकेशन होगा ना, बेटर ऑप्शन रहेगा, वी कैन डू बेटर। वही मेरा पॉइंट ऑफ आइडिया है, बट पता नहीं लोगों का कैसा है। और मेरा आई थिंक सो दिस इज़ अ मेन। यूज़ मी भी जनरेट कर लेते हैं फिर। यूज़ मी तो ऐसा है। आपको क्या लगता है कि अलग से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, विच इज़ बेटर? I think so. This is better, which I am doing, giving a personal authentication setup, because आगे चेंज भी तो कर सकता हूँ मैं। हाँ, सिंपल ईमेल लॉगिन, बस उसमें फॉरगॉट पासवर्ड का लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्यों फॉरगॉट पासवर्ड लगाना की ज़रूरत नहीं है ना बैकएंड में। एडमिन पैनल में ज़रूरत नहीं है ना बेसिकली। एडमिन पैनल में भेजूंगा बार बार तो पहन भूल ही जाएंगे चूतिए लोग। भूलने दे भाई। भाई भूल जाना बेटर है आई थिंक सो पासवर्ड इन लोगों को तो। भाई वो तो भाई बहुत ही करते हैं लोग, भूल जाते हैं पासवर्ड, फिर दिमाग खा जाते हैं। इनवैलिडेट क्वेरीज करना पड़ेगा। हाँ, लॉगआउट पे चलते हैं। इनवैलिडेट क्वेरीज भी तो करना पड़ेगा मुझे। बड़ी यार सिंपल ऑथेंटिकेशन। I am back. I am just from the gym. Oh, now locking for coding in few minutes. Come on, man. Let's code, man. मज़े करते हैं यार। कोड करना चाहिए यार, दिमाग फ्रेश होता है। सच में जिम भी जाना है मुझे भी। सो आई हैव टू ऑल्सो गो जिम। ये सब है ऐसा यूज़र इतनी ईजा होगा, बट बनाते वक्त पता चलता है। भाई सीरियसली लिटरली आई एम सेइंग दिस डायलॉग। कल ना मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा स्टोरी, कल का स्टोरी, रियल स्टोरी है। कल ना आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय AWS क्लाइंट। AWS जो वेबसाइट बना रहे थे, उनके लिए मैनेजर्स वगैरह थे, कॉल बात कर रहे थे। आई वाज जस्ट सिटिंग विद द मैनेजर इन द कॉल। सो उसको जस्ट बोला था मैंने कि लाइक चेंजेस तो करने बोल दिए, तो बनाने में तो लगता है फटती है ना सबको, डेवलपर्स की सोचते नहीं है। बेसिकली क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या किया पता है। बेसिकली जब मैंने कोड लिखा था, इनके डोमेन पे लिखा था, अलग रेपो पे, AWS डेव्स पे रेपो पे लिखा था। इन लोगों ने क्या किया, इनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है डेवलप करके, उनमें उसमें इंटीग्रेट करने बोल रहे थे। तो पूरा कोड चेंज करा था मैंने 3 बार। फिर से क्या किया, डेवलप से मैंने सीधा फिर से अपने डोमेन पे आ गया, गिटहब पे। भाई इतना पागल हो गया मैं ना, गुस्सा आ गया। फिर मैंने बोल दिया यार भाई बोलना तो ईजी है, करके देखो भाई फटती है करके। बंदे सोच रहे भाई ऐसा क्या बोल दिया, डर के भाई बेचारे, डरा दिया मैंने तो उसको। इतना डर के मारे भाई बोल दिया भाई सॉरी 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 सॉरी। फिर भी करना ही पड़ा मुझे। रात के 3 बजे सोया मैं कल, लिटरली। भाई क्लाइंट्स आर सो मच, बट पे भी अच्छा करते हैं। ठीक है चलो मानता हूँ पे भी करते हैं, बट पे पे कितना भी करो यार, बट मन तो दुखता है करने के बाद तो। भाई मेरा तो कोड हो गया, सी सीख रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट ईयर कॉलेज में। कितना टाइम लगता है वेब डेव से भाई? सी सी सीख के क्या करेगा भाई? जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग। भाई सी सीख के क्या करेगा ये बता, सी सीख के क्या करेगा? तुझे तो करना है वेब, तो वेब कर ले भाई। और else क्या कर भाई, सी से बैकएंड बना ले। आई रियली एम सेइंग, लिटरली सेइंग, C++ से और सी से बैकएंड बना ले और ट्राई कर भाई। सीख रहा है तो बैकएंड बनाना सीख ले भाई। सिंपल बैकएंड बनाना सीख ले सी से और C++ से, ज़्यादा अच्छा होगा राइट। सीख भी जाएगा तो C++, फिर बैकएंड भी बन जाएगा तुझे, बैकएंड का आइडिया भी हो जाएगा। मोहित बट हाय सर, हेलो बडी। भाई सर मत बुलाओ,
Just call me Harshit. That's it. Call me Harshit, buddy. That's enough. Don't call me sir. कॉलेज में हूँ तो बस पास होना है. अरे यार फिर डी एस से CPP से भाई, सी से बैकएंड कैसे भाई हो सकता है ना? सी से बैकएंड कैसे नहीं हो सकता? हाउ इट्स नॉट पॉसिबल? सी से बैकएंड हो सकता है. और भैया मनस्टैक डेवलपर क्या मनस्टैक डेवलपर क्या बताओ? मनस्टैक डेवलपर यस. देवेंद्र भाई क्या बताओ. सी से बैकएंड क्यों नहीं हो सकता बताओ? जावा से हो सकता है, इससे हो सकता है, तो इससे सी शार्प से भी हो सकता है बैकएंड, तो इससे क्यों नहीं हो सकता? PHP पे तो बैकएंड हो सकता है, पाइथन से भी तो सी से क्यों नहीं हो सकता? सी से मतलब और भी फास्ट होगा राइट? कंप्यूटर से सीधा बात करेगा. कोई कोर्स है क्या? देवेंद्र चावल के पास होगा क्या होगा? सर आप क्या पढ़ाते हो? मैं कुछ नहीं पढ़ाता यार, प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ आपके साथ. बट एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ बैठ के लाइव प्रोजेक्ट कोड बिल्ड कर रहा हूँ. और क्या, स्क्रैच से बना रहा हूँ पूरा बैठ के. वो भी प्रोडक्शन ग्रेड, ऐसा वैसा नहीं, पूरा प्रोडक्शन ग्रेड बना रहा हूँ. बेसिकली ऐसा समझ में आए कि भाई फटे ना ऐप, कितनी भी यूसर आके. फुल प्रोडक्शन ग्रेड स्केलेबल बना रहा हूँ बस बैठ के. और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर भी डालना पड़ेगा मुझे लेआउट पे. ठीक है, इसको भी रैप कर लेते फिर. ये कौन सा प्रोडक्ट है प्लीज़ रिपीट कर दो. प्रोडक्ट है ये तो इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विद पेमेंट इंटीग्रेशन है विथ इवेंट मैनेजमेंट बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एन NGO. एंड इन फ्यूचर सिखाने का सोचा है YT पे. अरे मैं तो सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा बड़ी. अभी बोल दिया, मैं तो कुछ पैसे वैसे लेने वाला नहीं हूँ. मैं रख के क्या करूँगा आपके पैसे? सीखो यार, मज़े करो यार, सिंपल. जस्ट लर्न दैट्स इट. बहुत प्रोवाइडर दे देते हैं. सीखो यार, बढ़िया. दैट्स बेटर ना भाई. कोई कंटेंट फ्री में नहीं देता आजकल. चेन्नई, आई एम फ्रॉम चेन्नई. हाउ डू यू नो इट्स प्रोडक्शन ग्रेड? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रिसर्च राइट. मैं जब कोड करता हूँ रिसर्च अभी मुझे पता है कोड लिखना कैसे लिखना. सिर्फ बेसिकली जब मैं लॉगिन पेज पे जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ऑन सबमिट फंक्शन लगाना है. जस्ट आई एम गोना राइट इट एज ट्राई कैश लगाना एक ब्लॉक का सिंपल सा. और एल्स मैं सीधा लिख लेता हूँ अवेट लिखना मुझे. अवेट लिखना, एक्सियोस लिखना, एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट लिखना, एंड मैं डेटा भेज दूंगा. हो गया मेरा. ये तो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन हो गया राइट. इसको सर आपका नंबर भाई मेरा नंबर लेके क्या करेगा भाई मैं सर मत बुला यार, सच्ची भाई अजीब लगता है सर बुलाते तो. भाई हर्षित बुलाना भाई. भाई देख यार, ये तो नॉर्मल हो गया. नॉर्मल तो लिखते ही लिखते हैं तो नॉर्मल. ये तो प्रोडक्शन ग्रेड तो हुआ ही नहीं ना बेसिकली. ये तो प्रोडक्शन ग्रेड हुआ ही नहीं. सब ऐसे लिखते हैं. और एल्स कोई लोग ऐसे लिखते हैं भाई, फेच रिक्वेस्ट कर लेते हैं बेसिकली. अवेट लिख लेते हैं, फेच रिक्वेस्ट लिख लेते हैं बेसिकली. ये भी करते हैं लोग. हेडर ऐसे लिखते हैं. मुझे पसंद नहीं है ना बेसिकली. मुझे जो भी बिल्ड करना, प्रोडक्शन ग्रेड सीख रहा हूँ बस. हाँ, HTML CSS कौन सी लैंग्वेज हो रही है? मैं तो नेक्स्ट पे कर रहा हूँ, Next.js पे. मैं तो Next.js पे कर रहा हूँ टेलविंड के साथ. सी देखो, अभी मैं प्रोडक्शन ग्रेड लिख रहा हूँ बेसिकली. मेरा काम इजी हो जाएगा राइट. आगे मैं फ्यूचर में भी कुछ भी प्रोडक्शन ग्रेड कर सकता हूँ इजीली. अभी मुझे पता चल रहा है कैसे प्रोडक्शन ग्रेड लिखना है. सो हाउ द प्रोडक्शन ग्रेड वर्क्स इजीली. सो इफ आई एम मेकिंग एनी स्टार्टअप्स कौन सी? मेरा क्वेश्चन है प्रोडक्शन ग्रेड और नॉर्मल कोड में क्या फ़र्क है बेसिकली यार? बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्केलेबिलिटी. सी इतना अच्छा कोड लिखो कि आगे वाला बंदे को समझ में आए, आपको भी समझ में आए, सिस्टम को भी समझ में आए. सो बेसिकली मैंने क्या किया, एक API रिक्वेस्ट के लिए भी अलग मैंने म्यूटेशन लिखा था. सो टुडे कंपनी में कैसे वर्क होता है. हाँ वैसे तो मैं भी लिख रहा हूँ, ट्राई करना चाह रहा हूँ कैसे काम करता है, कैसे लिखते हैं लोग. सो बेसिकली ना वो लोग बड़े बड़े जो भी डिफाइन करते हैं. इफ आई शो वन थिंग, मैं एक रेपो दिखाता हूँ यार, उस पर भी ऐसे ही लिखा है, प्रोडक्शन ग्रेड ही लिखा है. पूरा प्रोडक्शन ग्रेड कोड है. दे हैव यूज्ड Kubernetes, Django डैशबोर्ड है, बैकएंड Django है. सो इट्स समथिंग
डिफरेंट ना। प्रोडक्शन ग्रेड मेरा कोड देखो तो मुझे पता चलता है क्या गलती किया मैंने। ये रहा, ये तो प्रोडक्शन ग्रेड कोड है पूरा, तो इसको मैं उठाऊँ तो मैं देखूँ एक एक चीज़ पार्ट। तो इसने ऐसा लिखा है, पूरा यूज़ हुक बनाया इसने, एक्सिस के लिए हुक बनाया है, मेमो कहाँ यूज़ करना है, यूज़ मेमो कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो सी ही हैज़ यूज़ मेमो हियर, तो किसके लिए यूज़ किया पता ही नहीं मुझे। सो मुझे पढ़ना पड़ेगा कोड बैठ के, क्यों यूज़ किया, रिफ्रेश टोकन के लिए क्या यूज़ किया। सो दिस टाइप सम टाइप ऑफ प्रोडक्शन कोड्स, तो पढ़ने में ईजी रहता है, कोड क्लीन होता है इनका बेसिकली। That production grade nothing, it's just mean a clean code, proper scalable code, that's it, nothing else. मैं वेट और फेच यूज़ करने वाला हूँ ऐसा लगता है। कभी एक्सेस कभी ट्राई नहीं किया। एक्सियोस इज समथिंग फार बेटर दैन दिस फेच। एक्सियोस में बहुत कुछ ऑप्शन है, फेच फेच में नहीं है बेसिकली। भाई एक्सियोस इज समथिंग गुड मैन, यू हैव टू स्विच टू एक्सियोस मैन, अगर नहीं हो तो। भाई बारिश बाहर इतना हो रही है, आई थिंक सो कभी भी नेटवर्क जा सकता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, पहले मैं बोल दे रहा हूँ। भाई फिर चिल्लाओगे भाई आप लोग, फिर आपका वो चला गया, स्ट्रीम कट हो गया फिर। कोड और कोड टू ऑल एआई से हो जा रहा है, बट उससे उस कंपनी वर्क नहीं समझा। कोड टू ऑल एआई से हो जा रहा है बट उस कंपनी वर्क, हाँ वही तो दिक्कत है। एआई तो कोड कर देगा, मुझे देखना भी तो पड़ेगा कि कैसा क्या काम हो रहा है। एआई से कोड तो करवा लूँगा, मुझे समझ में तो आना चाहिए राइट, कैसे कोड वर्क कर रहा है सब कुछ। तो इसीलिए यार सीखना तो ज़रूरी है। प्रोडक्शन ग्रेड आगे मैं कुछ भी स्टार्टअप बना रहा हूँ, खुद से तो बनाना पड़ेगा राइट। आई कांट हायर एम्प्लॉयज़ एंड कीप इट गिव टू देम। स्टार्टिंग से थोड़ा ठीक करे तो फिर अच्छा रहेगा ना। ये देखो भाई, एक एक वर्किंग गिटहब रेपो दे दूँ, दे दे बोल मैं बना के तेरा रेडी टेम्पलेट कर दूंगा दे दूंगा भाई के लिए फुल पावर। ये देख भाई मैं क्या जवाब दूँ इसे। मेरा फेवरेट एक्सप्रेस जेएस पर एपीआई बनाना है विथ ऑल एज केसेस। बैठ कर 600 लाइंस देखा था, देता था, बहुत मजाक आता है उसमें। सी में बैकएंड लिखना इससे इतना होगा। हाँ आई एम फ्रेशर, बट भाई फ्रेशर हो तो बढ़िया है ना, फिर अच्छे से सीख जाओगे फिर। हाँ दे ना फिर, हाँ दे, बट इधर ही दे। रेपो 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 मत बना तू, प्राइवेट रेपो टाइम वेस्ट मत कर। हाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तू दे दे। सर कौन सा सी लैंग्वेज पढ़े? मैंने पढ़े थे ए लैंग्वेजेस पढ़े थे मैंने, अभी एक्सप्लेन किया था, एक बंदे ने पूछा था मुझे। सो मैंने लिख ले रख दिया था। बिफोर जॉइनिंग मुझे ये सब लैंग्वेज आती थी ऑलरेडी। पाइथन आती थी, जावा आती थी, वीबीनेट आती थी, शीप शार्प, जावास्क्रिप्ट, मर्न, स्विफ्ट, डार्ट, कॉटलिन, आर शार्प, ऑर्डिनो आता था। जॉइनिंग के बाद तो कॉलेज में ऐसे यही सिखाते थे बेसिकली, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कॉलेज में। फिर मैंने ये सब सिखाया था कॉलेज पे। गिटअप सिखाया था, पोस्टमैन, सी शार्प, विंडोज़ फॉर्म्स, डॉकर वर्सल सब सिखाया था पहले। जब फर्स्ट ईयर में था वही सब सिखाया था, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में सिखाया था। मज़ा तो आया सिखाने में, बट बंदे छूते थे इतना, पढ़ नहीं पाए। इतना अच्छा सिखाया था, बंदे पढ़ नहीं पाए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं बड़ी। यूज़ लॉगन यूज़ मी तो कर चुका हूँ बड़ी बड़ी। रिट्राई फॉल्स क्यों नहीं भाई, रिट्राई फॉल्स क्यों कर रहा है? गिटअप तो आजकल सिखाया को। गिटअप तो आजकल सीखा क्या होता है। हाँ मैन, गिटअप तो बढ़िया चीज़ है मैन। एक्चुअल में मैं 12th के बाद एक मेडिकल हेल्थ हाउस में वेब डेव शुरू किया। फ्रॉम फ्रॉम सुपर सिंपल डेव से। अभी कोई एडवांस कोडर नहीं हूँ, पर बस मन लग गया। इलनेस भाई ख़त्म होने वाली है। ओ टेक केयर मैन, टेक केयर ऑफ हेल्थ। हेल्थ में ही ना बड़ी पहले।
हेल्थ में ही ना. यूज क्वेरी तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया. अच्छा, यूज क्लाइंट करना है मुझे. ओके, क्लाइंट भी कर दिया मैंने. ठीक है सर. इंग्लिश कैसे बोला भी नहीं आता. अरे भाई ऐसे मत बोलो यार. अरे यार ऐसे मत बोलो यार. इसलिए तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. इंग्लिश में तो बात कर सकता हूँ बट नहीं करता मैं. ज़्यादा बंदे आके बोलते हैं इंग्लिश में बात करो बट एम्प्लॉय के साथ हाँ होता है यार. ऐसे ही होता है. जब मीटिंग पे आता है ना, मीटिंग पे ऐसा ही होता है. इंग्लिश ऐसे झाड़ते हैं फिर बाद में पीछे से देखा तो भाई इतना अच्छा हिंदी बोलता है. उस टाइम तो कुछ बात ही नहीं करता हिंदी पे. हाँ ऐसे वैसे लोग होते हैं भाई दुनिया में. सच यार, कल की मीटिंग में ऐसे हुआ था. बंदे ने ऐसा इतना इंग्लिश झाड़ा था मीटिंग पे. चलो यार मैंने भी झाड़ा मानता हूँ बट ऐसा नहीं. पीछे तो भाई हिंदी ऐसे गाली दे दे के बातें कर रहा था भाई. भाई ये तो सही नहीं हुआ था ना. वो बंदे भाई ऐसे ही. क्वेरी प्रोवाइडर था. क्वेरी प्रोवाइडर एरा. मोहित भाई आपने आपसे इंग्लिश में बोलो. क्रिकेट वगैरह इंग्लिश में देखो या क्रिएटर्स भी इंग्लिश वाले फॉलो करो. हाँ इसको फॉलो करो यार. आपके फेवरेट कौन थे वो? फॉलो हिम मे बी. ट्राई वॉचिंग इन दी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स देखो. ट्राई करो. ट्राई टू वॉच देम सो यू विल गेट इम्प्रूव हो जाओगे यार जल्दी से. लॉगिन ठीक है. ओके ओके मैन. भाई यार अगर और चाहिए तो बोल भाई. नेक्स्ट लेवल भी दे. नेक्स्ट लेवल भी दे. नेक्स्ट लेवल भी दे. भाई लाइक्स कितने हुए मैंने देखा ही नहीं. आज खोला ही नहीं है. सब्सक्राइबर्स कितने हो, लाइक्स कितने हो मैंने देखा ही नहीं भाई. आज तो खोल के कुछ नहीं देखा मैंने. आज सिर्फ लाइव पे आ गया सीधा. 12 दिन पे बाद आया था मैं लाइव. 12 दिन बाद क्या आया था लाइव. अच्छा 230 सब्सक्राइबर्स एंड 24 लाइक्स. ओ भाई साहब. ओ मैन. रियली गुड स्टार्ट अगेन आफ्टर 10 days आई कैन से. कोई नहीं, अच्छा ही तो गया. 230 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. बढ़िया मैन. आई थिंक सो आप लोगों का मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है. आई थिंक सो पता नहीं यार. मुझे तो मज़ा आ रहा है बट करने में तो. लाइव स्ट्रीम्स भाई 6 घंटे 5 घंटे होने वाले हैं लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं. स्टार्ट इतना लाइव स्ट्रीम भाई. 5 घंटे होने वाला है लाइव स्ट्रीम. ओके कोड तो सब सही दिख रहा है. सब सही चल रहा है. चलो करते हैं कोड फिर से ही. आज तो मुझे कंप्लीट करके जाना है कैसे भी करके. तो कुछ भी बोल भाई. तो कुछ भी बोल. इसको हटा दे. क्वेरी प्रोडी है सिर्फ. और बताओ सर कहाँ हो गया. खाना हो गया. ओके खाना हो गया. ओके खाना अभी तक खाना है यार मुझे. 5 घंटे से स्ट्रीम बैठा हूँ. कहाँ जाऊँगा मैं. बताओ आप ही बताओ. 5 घंटे से बैठा हूँ मैं स्ट्रीम पे. वेर आई विल गो. खाना दोगे तो जाऊँगा मैं. खाना खाने छोड़ते नहीं हो. मैं कहाँ जाऊँगा यार. कहाँ से जाऊँगा मैं बताओ. प्रोजेक्ट भी तो करना है मुझे ख़त्म. बेसिकली कितने दिन हो चुके हैं. मुझे कंप्लीट करना है बाय द वे फास्ट एज मच एज पॉसिबल. जल्दी जल्दी ख़त्म करना है भाई. बहुत धीरे कर रहा हूँ मैं. वही तो दिक्कत है. बट धीरे करने में मज़ा कुछ अलग है. सीखता हूँ मैं ज़्यादा. कुछ सीखने को अच्छा मिलता है बट धीरे धीरे कोड करने में. अभी म्यूटेशन फंक्शन समझ में आ गया मुझे. म्यूटेशन कैसे यूज़ करना है. हुक बना दिया मैंने. फिर एक्सपोर्ट भी कर दिया मैंने. फिर इधर यूज़ कर रहा हूँ म्यूटेशन फंक्शन यूज़ लॉगिन करके. तो फिर ऑन सबमिट पे डेटा लगा रहा हूँ. हाँ लॉगिन सक्सेसफुल. एडमिन डैशबोर्ड पे रिटैग कर देगा ना. इस पर रिटैग कर दे तो सिंपल. सो नेक्स्ट सिंपल से जेएस वेब पेज एंड पीएचपी समझा दो यार. पीएचपी तो भूल चुका हूँ भाई मैं तो. भाई पीएचपी तो भूल चुका हूँ.
भाई PHP तो भूल ही चुका हूँ मैं। भाई एक बार UI दिखाना भाई। UI में तो कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने बेसिकली, और UI में तो कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने तो। भाई एरर आ गया। हाँ ग्रेड स्टैक करके कुछ, हाँ पता है मुझे, पता है। मैंने बहुत बार देखा है ग्रेड स्टैक। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है उसमें, बट ना क्या दिक्कत है पता है उस पर? उसमें ना प्रोडक्शन ग्रेड नहीं सिखाता है, वही मैटर करता है यार, मुझे बहुत मैटर करता है। जैसे ना ऐसे हो गया, ये चैनल हो गया जो कोड एंटोनियो, राइट, एंटोनियो कोड एंटोनियो हो गया, और एल्स हसन अहमद हो गया, चैनल सर हो गया, हो गए। सो हितेश चौधरी सर हो गए। ये ना सारे प्रोडक्शन ग्रेड के स्केलेबल ऐप्स समझाते हैं कैसे बनाते हैं बेसिकली। उसमें ना मन लगता है ज़्यादा। नॉर्मल तो कोई भी बना लेगा, सी लॉगिन तो हो गया मेरा, लॉगिन फंक्शनलिटी हो गया बस। भाई इतना स्पीडली हो जाएगा मुझे ये पता नहीं था। लॉगिन फंक्शनलिटी लॉग आउट फंक्शनलिटी भी डालना पड़ेगा मुझे इधर। ठीक है साइड बार पे चलते हैं फिर। साइड बार नहीं, कोड दो सब AI से मिल जाता है, है बट समाना था। समझा नहीं यार, नहीं कोड तो सब AI से मिल जाता, AI से मिल जाता बट समाना था। समाना मतलब UI क्या होता है सर, प्रैक्टिकल बता दो। UI बेसिकली दिस इज एन UI मैन, UI इंटरफेस, इसको UI बोलते हैं राइट बेसिकली। भाई यार ये क्या दिक्कत है भाई, दिक्कतें बहुत आती है जब कुछ भी खोल लेता हूँ ना। अच्छा भाई दिक्कत इस पे था, मैंने इस पे लगा दिया था वो इस पे ट्रांसफर कर दिया था मैंने गलती से। ओ गॉट इट, गलती इधर था मेरी, इधर गलती थी मेरी। समझ गया मैन। अरे पूरा कोड हट गया। नो अबे यार क्या मैन, छी यार, फिर से नहीं यार। यार क्या कर रहा हूँ मैं बैठे बैठे यार, दिमाग की पैन बढ़ चुकी है ऑलरेडी। अरे यार UI क्या होता है समझाता हूँ बड़ी। हाय ब्रो, मैं नया हूँ तो रिकैप कर दो टेक स्टैक। श्योर मैन, टेक स्टैक रिकैप कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम यूजिंग Next.js 15 एंड Tailwind CSS, Node.js Express.js, सब कुछ, द टाइम स्टैक वेरी एंड एक्सप्रेस पासपोर्ट JS सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली मैं। इफ़ यू वांट सी प्रॉपर गुड नाइट, कल भी आना श्योर मैन, आई बी रेगुलर डेली। जाते जाते एक लाइक तो करते हैं यार भाई। ये रहा भाई टेक स्टैक। डेटाबेस बता रहा हूँ, डेटाबेस बेसिकली आई एम यूजिंग MongoDB फॉर नाउ। आगे मैं यूज़ करूँगा पोस्टग्रेस। हाँ नहीं, आगे भी MongoDB यूज़ करूँगा बट आगे मतलब इन द फ्यूचर आई स्विच इट टू पोस्टग्रेस बेसिकली। एंड मोंगोस यूज़ कर रहा हूँ एज ORM, यू कैन से नॉट एन ORM, जस्ट एन मोंगोस यूज़ कर रहा हूँ MongoDB के लिए। एंड टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद टाइमस्टैक वेरी है, शायद सीन UI है, एंड मेरा खुद के UI कंपोनेंट्स है इसी में। अच्छा और तो के पासपोर्ट JS है। एंड इस पासपोर्ट JS में दो तरह के ऑथेंटिकेशन है। फ्रंट एंड के लिए सिर्फ गूगल एंड फेसबुक एंड मैजिक लिंक, एंड फ्यूचर में मोबाइल OTP डालूंगा। उसके बाद बैक एंड एडमिन डैशबोर्ड के लिए सिर्फ क्रेडेंशियल ऑथेंटिकेशन। दो टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है इस पे, दैट इज मैनेज्ड बाय, OAuth is managed by passport and others is managed by own code. UI इज Satchian एंड खुद का UI है बस, ज़्यादा कुछ नहीं, खुद का UI यूज़ करूँगा ज़्यादा तो। खुद का ही UI जनरेट करूँगा मैं तो, खुद का ही लिखूँगा कोड पूरा UI। मुझे ज़्यादा पसंद UI लिखना, सो आई प्रेफर माई ओन UI। यूजर्स पेज, ठीक है। समथिंग एरर हियर, एक्स is loading login mutation. Okay, I've written here, this is the wrong thing which I've written. Let's comment this out. Okay, let's comment this out. Okay, अभी तक कमेंट कर दिया मैंने। एरर तो दिखाएगा दिखाएगा, सैट, ओ माय गॉड, साइड बार, ऐप साइड बार। सैट कहाँ यूज़ हो रहा है मैन, पता ही नहीं चल रहा सैट कहाँ यूज़ हो रहा है।
ये रहा सैट। अच्छा इधर सैट लिख दिया मैंने गलती से, ओके, इसलिए बार बार दिखा रहा था। इस लोडिंग फंक्शन कुछ नहीं है अभी तक तो। फंक्शन होगा एसिंक्रोनस रिटर्न डेटा, रिट्राई फेच, रिकनेक्ट, रिमाउंट, रिट्राई वन। ठीक है मैं इसमें लिख लेता हूँ एडमिन नहीं और एडमिन स्लैश यूजर्स लिख देता हूँ। बेसिकली यूजर्स आ जाएंगे इधर, बेसिकली यूजर्स आ गए, बढ़िया। यही है भाई यूआई, अभी तक तो मैंने बनाया यूआई बेसिकली, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। या मी में यूजर्स आ रहे हैं, मी में मी आ रहा है, मी आ रहा है भाई, ओए मी में मी आ रहा है। यूजर्स इज दिस, मैं ना सोच रहा हूँ इसको ना एनक्रिप्ट करूँ डेटा। आई एम गोना एनक्रिप्ट दिस डेटा ऑल्सो बाय द वे। बैकएंड से एनक्रिप्ट करूँगा, फिर फ्रंट एंड में डीक्रिप्ट करूँगा डेटा। बढ़िया लगना चाहिए ना। मैं था लॉगिन पेज पे, यूज़र लॉगआउट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड लेआउट, ठीक है। मैं जाता हूँ ऐप साइड बार पे, ऐप साइड बार पे अलगोट, एंड इसको ना जो लॉगआउट सिस्टम है जस्ट नेम इट ऑन क्लिक करूँगा, एंड आई जस्ट नेम इट एज लॉगिन। लॉगआउट वाला हुक था ना मेरे पास, लॉगआउट वाला हुक, आई यूज़ इट एज लॉगआउट हुक कॉन्स्ट ना, लॉगआउट हुक ले लेते हैं, यूज़ लॉगआउट हुक ले लिया मैंने, ठीक है। एंड म्यूटेट कर देते हैं, म्यूटेट एसिंग कर सकते हैं ना इसके, म्यूटेट एसिंग कर देते हैं ना बेसिकली। एंड इस लोडिंग भी ले लेते हैं, स्पेंडिंग भी ले लेते हैं, स्पेंडिंग भी ले लिया मैंने, तो ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं एसिंग वाला, एसिंग वाला फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। एसिंग वाला फंक्शन बना दिया, अवेट डॉट लॉग लिख दिया, सही में बढ़िया काम किया तूने, सही है। एंड इस पर ना डिसेबल पेंडिंग मुझे ना क्या करना चाहिए, डिसेबल तो करना है मुझे पेंडिंग, ओके डिसेबल करना चाहिए। एंड बाकी सब तो सही है। लॉग आउट कर लेते हैं एक बार, इफ़ आई लॉग आउट दिक्कत दे रहा है, ओके देयर इज़ नो फाउंडर पोस्ट रिक्वेस्ट। इफ आई गो टू दिस लॉग आउट यूज लॉग आउट, एंड नो दिस इज रॉन्ग बाय द वे, दिस इज़ रॉन्ग बाय द वे। मुझे लिखना था admin me slash logout, so this is perfect URL which is from my side. So if I log out and there's an 4 over request, it must user log out successfully, so I have to show and message also here. So if I'll just make an on click function itself, by the way, on const handle logout, so try logout error failed, that's it. मैं ना इस पर लिख सकता हूँ राइट, मैसेजेस इफ पॉसिबल ऑन सक्सेस दिस एंड सो एंड टोस्ट नोटिफिकेशन which is and logout successful, or else on error show this messages on settled query and remove users, ठीक है। ओके सी लॉगआउट तो कर दिया इसने, अनऑथराइज रिक्वेस्ट दे दिया इसने, अनऑथराइज रिक्वेस्ट which is 401, okay, not authenticated. So if I do harshit and at gmail.com and 123 here it is, login is successful. If I go to this local host, it's properly login in. If I save this and go to this use login hook, and if I name it as properly here इधर ही हैंडल करते तो फिर क्या होगा, स्टोर भी तो करना है मुझे बेसिकली, आफ्टर स्टोर दिस लॉगिन इन्फॉर्मेशन ऑल्सो राइट। बिना स्टोर करे क्या करूँगा मैं, अच्छा ठीक है। राउटर स्लैश में सिर्फ रोटेट कर दे, ज़्यादा कुछ नहीं करना तुझे। और अगर मैं लॉग आउट करूँ फिर से, आई एम जस्ट लॉगिंग आउट, लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया, सो इफ आई रिफ्रेश लॉग आउट हो गया। harshit@gmail.com कर लेता हूँ फिर से, एंड 123 और लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, एंड मी ऑन अथॉराइज्ड रिक्वेस्ट
ठीक है। अगर यूज़र आ गया ऑन बोर्डिंग फॉल्स एडमिन लॉगिन सक्सेसफुल, मुझे ना ये स्टेट आके सेव करना, सेव करना बेसिकली आई हैव टू बिल्ड एन ऑथ कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक सो ऑथ कॉन्टेक्स्ट कहाँ गया मेरा, ये रहा। यूज़र डॉट मी ऑलरेडी है इस पर, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो फिर यूज़ इफेक्ट लगाना पड़ेगा ना, पड़ेगा मुझे। if already login, if already login then redirect to home. Yes man, check auth user na basically, who's auth context. Again make an using another hook, basically using another hook for the use effect. Should I make another hook for this? Should I make another hook for the, यार मैजिक लिंक सक्स यार, अरे मैजिक लिंक सक्स नहीं करता है बड़ी बेसिकली। कैसे पता है, ईजी है यार मैजिक लिंक, तो कैसे सक्स करता है बताओ, किस चीज़ पे स्टक करता है। बट मैंने तो कर दिया ऑलरेडी कोड इसका, ईजी था, बहुत ईजी था यार कोड करना, बेसिकली बहुत ईजी था यार। इट वॉज सो सिंपल फॉर मी। आपको कैसे हार्ड लगा यार? आई डोंट नो दैट। बहुत ईजी था, बट आई यूज रेडिस यूज़ किया मैंने पीछे, रेडिस यूज़ किया, बल्क एम क्यू यूज़ किया, क्यूइंग सिस्टम लगाया, उसी पे क्यू ए सिस्टम लगा दिया। क्यूइंग क्यों होते आएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना फिर तो। मैंने ना इसको ना पहले वाला और कॉन्टेक्स्ट दिखा देता हूँ इसको आरामी को, फिर ये रोएगा। Before my auth context was like this, and now I am before and I was not using tan stack. Now I am using tan stack. So give the production grade code properly दियो। ठीक है, लिख दिया मैंने, ये कर देगा काम जो भी करना। तो लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप विच इज़ डायरेक्टली यूज हैंडल कर रहा है, समझ गया। सेशन लोड हो रहा है क्लाइंट ओनली, सो मैनुअल स्टेट डायरेक्ट यूज कॉल इफेक्ट। अब तूने अरे यूजिंग एनी ओ आर एम, हर्षित देसाई, बेसिकली आई एम नॉट यूजिंग एनी ओ आर एम. After this project I'm going to use your ORM, which is Prisma or as Drizzle, because I know already Prisma how it works. So I'm trying to do with I'm going to go with Drizzle right now. My plan is this right now. अब तूने टाइमस्टैक क्वेरी यूज़ करना शुरू किया है तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट के काम सिर्फ रैपिंग होना चाहिए, राइट? गेट मी लॉग इन और लॉग आउट अलग से टाइमस्टैक क्वेरी में होना चाहिए। हाँ, तो टाइमस्टैक क्वेरी आप रीच दिस तो यूज़ क्वेरी मैंने तो यही लिखा था बेसिकली। जैसे एक्सपायर्ड में था मीन्स नो ट्राई, रिट्राई मत कर, ठीक है? और कैशे एड्रेस तो कैशे करता ही करता है, नो कैशे मत कर, ठीक है? एपीआई डॉट तो कैशे भी नहीं करना चाहिए ना, है तो ठीक है, कैशे भी नहीं करते भाई, तू बोल दिया तो ठीक है भाई, और क्या मुझे समझा दे भाई, तो यूज़ मी कर रहा हूँ हुक पे, कैश डेटा नहीं लेना मुझे बेसिकली, तू जैसे बोल रहा है वैसे कर रहा हूँ। कैश डेटा मुझे नहीं लेना, एंड मुझे रेस्पॉन्स जनरेट भी करना था, ठीक है? अभी हो गया मैंने, और रीट्राई भी फॉल्स करना बिकॉज सेशन एक्सपायरी हो गया, तो रिटर्न मत, ठीक है समझ गया, रीट्राई भी मत कर, ओके गॉट इट। म्यूटेशन, क्या म्यूटेशन है? यूज़ लॉग इन म्यूटेशन विच इज़ दिस वन। रिएक्ट क्वेरी क्लाइंट किया था उसने, यूरा रिटर्न म्यूटेशन, बट तूने हुक अलग दिया था ना भाई, ऐसा कैसे? अच्छा इसी पे लिख दिया है इसने, ठीक है भाई साहब, तू ग्रेट है भाई। तो मुझे सिर्फ ऐसा लिखना था, इधर क्वेरी क्लाइंट, यूज़ क्वेरी क्लाइंट, ठीक है?
लॉगआउट लॉगआउट के लिए ए हो गया, लॉगआउट के लिए हो गया, ठीक है। फिर अभी कॉपी पेस्ट मारा, फिर बाद में समझूंगा अभी बैठ के। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट अभी समझूंगा बैठ के, ठीक है। ओके समझ गया मैन। अब ना ये बता, मैंने क्या किया है बेसिकली। आई हैव मेड एन क्वेरी क्लाइंट, query provider for the and I have wrapped it in the layout. Should I do this operation? बहुत बढ़िया है जो काम कि तूने किया, मैं हो बिल्कुल सही काम है। हाँ मैंने यही किया भाई, हाँ यही किया था मैंने भाई, भाई साहब यही किया था मैंने भाई, 100% सही काम किया तूने। कोई लाइक इसमें मैं भी, हाँ क्लाइंट प्रोवाइडरी, ठीक है। हाँ यही किया था मैंने, बड़ी बराबर होगा क्योंकि प्रोवाइडर्स में जो नहीं है तो चाहिए होता। हाँ समझ गया, रिएक्ट डेव में भी हेल्पफुल होगा और डेव टूल्स, ठीक है। इसको भी कर दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो नेक्स्टल होगा, नेक्स्टल के लिए बोलना बना के दे दूंगा, ठीक है। तेरे फ्लो में कोई गलती नहीं है। ओ भाई ऐसे बोल रहा है ओ बड़े साहब, वो बड़े साहब, ठीक है बड़े साहब। प्रोवाइडर्स में मैं ना ऐसा लिखा था, बट कुछ वाईटी वीडियोस देखा और दे हैव रिटर्न, भाई नहीं बात ये देख ले तू भाई, सिर्फ वॉच दिस नथिंग एल्स भाई। बट चैट जीपीटी इज समथिंग गुड यार भाई, परफेक्ट, ये सही एग्जैक्टली प्रोडक्शन ग्रेड क्वेरी प्रोवाइडर बना के लेआउट रैप करना इज बेस्ट प्रैक्टिस। एंड तेरा क्वेरी क्या कर रहा है, मेरा प्रोवाइडर सिर्फ क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है एंड लेआउट पे यूज़ कर रहा हूँ सिंगल इंस्टेंस के लिए, शेयर हो रहा है पूरे ऐप में। यस सारे यूज़ क्वेरी म्यूटेशंस के अंदर क्वेरी क्लाइंट के अंदर ही काम करेगा। यस वही करेगा, पता मुझे। बेस्ट प्रैक्टिस अगर और क्लीन बनाना है तो lib.queryclient.ts में ये होना चाहिए बेसिकली, दिस वन होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैंने लिब में क्या बनाया, ए बनाया, इसको देता हूँ मैंने ना, लिब में ए बनाया है, चेक करें इसे। मैंने ना लिब में ये बनाया था, चेक कर ले भाई। और क्या बोल रहा है, अगर और कुछ चाहिए बोल, सर्वर साइड एक्शंस, मिडल बैक गार्ड, सब कुछ चाहिए भाई, तेरा तो सब कुछ चाहिए मेरा। भाई ये तो एकदम परफेक्ट है, सॉलिड प्रोडक्शन ग्रेड कॉन्फ़िग। देख लाइन बाय लाइन प्रोडक्ट ब्रेकडाउन दे दूँ, हाँ दे दे भाई, लाइन बाय लाइन दे दे। स्टिल it's 5 minutes every good for user data. Don't refresh on tab switch. Nice UX, yes. Retry only one, avoid infinity loops. ओके और कुछ ऐड कर सकता क्या, बता तू पहले, पहले ये बता भाई तू। तुझे अगर सुपर फ्रेश डेटा चाहिए तो स्टील टाइम 0 रखता, बट 5 मिनट्स इज बेटर फॉर परफॉर्मेंस। करने से अननेसेसरी नेटवर्क कॉल बैंड। तो कर दे 0 है, और कोई डाउट है तो बोल। या एंड चाहिए तो स्टील 0 कर दे, 0 कर दे।
परफेक्ट भाई. अगर तेरा ऑथ्स सेशन क्रिटिकल है और तो हमेशा फ्रेश डेटा चाहता है. यस हाँ चाहिए भाई. तो ग्लोबल स्टेट टाइम रखना ज़ीरो बेस्ट है. ठीक है. गुड गुड स्टार्ट. थैंक यू सो मच. ऑप्शनल डोंट स्पैम रिफ्रेश. ओके डोंट स्पैम रिफेच डेटा. रिफेच ऑन टैब स्विच. हाँ. रीट्राई वन ओनली सेफ. ओके ठीक है. एक बार सेफ है रीट्राई. थैंक यू मैन. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेश कर लेता हूँ. अगर इसने सही बोला अगर तो कॉपी कर लिया इसने. मैंने पेश कर दिया. तो मैंने भी यही लिखा था बेसिकली. इसने भी यही बोला है. ऑलवेज रिफ्रेश के लिए सेम है, सेफ है. एंड दिस इज ऑल्सो सेम. टैब स्विच के लिए बढ़िया है. एंड कुछ डाल सकता हूँ क्या मैं बेसिकली स्टील टाइम प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ. अच्छा मैं ना एडमिन डैशबोर्ड बना रहा हूँ. एडमिन डैशबोर्ड इज़ ओनली फॉर यस भाई. बोल तेरा भाई खड़ा है. ओह माय गॉड. अब भाई मज़ा आएगा. तेरा यस लग रहा है तू नेक्स्ट लेवल भी चाहता है. हाँ भाई नेक्स्ट लेवल चाहता हूँ. तो सुन मैं एक नोट्स ऊपर लेके जाता हूँ. टाइम स्टेप क्वेरी एस एस आर हाइड्रेशन एंड प्रेसिस्ट प्रोडक्शन ग्रेड ऑफलाइन कैशिंग नेक्स्ट.js पैटर्न. भाई ये चाहिए मुझे. दिस इज व्हाट आई नीड. लेआउट और TSX में क्या कर. एस एस आर हाइड्रेशन लगा तू. ओ भाई साहब. प्रीफेच क्वेरी. ओ भाई मज़ा आ रहा है इसकी आँख. नाइस मैन. नाइस 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 नाइस. सुन सुन मैंने ना एक फ़ोल्डर बनाया है प्रोवाइडर्स करके उसी में सारा डाल दे. उसमें एक फाइल है क्वेरी प्रोवाइडर. उसमें डाल दे तो बेसिकली भाई. बट ChatGPT हैट्स ऑफ मैन. क्या दिया है तूने भाई. भाई मज़ा आया. तेरा यस लग रहा है तू नेक्स्ट लेवल बना चाहता है. हाँ भाई रियली आई लव दिस मैन. आई लव दिस. अगर बनाया है. हाँ बनाया है मैंने भाई. बनाया है. कैसे नहीं बनाऊंगा मैं. पागल है क्या. वो क्वेरी प्रोवाइडर चिल्ड्रन लिया मैंने. चिल्ड्रन कर दिया मैंने. ऑप्शन डेव टूल्स तो चाहिए नहीं मुझे. सिर्फ डेवलपमेंट डेव टूल्स चाहिए. फॉल्स कर दिया मैंने. और ठीक है. और आगे हेलो भाई डेव इनसाइट्स वेलकम बैक. कैसे हो भाई. आफ्टर सो मेनी टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू गाइस बैक. प्रोवाइडर वाई दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस. कोड रेट. भाई तू कहाँ से TG से आया. हाँ क्या क्या क्या. कोड रेट. भाई तू कहाँ कैसे TG से यही क्या बोला भाई. आई एम नॉट क्लियर विद दिस पॉइंट. आई एम नॉट क्लियर. भाई समझ में आया तेरा पॉइंट सच्ची. ओ दिस इज प्रॉपरली लिखा था मैंने. तो ये तो प्रॉपरली लिखा था. इसने कुछ चेंजेस करा. ओके ऐसा हाइड्रेशन एरर क्वेरी प्रोवाइडर में देना भाई. फिर देना पूरा. बट गिव इट हियर इटसेल्फ. इधर ही दे दे भाई तू. मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रो. What misunderstanding happened? I'm not getting your point. Can you type it again? I'm not getting it totally. कोडिंग में ट्रेनिंग चल रहा है. बहुत HTML सीख रहे हैं. पर वो तो 11th-12th में क्या है. मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने भाई ट्रेनिंग चल रहा है. ट्रेनिंग से भाई वही होता है यार. हर कॉलेज में यही सीन्स है. हर कॉलेज में यही सीन्स होता है. अलग ही मज़े करते हैं भाई कॉलेज वाले भी. इसने पता है इसने क्या बोला. प्रेसिस डेटा दूंगा बोला. बहुत कुछ बोला था इसने. बहुत कुछ. इसने अभी तो कुछ नहीं दिया. ठीक है भाई साहब. तू है कुछ कर रहा है सोच रहा है. क्वेरी क्लाइंट पे गया मैं. क्वेरी प्रोवाइडर पे गया. उसको मैं इधर छाप रहा हूँ. बेसिकली आई एम नॉट टेकिंग दिस चिल्ड्रन बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग नेक्स्ट दिस. इंस्ट्रक्टर को भी HTML नहीं आता है भाई. हाँ यार वो दैट्स एन कॉमन मैन. वो तो भाई इतना कॉमन है. मैंने भी इतना देख लिया. जब मेरे सर को कुछ नहीं आता. घंटा नहीं आता मेरे सर को भाई. मेरा सर पूछता है मुझसे पूछता है कि हाउ यू डू दिस. व्हाट्स द लेटेस्ट टेक स्टैक.
Can you teach them? Can you teach the students? Can you teach me also? Can you give me the documentation? मैं बोलूँ भाई ले ले मेरा ले ले भाई ले ले मेरा भाई ले ले. Bro, I'm think my friend's channel, that's why I called you Vraith. You and him got a similar voice, and you also use ChatGPT like Tito to same to same. No, I'm just using ChatGPT for only the production grade. Even you can see the before live streams also. I was using to code my own only because I'm using TanStack Very as a production grade. So I'm using ChatGPT right now because I'm using a production RAW. I'm switching to production grade, so I'm trying to use as a production itself. That's give me really so much. Login तो perfect लिख दिया था इसने. ठीक है, copy कर लेता हूँ. So nothing else, man. Just I'm using a production grade. That's it. For this one, I'm using this. Or else I should not use this ChatGPT also. I love using my code itself. I love writing code itself, not using GPTs. If you can see before streams and all, so I love to write code on my own. The backend I've written on my own totally. The line is not coded by the ChatGPTs and all. So just for the structuring part and all, how to write the production grade, they have helped me a little bit. That's it. Just they have helped me a little bit, nothing else. Helping hands, they are just my helping hands, nothing else. I have not copied whole the code. This code is now production grade, so because I've given already the context how to write him, so he's just refactoring the code, nothing else. I've written all the logics, but it's just refactoring the code, nothing else. Loading import. Loading मैंने लगाया नहीं. Login schema, I've already written this. So if you want to see this schema, I've already written this schema. Here it is, my schema. He doesn't need to write. Never mind, he wrote, by the way, still. See, because I've already written this code, just I'm gonna this login function here. Bro, who cares? We need to get the work done. Doesn't matter unless you know what you're doing. Yes, man. Yes, man. Got your point. सीखना तो पड़ता है. सीखना तो पड़ता है. लोग बोलते रहते हैं यार क्या पड़ता है. सीखना तो पड़ता है by the way, but इतना यूज़ कुछ भी नहीं चाहिए मुझे. सिर्फ एक यूज़ इफेक्ट चाहिए कि मुझे ना एक काम ये भी करना था. इस पेंडिंग लॉगिन, ठीक है, इसको भी करना था. सही, ठीक है, कर लेते हैं. थैंक यू मैन. इसको भी सही करना. ठीक है, लॉगिन पेंडिंग ऑलरेडी कर दिया मैंने. पेंडिंग बेसिकली लोडर है ना. लोडर मेरा आइकन से लोडर ले. बट क्लास नेम कुछ मत रखा इधर. तो मार्जिन टू हाइट विथ मत कुछ दे. सिर्फ एनिमेट स्पिन दे तो सही है. जॉड का कम बता दो एक बार. और मिडल मैर. ओके, जॉड बेसिकली जॉड क्या करता है. जॉड इज अनदर फॉर्म. सी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट सिंपली एक्सप्लेन इट. जो ये लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, सो व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट मेकिंग द कोड एज अ प्रोडक्शन, नथिंग एल्स. आई एम मेकिंग द कोड प्रोडक्शन ग्रेड, नथिंग एल्स मैन. I'm just I'll show you what I'm doing it. So basically ना जॉड क्या करता है, जो एक कोड दिख रहा है, ये जो लॉगिन फॉर्म दिख रहा है ना तुझे, ये लॉगिन फॉर्म जो भी कोड है, बैकएंड में मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, आई एम मेकिंग एन स्कीमा. जैसे मैं यूज़र मॉडल बना रहा हूँ, राइट, ऑथर वैलिडेशन के लिए, प्रॉपर वैलिडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस. मुझे जैसे मैं मोंगो स्कीमा दिखा रहा हूँ. इफ़ आई शो माई बैकएंड टू यू, सो 1 second, आई शो माई बैकएंड. Yeah, Zod is a schema validation, by the way. Yes man, you got the point. But let's explain him with an example. It's a live example. I will just go to my user model. So there is ना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है mongoose में. ज़्यादा मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं, फीचर्स नहीं है कि वैलिडेशन प्रॉपरली दूँ. बट Zod has that powerful thing. मतलब पावरफुल है कि Zod वैलिडेट बराबर कर सकता है वैलिडेशन. सो मैंने क्या किया, मोंगोस के ऊपर ही मैंने और एक मॉडल वैलिडेशन लगाया, विच इज़ दिस जॉड. जॉड इज़ प्रॉपर वैलिडेट करता है डेटा कि बराबर है नहीं आ रहा है डेटा, स्ट्रिक्ट लेता है बराबर प्रॉपर. बहुत सारे फीचर्स है इसमें, लाइक कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, खेल सकते हैं वैलिडेशंस के लिए. सो आई यूज़ दिस जॉड वैलिडेशंस. और एक बार मिडल वेयर बेसिकली यार, अगर कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं,
बस सोच लो कि एक बंदा लॉगिन ही नहीं है बट तेरा डैशबोर्ड लॉगिन कर रहा है, डैशबोर्ड यूज़ कर रहा है बट बेसिकली लॉगिन नहीं है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन नेसेसरी है, राइट? मिडलवेयर नेसेसरी है, तो ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर नेसेसरी है, तो ये मिडलवेयर अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो लॉगिन पेज पे जा ऑटोमेटिक. सो इफ़ आई शो द मिडलवेयर, अगर ऑथेंटिकेट नहीं है, बेसिकली ये वेरीफाई कर रहा है JWT टोकन, तो अगर JWT टोकन वेरीफाइड नहीं है तो रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड बता दे भाई सब, मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना, जो भी गेट रिक्वेस्ट आ रहा है, पुट रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रंट एंड से. You deleted my comment. Never. I've never deleted my comment, buddy. It's maybe you have spammed something. It automatically deletes. I can show my screen also. If you want, I'll show my screen. You can see the screen. I have not deleted your comment itself. If you want to see the screen, you can see it. I have not deleted any of the comment. I was just coding here. आप देख सकते हो. I never deleted your comment, buddy. Maybe YouTube have deleted it automatically because of the typing context. सो इसलिए मिडिल वेयर्स भी यूज़ होते हैं सारे. मिडिल वेयर्स जस्ट प्रोटेक्शन के लिए, नथिंग एल्स. जस्ट रोल गार्ड, इट्स एन सिक्योरिटी पर्सन, दैट्स इट. इट्स एन सिक्योरिटी गार्ड फॉर यू, नथिंग एल्स. इट हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट योर साइट in many ways. So use effect, I'll make it as a use effect. Does it save the user? Does it store it? Let's check now. See, it has written the code already, but I'm going to read this code again now because I need the code to I have to read this. So he has made a use query client and router. Middleware is between client and server. Yes. Mutation function, which is this proper Axios client, is data on success. It's return success. It's invalidate the request. It's request मारता है, invalidate करता है, and toast login बोल देता है, and root replace करता है, else toast में से login fail दे देता है, on error login error दे देता है, proper है. But after login, I want to store this in the youth context में तो store करना पड़ेगा. After login, हरकिरत सर का कोर्स मैं पढ़ा था. हाँ भाई, समझ गया. हरकिरत का कोर्स भाई यही सिखाता है, समझ गया. गॉट योर पॉइंट. कहाँ से सिखाता? इफ़ द पर्सन इज already login, how to retrieve data after the login? Basically, before I used to save the data using the auth context. Now what should I do? Using a state variable. Now I'm using TanStack. So what's the process? भाई खाना खा लिया सबने? Had you लंच खा लिया सबने? डिनर हो गया सबका? हर्ष गुप्ता, हाई मैन. डिनर हो गया सबका? डिनर भाई क्या खाया भाई खाना में? बताओ यार, मुझे भी तो खाना है. क्या खाया आपने? डिफरेंट कुछ खाया क्या? स्पेशल था कुछ आपके खाने में? मम्मी ने क्या बनाया? आंटी ने क्या बनाया था? बताओ. यस ब्रो, क्या खाना बनाया था? स्पेशल कुछ था खाने में? आलू की सब्जी और 3 रोटी. अरे भाई याद मत दिलाओ यार, मुझे भी भूख लग रही है. बट बाद में खाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं. इसने क्या भाई, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है ये. ट्रांजिशन पॉइंट है, हर किसी को कंफ्यूज करता है. जब वो मैनुअल यूज स्टेट ऑन कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट करता है, मैं स्टेप क्लियर करता हूँ. पहले क्या होता था? हाँ ऐसे होता था, मैं ऐसे सेव करता था, करेक्ट. तो यूज़ रिएक्ट में स्टोर होते सब चिल्ड्रंस. हाँ यूज़ कॉन्टैक्ट पे यूज़ कर. अबे यार कहाँ गया? हाँ आ गया. अबे नहीं हेरा, आई हैव चेंज्ड इट. ओके ठीक है. मतलब लॉगिन होते ही हाँ मुझे ऐसा लेना पड़ता था. ब्रो आई लव्ड योर कंटेंट, यू अर्नड अ सब्सक्राइबर. थैंक यू मैन. थैंक यू मैन. This is in real content, man, not a scripted and all. It's really, I love this real content. I love live coding, to interact with you guys, really. Like this gives me a vibe and motivate to code more, and gives so many content, like make a big projects.
Okay. If you saw my first streams and all, first before streams and all, I used to explain all these steps. Like I've explained how Postman works, like a production grade, how to set up it also. Even I've set up here also. By the way, that's the main thing I'm really excited to show you guys. If I this is something इसमें no manual state tanstruct query और cache ही तेरा state और तेरा hot context of use me तो invalidate से refresh data आता है तो भाई कहाँ सेव करें पुराने यूजर स्टेट की तरह मैनुअल सेट चलाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ओके आई गॉट दिस प्लान क्लियर ये एक लाइन में स्टैंड क्वेरी रिप्लेस योर यूज स्टेट मैनुअल ठीक है मस्ट डू विच इज़ ऑलवेज यूज इनवाइटेड क्वेरी आफ्टर लॉग इन लॉग आउट ठीक है यूज सुख हमेशा क्वेरी ये तो पता ही है मुझे ये तो पता ही है बस ऑथ प्रोवाइडर में यूज़ रन करे जब बच्चों का कॉन्टैक्ट यूज़र से मिलता रहेगा ठीक है मतलब यूज़र लॉगिन होता है तो JWT सेव होता है करेक्ट होता है इनवाइटेस कॉल होता है राइट कॉल होता है कैश में भी अपडेट हुआ यहाँ होता है पूरे ऐप में यूज़र है ठीक है टेंशन ख़त्म आगे तो ऐसा सारा मिडलवेयर तो ठीक है मिडलवेयर मैंने ऑलरेडी बनाया था आई हैव ऑलरेडी मेड द मिडलवेयर इसको दे देता हूँ आई गिव द मिडलवेयर एंड से दिस इज़ प्रॉपर और मेक इट एज अ प्रोडक्शन ग्रेड दिस इज़ माई मिडलवेयर oh this is something missing admin.login it's admin.login it should no it's proper check this is middleware and give me the SSR also production grade okay और क्या ही 6 जने स्ट्रीम देख रहे यार मैंने सिर्फ एक बंदे ने बोला था आलू की सब्जी खाया रोटी बाकी सब ने क्या खाया हुआ यार कुछ नहीं खाया क्या तुम लोगों ने भाई कुछ नहीं खाया क्या Bro, I am a beginner coder. I have completed basic HTML, CSS and started JavaScript. Can you give me some tips what to do? And I want to be a full stack. Got your point. I'm not from IT, but I'm trying to convert in my post-graduation. So basically you're Eugene, not an IT grad. Okay. Nice, man. Even I'm not an IT. I'm a BCA student, man. I'm just a BCA student. I'm a commerce student, by the way. I'm a commerce with Max in the school. So basically after doing HTML, CSS, JavaScript, try to move into MERN stack basically. MERN stack, React, MongoDB, Express, React, Node.js. Try to move to the MERN stack and please after watching this tutorials and all, please try to have a practical coding. Like practical coding in the sense after watching this tutorials and all, try to code on yourself. First try to copy the code and try to type it along because watch the video and type it, pause play and type it. After doing this all these steps, after completing this video, make the project on your own totally without the video knowledge and if you have any errors in between, please don't try to use ChatGPT. Really, I'm saying again and again, if you are doing the project again after this watching tutorial, please don't try to use ChatGPT and try to explore the documentations of the websites. Like Node.js, you have any error, try to visit the website, and if you have any HTTP request error or something, error 404 or 403 something, try to explore that errors, try to explore what it defines, so you'll learn more things. That's it you have to do in the MERN stack. After doing the MERN stack, make plenty of projects. That helps you. First of all, that helps you. First, make task manager to help you out how CRUD operations work, and it helps in the way like you can use your tool to manage your daily task. That's the first useful thing you need. Second one, which is documenting your code, which is a Dockifier. Maybe I'm just naming a Dockifier app. So make a documentation app. So how it works, I make one more thing, which is blogging site. Make a blogs for yourself. You make an app and upload it daily. How you did, what you did. This makes you increase. This makes you write code cleaner. This makes you more productive.
This makes you more creativity and increase the knowledge also. Hello bro, can you show me your code? Yes, see my code, buddy. This is my code, man. I'll show you what code you want. You want front end or back end? If you watch tutorials, by the way, please don't use ChatGPT. But BC is also type of IT, but not a type I can say. But not an IT. But before I was an like Mac student, right? This is my front end code, buddy. क्या चाहिए फ्रंट एंड कोड में क्या दिखाना बताओ, मैं दिखाता हूँ. पूरा दिखाना तो पूरा दिखाता हूँ और कुछ कम दिखाना तो कम दिखाता हूँ. फिर ये रहा स्ट्रक्चर कोड है मेरा. दिखना तो बताओ और जूम करता हूँ. BCS good, but BCS not good now. But I didn't learn any single line of code in BCA by the way in the college. I learned on my own everything. When I was in 10th standard, I started the coding journey. I made a huge software, which is huge software in the sense POS billing software, which is huge like a Tally. I've made it like a Tally, you can say, with more features than Tally. It has automation, WhatsApp, everything. Show me a browser output. Here it is, mine browser output. If I log in, you want to see if I log on harshit@gmail.com 123. Here it is, login in. If I log out, it's logged out, logged out, proper. Okay, how it is? You liked it? That's it. Till now I made, and even I've made the users page also, but there's some bugs here. So I wanna, here it is. It's working. Finally, it's working, man. Here it is. Till now I've made this, and if I click this user, so there will be some bugs. I know. Oh no, there is no bugs. I got you, bro. I'm also commerce student, so I understand. Yes, man. Really, it's really tough because I've learned Max, so it's literally easy for me. I really love to write code. Here था, यही है भाई. और यही था फ्रंट एंड, आई थिंक सो. इसके अगर बनाना वाला हूँ, अभी पूरा बनाने वाला हूँ. बस बैक एंड काम हो चुका है. बस अभी फ्रंट एंड में आऊँगा, इंटीग्रेट API इंटीग्रेट करूँगा, सब कुछ होगा. फिर होस्ट करना है भाई, मुझे सब कुछ करना है. credentials, what the fuck. Oh no bad words, sorry. If I log out now, कुछ होता है. हाँ भाई, this what I need. Nice bro, this what I need. यही बता कितना स्पीड हुआ था अभी. This what caching data is. This what time stack is caches. Oh भाई साहब, this what I need. This is what I need. Time stack query. Really. यार मज़ा आ गया आज तो कोड करके भाई. Really, I spent a good time, 5.5 hours today. I'm really loving it. 5.5 hours. Who says 5.5 hours? Oof. I'm really happy, man, for today. I've streamed around 6 hours also, but today the stream was very pretty well, man. That stream was a little crazy. That stream was, I can say, stream was very fun, crazy. But this stream was something great. So what this code says now, I have to export this async function. Okay. So basically this code says nothing else. This code is for caching before the data in the offline, for the offline purpose. Caching for the prefetch the user data for offline purpose, right? Offline support, yes. अगर offline चला गया बनता तो ठीक है, बढ़िया. तो कुकी हेडर ऑलरेडी हार है, तो देने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक सो कुकी हेडर की देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ओके. डिहाइड्रेट, यस, आई वांट टू डिहाइड्रेट भी करना है मुझे, बिकॉज डिहाइड्रेशन इज समथिंग पागल बना देता मुझे. डिहाइड्रेट तो लगाने हैं मुझे पैसे भी करके. सो लेट्स कीप दिस डिहाइड्रेशन एरर हियर. और डिहाइड्रेशन आई हैव टू इंपोर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ फ्रॉम क्लाइंट प्रोवाइडर. डिहाइड्रेट hydrate boundary here. Hydration boundary, yes, proper. Make it as this and this here it is proper. But yeah, and I'm properly managing this. SSR me server side render. Okay, server side render, but I'm giving the cookies already. But why? Why? I'm already giving the server side render cookies. Then why this is needed?
So query client, I'm managing this query client is from here it is here. So is there any need to pass it here? I think so, it's need to pass it here. I think so, it's not needed right now here, because no, it's needed. Auth provider, okay, I have to map it in the auth provider. By the way, why I have to map it here? Layout SSR hydration, by the way, okay, but okay, it's same ही रहेगा, ठीक है. I have to map it not here, I have to map it there. Okay, ठीक है, I got the point. But why like this? I wanna see why. तो बोल रहा है भाई SSR भी दे दे तो फाइनल पैटर्न नहीं रहेगा, तो क्यों? लेकिन तो अगर हाइड्रेशन बाउंड्री अगर लॉगआउट layout.txs में दे रहा है तो how it master and react by making projects like this, by researching like this, by asking questions to him how it works. Like they have learned, I've mastered it little bit I can say little bit. Query provider में ना दे, बस रख, ठीक है वो, ठीक है क्वेरी रखूँगा, ठीक है. फिर क्या करना है मुझे? लोडिंग स्टेट भी देना है, ठीक है. लोडिंग स्टेट मैं अलग से क्रिएट कर लूँगा. एंड ये तो मैंने ऑलरेडी रखा है, ये तो सही है. सिर्फ मिडलवेयर SSR लगाना है, ठीक है. SSR सर्वर साइड रेटिंग लगाना है. गॉट इट मैन, थैंक यू. इसको तो मैं लगा दूंगा layout.txt पे. समझ गया तेरा एरर भाई, कैसे करना है सॉर्ट. थैंक यू बड़ी, मिल गया तेरा सीन. फिर तो मुझे डेव टूल्स भी उधर ही रखना पड़ेगा, राइट? डेव टूल्स भी इधर रखना पड़ेगा. डेव टूल्स तो इधर ही रहेगा मोस्टली. हाँ, और मुझे ना layout.tsx पे जाना. layout डॉट, भाई इसके बाद फ्रंट एंड भी बनाना है मुझे. आई एम रनिंग वेरी लेट, आई एम लिटरली रनिंग वेरी लेट, आई एम just literally running very late. I have to do faster as much possible. Faster man, Harshit, little bit faster buddy. Export default async function man, not that. Query client is here, query client import it fastly. Query client which is I'm going to import it as dehydration tan stack query itself. Okay, tan stack providers. Now I'm going to use a provider here. I'm going to use provider also, but hydration boundary also here I'm going to use it. Hydration boundary भी चाहिए मुझे. Basically hydration boundary रहा, and state भी मैनेज कर लेते हैं. State is equal to dehydrate state, ठीक है. मैनेज कर लिया, इस पर SSR भी मैनेज हो गया प्रॉपर से, पता भी चल गया कैसे मैनेज होता है. तो कुकी हेडर कहाँ से दें? कुकी हेडर डॉट स्ट्रिंग हो गया प्रॉपर, सही दिख रहा है. सो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया. I'm a beginner in this field and when I got to code I don't understand how to apply the logic. हाँ यार, so this question मुझे भी ऐसा ही था भाई, मुझे भी ना ऐसा ही था फीलिंग. स्टार्टिंग में ना मुझे भी ऐसा ही था, बट धीरे धीरे जब मैं भी स्टार्ट होने लग गया ना कोड करना, भाई कोड करना जैसे कोड करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स को देखता हूँ कोड करते, जैसे कोड चाय हो गया, और एल्स इफ़ आई वांट टू सी, मैं चैनल्स नेम ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं नेम कर लेता हूँ. मैं देख के थोड़ा वो करता था लाइक कैसे कोड करते हैं, जैसे मनोहर हो गया, मनोहर पाजी सर हो गए, और कोड एंटोनियो हो गया. भाई इन लोगों को देख के ना मैं सीख गया हूँ. लाइक करना है भाई लॉजिक, कुछ भी बिल्ड करना, बट करना है. लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, लाइक दिमाग लगाएंगे तो लॉजिक बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जैसे कोड मन लगा के कोड करो यार, बस बोल के कोड करो, बस जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे ये करना वो करना. कोड कंटिन्यू भाई, he is something great, I can say. It's something awesome. And even the Sony Sangha, man, oh man, Sony Sangha, man, it's something perfect, man. He's from Dubai from बढ़िया coder है भाई. He is some great YouTuber. I love him, by the way. I used to watch him every videos. I recently love this guy, which is this one, CodeSen. I really loved this video of him, but okay, he's a little bit. I love Piyush Garg and Chai or Code. Piyush Garg, man, literally, he is awesome. ब्रो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन और कल पूरा स्ट्रीम साथ रहूँगा. गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग बड़ी लूसीफर पैनल्स, थैंक यू सो मच.
if would I my camera is on, I'll maybe show my love from here, but I couldn't basically because मेरा सर गंजा, I can't show it, so sorry for that. अगर कैमरा होता तो भाई पूरा दिखा देता, मैं तो दिल दिखाता भाई, हार्टफुली थैंकफुल आ जाता तेरे पास, अच्छा नहीं जाता था फिर तेरा. कल भी आऊँगा यार, कल आऊँगा मैं, टेंशन मत लो. आई विल बी टुमारो अवेलेबल, सो डोंट वरी. आई विल बी डेली, सो डोंट वरी. गो एंड चिल, रेस्ट, take good night, good sleep, bye bye. So I think so, let me also stop the stream yaar. Should I stop the stream and should I code, or should I stop the stream? What should I do? कोड करूँ या ना करूँ? थैंक्स ब्रो. कोड करूँ या ना करूँ बताओ. मैं जाके स्ट्रीम बंद करूँ या ना करूँ बताओ. वैसे भी मैं स्ट्रीम बंद के कोड ही करने वाला हूँ, दोनों एक ही है. वैसे मैं स्ट्रीम ही बैठ जाता हूँ. अरे क्या, बाय 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 बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय. मिडिलवेयर इज परफेक्ट. I have to go. Yeah, man, you can go. I'm not stopping. Bye bye, man. Really, you bye bye. Sleep is important, man. By the way, you should go. Okay, there are 6 watching. Can I have a like, please? Can I have a like and subscribe, please? मैंने 6 घंटे से कुछ नहीं बोला हूँ लाइक सब्सक्राइब के बारे में. अब बोल रहा हूँ मैं, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है एक तो. दिस इज अ स्मॉल काइंड ऑफ मोटिवेशन आई वांट टुडे. There are 236 subscribers right now. 236. And how many like counts? I don't know how many. I'm just watching right now. एक बार पहले देखा था, अभी फिर से देख रहा हूँ. 5 watching है, ठीक है. Okay, 27 likes. Can we have 30 likes today? 30 likes तो बनता है, I think so. 28. That's a 28 likes. 30 likes तो बनता है, I think so. 30 and 240 subscribers maybe. That's a good grade, I think so. I'm doing it right now. भाई बढ़िया जा रहा स्ट्रीम आजकल तो. आऊँगा तभी तो बढ़िया चलेगा, नहीं तो नहीं आऊँगा तो कैसे चलेगा. 10K व्यूज़ बाय द वे. ब्रो लिंक्डइन पर जॉब के लिए अप्लाई लिया बट वहाँ से कॉल नहीं आते हैं, क्या करें भाई. कैसे बताया, तुम लिंक्डइन पे जॉब तो अप्लाई करते हो बट कुछ अपडेट देते हो आपके बारे में, लाइक गिविंग अ कवर लेटर टू देम और एल्स कुछ भी. इन द सेंस मैं कैसे बोल रहा हूँ पता है, लाइक ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो लेट हो गया. कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, लेट नहीं हो, जल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है. चिल ब्रो. लिंक्डइन पर जॉब, बट यार लिंक्डइन पे जॉब कैसे पता है, लिंक्डइन जॉब तो नहीं मिलते हैं बट ब्रांड बनाना पड़ता है. ब्रांड जैसे ब्रांड एसेंस, मतलब ब्रांड ऐसे बोल रहा हूँ, लाइक अपना जो लिंक्डइन है ना, इतना भर दो कि आपका लिंक्डइन देखते बंदा पागल हो जाए. हाँ भाई इसके पास तो स्किल है भाई, बढ़िया स्किल है, इसको ले सकता हूँ. दैट्स मेन द थिंग. और एल्स ट्राई टू बी एक्टिव इन ट्विटर. लिंक्डइन से ज़्यादा ट्विटर पे बढ़िया वो मिल रहा है, रीच मिल रहा है सबको. लिंक्डइन से ज़्यादा ट्विटर पे ज़्यादा रीच मिल रहा है. देयर इज़ मोर हायरिंग ऑन ट्विटर बेसिकली. all the persons see Twitter nowadays. तो Twitter is something best I can say. जो भी कर रहे हो build in public करो, and build in public is the main thing. Try to do build in public man. build in public करो यार, मज़ा आएगा आपको भी. कुछ नहीं करना, रोज़ का अपडेट देना बस आपको, और क्या करने बोल रहा हूँ. ज़्यादा कुछ पोस्ट बड़ी स्क्रिप्ट लिखने तो नहीं बोल रहा, कोड तो लिखने नहीं बोल रहा. सिर्फ जाओ, मैंने बोलो आज मैंने ये किया, मैंने आज वो किया, बस ख़त्म. अपना प्रोजेक्ट शोकेस करो, बस सिंपल एज दैट. प्रोजेक्ट्स बनाओ, शोकेस करो बाहर, ऐसे आपको मिल जाएगा जॉब बढ़िया. ऐसे आप देख सकते हो भाई, अभी एक बंदे को भाई 800 करोड़ का जॉब मिला था. 800 करोड़ जॉब. फॉर हुम? इट वॉज एन मेटा डेवलपर, ओपन एआई डेवलपर, रिसर्चर. सो ही गॉट एन जॉब बाय द वे. कंग्रेट्स टू हिम बाय द वे. इट्स वर्किंग. Oh man, I'm really excited for this code. I've written this much production grade today. I'm really happy. I'm really happy. I've got so many things to learn today यार. वो भाई बहुत खुश हूँ आज, बहुत कुछ सीख लिया मैंने आज.
बट और काफ़ी सीखना है मुझे, बट देव गुरु कृपा बहुत कुछ सीख लिया भाई मैंने. टुडे इज समथिंग ग्रेट. Refresh token. Yes, yes, give me this also. Yes, make me understand. But I know how to write refresh token. But फिर भी तू कह रहा है एडमिन राउट, ठीक है दे दे भाई. पार्ट 1 एडमिन राउट गार्ड. मिडलवेयर तू लगा चुका है? हाँ मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी. मिडलवेयर तो सही लगाया मैंने, आई थिंक सो, मोस्टली सही लगाया. हाँ, कभी एस एस आर सी एस आर मिक्सड होता है. ब्रो आपको देख के ऐसा लगा कि मैं आपके जैसे कोडर कब करूँगा? यार ऐसा मत बोलो, ऐसा डोंट से लाइक दिस, डोंट से लाइक दिस. आप कर सकते हो, से दैट आई कैन डू इट. डोंट से लाइक दिस. मैं भी ऐसे ही बोल रहा था पहले कि भाई मैं कैसे बना सकता हूँ प्रोजेक्ट ऐसा. मैं जो ये बना रहा हूँ ना, आई नेवर थॉट लाइक दिस कि मैं ऐसा बनाऊँगा. आई थॉट जस्ट कि मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर नेक्स्ट लेवल बनाऊँगा. दैट्स वॉज माई गोल. नाउ ऑल्सो इट्स माई गोल इज़ लाइक दिस ओनली. भाई ऐसा बनाना है कोड मुझे, बस और कुछ नहीं. मेरा थॉट यही कि ऐसा बनाना है कोड, दैट्स इट. और कुछ नहीं है मेरा लॉजिक. ऐसे बनता है भाई. मुझे पता ही नहीं था टाइम स्टैक क्वेरी क्या होता है. आज ऐसे ही किया मैंने. उस दिन पहले कुछ पिछले स्ट्रीम्स में किसी ने बोला था टाइम स्टैक क्वेरी यूज़ करो ना, तो मैंने सोचा आज यूज़ ही कर लेते भाई, क्या है देख लेते हैं. किसी ने बोला था, आई थॉट लेट्स डू इट. तो मैंने चैट जीपीटी खोला. चैट जीपीटी से पहले मैंने गया यूट्यूब पे, रिसर्च करा टाइम स्टैक क्वेरी क्या होता है, सब कुछ रिसर्च करा. मुझे पहले पता था, थोड़ा भूल गया, बट फिर मैं गया टाइम स्टैक क्वेरी डॉक्यूमेंटेशन पे, सारा सर्च किया टाइम स्टैक क्वेरी क्या होता है. फिर मुझे पता चला बिकॉज बेसिकली आई एम ऑलरेडी यूजिंग द टाइम स्टैक क्वेरी एज दीज टेबल्स, एज अ टेबल शेयर टेबल पे टाइम स्टैक क्वेरी यूज़ होता है बेसिकली. तो इसके थ्रू मैं ऑलरेडी टाइम स्टैक टेबल तो यूज़ कर रहा हूँ टाइम स्टैक क्वेरी. तो मैंने सोचा टाइम स्टैक क्वेरी भी यूज़ कर लेते टेबल के अलावा. तो आई थॉट लेट्स स्विच इट. तो मैंने स्विच कर रहा हूँ अभी बैठ के पूरा. तो इट्स मेक मी द यूज़र फ्लो फास्ट. और कुछ नहीं यार, स्केलेबल ऐसे ही बनता है थोड़ा थोड़ा. ट्राई रिफ्रेश. हाँ बड़ी तो सही जा रहा है. ये पी आई पोस्ट करना है मुझे, पैच रिक्वेस्ट नॉट अ पोस्ट रिक्वेस्ट. ध्यान दे, मैं बैकएंड पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉट अ पैच रिक्वेस्ट. ओ डॉट कंट्रोलर डॉट JS. इसमें रेफरेश टोकन है. और थ्राउट देख लेते हैं. मुझे नहीं देखना है, और थ्राउट देखना है. और थ्राउट में क्या दे रहा हूँ मैं, और सिर्फ एडमिन पे अंदर जाऊँगा जब रेफरेश दे रहा हूँ, सिर्फ रेफरेश टोकन दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं. ठीक है, रेफरेश टोकन दे रहा हूँ विच इज़ समथिंग एडमिन रेफरेश टोकन. हाँ बराबर है. और सेशन एक्सपायर लिख दे. बढ़िया बढ़िया यार बढ़िया. एक्सियोस क्लाइंट यूज़ करना है मुझे, नॉट दिस वन. आई एम गोना यूज़ एक्सियोस क्लाइंट. ओके. एंड दिस इज एन पैच रिक्वेस्ट ना. और अच्छा पोस्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज एन पोस्ट रिक्वेस्ट भी है. इसने क्या किया, ट्राई कैच लगा दिया. अगर एरर में रेस्पॉन्स 401 आया तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन चेक करेगा, रिफ्रेश टोकन को फेच करेगा डायरेक्ट. एंड रीट्राई भी करेगा, रीट्राई डॉट डेटा दे देगा. प्रॉपर मैन, प्रॉपर. आई गॉट, समझ में आ गया कैसे करते हैं, समझ गया. बढ़िया. तो मुझे ये लगाने की ज़रूरत होगी बिकॉज अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो सही है, नहीं है तो निकाल दे बाहर उसे. ठीक है, बढ़िया है. तो लॉगिन प्रोसेस तो बढ़िया हो गया. नाउ आई थिंक शुड आई क्लियर दिस. ओके, लॉग आउट पे क्लियर भी करना चाहिए. क्लियर ऑल क्वेरीज क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग विच यू सेड मी बिफोर इटसेल्फ. तो आई डोंट नो. अच्छा, क्लियर भी करना पड़ेगा, राइट. ओके, गॉट इट. सीख गया मैं. ठीक है. यूज़ लॉगआउट चेक कर लेता हूँ कैसे बना है. और म्यूटेशन फंक्शन क्या आता है इसने, ऑन सक्सेस तो बराबर है, मैंने ऑलरेडी देख लिया. बेसिकली ये क्या करता है, इनवैलिडेट क्वेरी, मतलब इनडायरेक्टली सिर्फ फेच रिक्वेस्ट बनाता है, कुछ नहीं, सिर्फ उस क्वेरी को फेच करता है, ख़त्म. सिंपल एज दैट. ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना, सिर्फ क्वेरी को फेच करता है. एंड उससे पहले क्या कर, ऑन सक्सेस में क्या कर, क्लियर कर दे, पूरा क्लियर कर दे, सिर्फ एज दैट. एंड क्लियर कर दे सब कुछ. ठीक है भाई, सबने खाना खाया बताओ यार. सिर्फ एक बंदे ने बताया था, फिर तो सब चले गए. थिंक सो कहाँ चले गए भाई. 7 बंदे स्ट्रीम देख रहे हो फटाफट. भाई अपने लोगों ने खाना खाया बेसिकली, क्वेश्चन है मेरा ये. भाई गेम्स खेले बताओ. और आई एम लिटरली वांट टू प्ले गेम्स यार. तुम लोग बातचीत नहीं कर रहे हो बेसिकली. मुझे भी गेम खेलना आप लोगों के साथ. कहाँ हो
You guys are watching the stream. 5 people are watching the stream. भाई आपके साथ गेम खेलना, कहाँ हो सब लोग? 29 likes, nice. I want 2 more subscribers plus 30. Oh भाई 30 likes हो गया. Great man. भाई गेम्स के लिए बताओ. Can we play games here? एक गेम खेलना तो बनता है, बताओ. Shall we play game? If you say, shall we play games? Shall we play games? If you say we will play games, man. Resell proper production level admin auth. JW short-lived, refresh safe, zero local storage, automatic retry, yes. Chill bugs, SSR friendly, yes. और तेरा backend refresh and logout का structure भी दे दूंगा. Node.js स्टाइल के नहीं चाहिए भाई, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है भाई, तू बैठ जा चुपचाप. मुझे सिर्फ प्रोडक्शन ग्रेड देखना था, बाकी सब तो मैंने लिख दिया भाई, तू बैठ जा चुपचाप. अब तू ज़्यादा मत उड़. अब तू चैट जीपीटी ज़्यादा मत उड़. नेक्स्ट कमांड बोल, तू बोल तो नेक्स्ट कमांड. नहीं चाहिए भाई, तू ही रख ले. नहीं चाहिए तू ही रख ले. नहीं चाहिए तू ही रख ले. मैंने लिख लिया ऑलरेडी. भाई ठीक है, मैं संभाल के रखता हूँ. तेरा अब प्रोडक्शन ग्रेड रिफ्रेश सब टाइट है. कुछ भी राउट गार्ड्स, कुकीज, टोकन्स, एज कन्फिग और कॉर्स, डिप्लॉयमेंट S3 CDN लाइट हाउस चाहिए हो तो सीधा बोल देना. बोल दूंगा भाई. कोड सेफ, बंदा सेफ, प्रोजेक्ट सेफ. This is nice man. Code safe, banda safe, project safe. HBL Gaming, thank you for subscribing buddy. Thank you. मैं हूँ भाई, एक भाई के लिए फुल इंफ्रा रेडी. मुँह पे रिफ्रेश लो. H फंक्शन जब चाहिए बुला लेना. शाबाश. Okay. This is something amazing. ChatGPT perfect. तेरा काम सॉर्टेड. जब भी अगली बार कुछ भी फ्रंट एंड बैक एंड इंफ्रा, ओके जस्ट गुड हसल, जस्ट शिपिंग, कीप शिपिंग. ओके मैन. यूजर लॉगआउट इज परफेक्ट. दिस इज परफेक्ट. शैल वी सी अ रिफ्रेश टोकन विच इज रिफ्रेशेस और नॉट? रिफ्रेश हुआ या नहीं चेक करें. मुझे चेक करना है बेसिकली ना, रिफ्रेश हुआ या नहीं चेक करना है. कैसे चेक करें? मुझे ना टैंस्टैक वेरी डेव टूल्स ओपन है. सो मैं ना इधर जाता हूँ, रेफ्रेश टोकन क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सेस टोकन हटा देता हूँ अभी के लिए. लेट्स डिलीट दिस टोकन एंड इट आई विल रिफ्रेश इट. यो मैन, फाइनली इट्स वर्किंग. रेफ्रेश टोकन काम कर रहा है बड़ी. रेफ्रेश टोकन काम कर रहा है. दिखाऊं. ये देखो, अगर मैं रेफ्रेश टोकन डिलीट करूँ, इफ आई रेफ्रेश द पेज इट ऑटोमेटिक लॉगिन्स. वाई? बिकॉज रेफ्रेश टोकन की एक्सपायरी अभी तक है. एक्सेस टोकन की रेफ्रेश एक्सपायरी खत्म हो गई. बेसिकली इसको हटा दिया. एक्सेस टोकन की एक्सपायरी खत्म हो गई. अभी रेफ्रेश टोकन की तो है. अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो रहेगा भाई, सीधा रहेगा. अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दोनों को हटा दूँ फिर क्या होगा? लेट्स चेक रिफ्रेश. या मैन, नाइस. मज़ा आया भाई. आज तो मज़ा ही आ गया. कुछ अलग ही हुआ, मज़ा आ गया. अरे यार, ऐसा कैसे देते तूने लेआउट? ऐसा कैसे देते तूने लेआउट? और गड़ीस कैसे हो भाई? और कैसे हो बडीस? तुम लोग कैसे हो भाई? कुछ बताओ ना यार, कुछ तो इंटरेस्टिंग बताओ तुम लोग. Tell me something interesting. Should I stop the stream? Within these 2 minutes, I'll stop the stream. So, thank you for so much for watching this stream, yaar. I really loved this stream, and I think so. I'm waiting for the next stream tomorrow. So, thank you so much for watching, and I hope really you like the stream. If you are guys new to this channel, please subscribe the channel and like the stream, and that will be give me a good motivational. So thank you so much for watching, and let's crack the code and let's move let's do the world. Keep that word remind in the between which I said. Let's do the world. Let's prove the world what we can do. So chata, bye bye, see ya man.
Thank you so much. Bye bye, Tata, see ya. So don't remember tomorrow I'll be coming to the stream again at 2 o'clock, maybe. But 99% I'll be at 2 o'clock. Maybe 1%, don't mind for that. So don't be lethargic. Please sit and learn and code. Code. Please focus on practice. So till then, tata, bye bye, see ya. Thanks you so much for watching. If you are new to the stream, please like the stream and please subscribe to the channel, and see you tomorrow. Bye bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise just like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.